contract. Yeah, or you can say it is very close to the word contract. Yes, Arun. Then an agreement enforceable by law is called contract. Okay, fine. You said agreement. The key word is agreement. Okay. Yes, sir. Okay. Anyone else who can say have some other word synonymous to it? Anyone else? Mr. It's a Harish deal Kumar. basically. Pardon? What did Sir, you any say? written document? Sir, One any legal agreement? agreement. We Yes. have got the word agreement. Of course, it should have a legal bearing. I will come to that. Why it needs a legal bearing, and any other word that comes into your mind, which may be very close to it, not exactly the same as contract, but very close to the word contract. It's a deal or a pact, something like that. Deal, Written deal, document, deal. sir? That is the key word here, deal. So we got two words here. One is agreement, another is deal. Deal. Deal is the key word, which is very close to the word contract. Anything else that comes onto your mind? Bind to follow duties. Bind to follow duties. So, uh, can you please repeat it? Bind to follow duties. Bond or Bind. bind, Yeah, bind to follow duties. follow duty. Contract is not a duty, you know, it's So bind to follow duty, the mutual understanding, or maybe so your word is understanding. Can I take that? An understanding? The yes, key sir. word. Okay. So we get deal, Agreement. agreement we have already got. Understanding is another word. Now, if we say understanding, that understanding should come with a legal bearing. Like if I want to hire a contract killer and we got an understanding with him saying that you have to eliminate some person, I will give you some money against it. Will that be a contract in legal terms? No, No, sir. sir. Here agreement is itself not No, sir. lawful. Lawful must be, sir. Should be lawful. It should be lawful. That is an understanding with a legal bearing, and it should be lawful. Then only it is a contract in a very simple term. And any other word that comes into your mind? Pact. Act is not a contract. It is a regulation. You can say it's a law. Arrangement. What about treaty? What about treaty? Do you agree? Sir, Well, MOU. yeah, it's an understanding. We have already said that understanding, memorandum of understanding. Understanding is covered. So obligations are the responsibilities out of that. That is their obligations on someone's part. There will be obligations from both the sides in a contract. Sir, there must be mutual consent. Well, agreement is that when you agree, then only when you consent, give your consent, then only there will be a contract. That cannot be one-sided, isn't it? Now, when we say commitment, uh, you agree that it is a contract every time? No, sir. Why not? Can you give one example when a commitment is not a contract? Sir, any commitment which is not legal will not be a contract. I'm not talking about legal bearings. If there is some legalities involved into it, then it is a contract. But No. sometimes it happens so that there is no legality involved into it in a Sir, commitment. the relation between a husband and wife, there is a commitment but no legal bearing. Do you think so? There is Arun? legal bearing. Really think so? Yes, sir. Try it. You try it once. You try it once. You know, marriage is a commitment which has got a legal bearing. Thereby, it is a contract. Somehow, you try to come out of the marriage
arbitrarily without any valid reasons, then you will know that it is very much a contract. There are certain legal bearings. I say when you ask your friend, you or commit to your friend that I will take you to a movie and then I will treat you with a pizza during the weekend, and you merrily forget about it. That is a commitment to your friend that you will take him for a movie. And also after that, you will take him for a treat of pizza. And you forget, or you don't actually follow your commitment. Then it is not a contract because there is no legal bearing to it. Sir, There I is no, have regarding the example I have shared, I have read one case law, Belfer versus Belfer, where two Mhm. couples who were in went to the England, and one decided to come to some Sri Lanka or India, I could not remember, and the See, we husband cannot be so elaborate. We cannot be so elaborate in such a short span of time, giving case studies here. What yes, I mean to say is, it with the simple thing, taking around the holy fire or just saying that I do in a church or Kabul hai. Uh, all those things are social commitments, which turns into a legal commitment also once you try to come out of it, isn't it? Then it has got certain legalities involved where the court has got something to do. That's why it is indeed a contract in some way or the other, not directly maybe, but indirectly it is a contract. You cannot come out of that without certain compensations, isn't it, Arun? So that's why, since you have to compensate, that's why there are certain aspects of the legalities, and thereby it is a contract. Now, we have talked about much, and now we have got a fair idea what is a contract. It must have a legal bearing. It should be lawful, and there are certain commitments, certain compensations if one party fails to abide by the terms and conditions of the contract. So in a nutshell, we can say that. Now, the dictionary meaning of contract is written or spoken agreement intended to be enforceable by law. Written or spoken agreement intended to be enforceable by law. Intended to be enforceable by law. So when that is so, suppose your organization has entered into a contract or is willing to enter into a contract with another private organization or a government organization, whatever. It may be a civil engineering contract, it can be a contract of procurement or whatever. In such condition, how come a third party, you know a third party comes into the picture in the name of Central Vigilance Commission? Why do we then need a third party supervision or superintendence on a mutual contract in the case of any government or semi-government or private sector organization, where the third party supervision or superintendence comes into the picture in the form of the guidelines and the supervision of an organization or an agency like the CVC? Why does it come? Why sir, is it so? because the here the public money is involved, and which the everyone is accountable for. Right. We can say that we use funds from the government or organizational exchequer, which is essentially public money. And we personally don't own the money we spend. You agree to that? Yes, sir. And we are responsible for using such funds to the best interest of the organization because it's public money. And therefore, the government has every right to have control and superintendence over our action in this regard. Uh, do you agree, all of you, Yes, sir. on this aspect? Okay. What Now, about private parties? You also included? no, if you are a government organization and you are entering into a contract with a private organization and you are the purchaser, in such case, you are using the public money.
And that's why this kind of superintendence is acceptable and it is required. That is why it is required. That is what I mean to say. Not a contract between two private sectors. There, this kind of guidelines of the CVCs are not applicable. Okay. Okay. Sir, Now, one reason may be, sir, one reason may yes. be that there are chances that there may be violation with contract. See, if there is a violation in the contract, and the contract is a good contract, and there is a violation, then the provisions for protection of the other side is always there in the terms and conditions of the contract. So one can always claim. It can be in the form of liquidated damage. It may be in the form of some penalty clauses. All those things are already there. So you can only follow, and the court will give cognizance to that if there is any arbitration. But if there is something, which is not very clean, and you have acted upon very arbitrarily to favor or disfavor someone by virtue of that faulty contract, then it is an irregularity. So that is why there are certain guidelines which has been imposed upon us by the Central Vigilance Commission, which we have to follow. That is their advice, and we normally follow such kind of advice, pieces of advice. Now, there is we will discuss about the importance of public procurement. Why is it so important? Why is it so important these days when we talk about public procurement? See, it's first of all, the amount of money that is involved, it's huge in public procurement. And when we talk about public procurement, whatever see the development, the infrastructural developments, the procurements, the big procurements that are being made by the government or the PSUs, these are all coming under the ambit of public procurement. So since there is a large sum involved in public procurement, so that gives it an importance. Sir, And yes, please. so the question is whether these norms, CBC guidelines is applicable for the institution which is registered under Societies Act, like IICM. See, you will have to answer to it yourself. See, when you have a society and it has got a funding, which comes from the government or from the public sector, through public money, then it is answerable. If If you not, are independent, if you are totally independent, you are generating your own fund, your fend for yourself, probably it is not. But since IICM, an organization like IICM, is funded by its patrons who are paying the money from the public money fund, somehow that's why they are answerable. Not all the organizations which are registered under Society society. Act are answerable or need to follow CBC guidelines, but some organizations or some societies which are funded through public exchequer are answerable because directly or indirectly they are using the public money. Do you agree to that, Arun? Yes, sir. Sir, so it means the ISM registered under Not Society Act name of had IICM, any organization. Let us generalize it. Let us generalize it. When we are using public money for the operation of that particular society, then they are answerable. Let us take it like that. Any organization, be it a society or whatever, if they are using the public money, then in that case, they are answerable. Okay, they are accountable. And that's why they need to follow the guidelines which are to be followed by government or semi-government or quasi-government organizations. Okay. okay. So one thing is large sum of money involved. That is one importance of public procurement. Another is it relates to the national infrastructure and defense. Whatever development that is being made, infrastructural development or the procurement with respect of any industry or defense, that comes through the public spending of the public money. Okay.
And it also relates to the expectation of the taxpayers and public. That's why we have to be very careful. We cannot be at our whims and fancies when we spend the money, because that relates to, that is connected to the expectation of the taxpayer and the public. Okay. And Rajiv is also there, I find. Nice to see you, Rajiv, after such a long time. Okay. And then the impact on the domestic economy. As you keep spending the public money for the purpose of bringing up industry infrastructures like roads and airports and bridges and all kinds of things, it has a positive impact on the domestic economy. That is another importance of public procurement. And since there are development, there would be significant impact on the society also. You imagine a place where there was no factory, it was a barren land, suddenly a huge industry comes up. With that kind of development, the industry being brought up in a remote and a barren place, suddenly you find that there is a significant impact on the society in and around the industry. In and around. There will be many direct employment, there will be many indirect employment by virtue of the industry which has come up through the spending of the public money or the public procurement. We find that there is a significant impact on the society also, in the immediate society and also the society away from it, because there are goods coming up, more purchase power, people are coming, there are more business set up which have been set up over there. So that is another aspect of public procurement, or the importance of public procurement. And and the most important is that it actually builds up the image of the government. Sometimes we know, when we drive through a highway, we find that we are cruising at a speed of 120 kilometer per hour, and we cross the border, and then suddenly we find that there is no road, only potholes. Who do we blame when we cross the border of a state and then go to another state and we find no road, only potholes? Who do we blame at that point as a motorist? Of course, the government. We say this government is doing nothing, and look at the government of the state we have just passed by. They have got such good roads. So this kind of image is also built up in the minds of the public uh, when the public money is spent judiciously and very nicely by some government, and somewhere they fail to do so. So this is one thing. The development can be visible when public money is spent properly. So this is one thing that I wanted to uh, tell you about, just to sensitize you about public procurement. The objectives of public procurement, is to get the best value for money. That is the objective. Always, when you go to the market to buy any commodity for yourself through your own purse, your own pocket, you always tend to find the best value for your money, don't you? And then to provide access to all eligible bidders in public procurement, be we should always intend to provide access to all eligible bidders. We should not restrict anyone who wants to participate in the process of a public procurement as a bidder. Of course, we have to take care of the interest of the organization, and we have to make our specifications, other things, requirements as part the requirement of the organization. That doesn't mean we will make it so let loose that we end up getting bad products. But in that process, we should also keep it in mind that we should not, our intention should not be to restrict the access of the eligible bidders. This is one.
Someone has kept his microphone on. I would request you to mute your microphone, please. Mr. Shashendra Singh, Mr. Shashendra Singh, please. Yeah, thank you, thank you, thank you. Yes, yes, sir, yes, sir. Okay. Uh, Third as objective is to promote competition. We should always promote competition, rather not, discourage competition. We should always promote competition, and that should be one objective in our mind. And fourth one is to ensure transparency and openness. There should not be anything hidden. Everything should be open to the bidders. Every aspect should be known to the bidders so that they can assess before they put their bid. And then we should reduce the scope of corruption and abuse. If there is anything, any clause or any ambiguity in your document which encourages the scope of corruption or abuse, then it should be immediately plugged and it should be removed and remedied. Most importantly, the objective of public procurement is to be a model purchaser or employer. When we say a model purchaser or an employer in terms of when you give a contract, procurement of works, and purchaser when it is a procurement of goods. To be a model purchaser, you have to observe certain things like your transparency, equity are two aspects, the prime aspects here. Other than that, you should also see that there is the possibility of corruption is mitigated to the extent possible. For that, you can make provisions for contactless payment procedures, and which is being done in your organization. So there are several ways of time-bound payments, and the procedures of inspections and all those things should be laid down. All these rules should be laid down and written down so that you can be known as a model purchaser or an employer. Now we come to the importance of guidelines and manuals. What is the importance of a manual or a guideline? Why do we need such things? See, when you have got a manual in hand for your own organization for a particular purpose, it is to cater to your exclusive needs on day-to-day basis. If you are involved in the matters related to procurement, then your organizational needs probably will not match with that of another organization. For that matter, you need to have a manual for a particular purpose, say purchase manual or civil engineering manual or contract management manual, which is exclusive to your company or to your organization. If I tell you that, sorry, boss, we don't have any manual, purchase manual of our organization, so you can adopt the manual, purchase manual of some other organization, like say some oil company, which is a PSU, or a power generating company organization, which is also a PSU. And we say, you follow that manual. Maybe it will be useful to some extent, but it will not be so much useful to you because it is not exclusive to the needs of your organization. For example, a few days back, Air India was a PSU, and if I would have asked you, you adopt the purchase manual of Air India and try to operate it in Coal India, you will find that their needs are different. So their manuals have provisions which is exclusive, which is actually catering to the needs of their organization and maybe not to the needs of your organization. That's why a manual exclusive to that particular organization is very much required. I am happy that our organization has got all the manuals in place,
as far as public procurement is concerned, and and those are quite robust and exhaustive. Then the importance of manual is all rules in one place. In the earlier days, what used to happen, we used to get these kind of rules in the forms of circulars and guidelines issued from time to time, and those are filed, and sometimes filed in different places and different locations, and there was every possibility of uh, omission omission because of ignorance, because of not having the knowledge, because of there was no access to it, to everything. Nowadays, that is totally ruled out. We have all the rules put in one place in the name of the manuals that we have got, and which are updated from time to time. And we also try to uh, do it in such a way that the procedures becomes simpler and simpler. If you make a very complex rule, or if you make your guidelines so complex, or your terms or the clauses are made so complex that people don't even understand how to do it, in that case there will be every possibility people will try to evade it. They will try to make a shortcut, and in that process they are vulnerable. They're making themselves vulnerable, questionable at a later date. So that's why it is always necessary that the rules that are made and the procedures that are drafted should be very, very simple in nature. It should be easily understandable by everyone, by a layman also. And there should not be any scope of ambiguity. This is one very important thing for any person who drafts the rules or the clauses of any manual, that there should not be any ambiguity. Everything should be in speaking order, everything should be very clear in terms of its explanation. If it is not, then there will be two interpretations, and therefore there will be certain conflicts, I would say. You will say something, you will interpret it in some other way, someone else will interpret it in some other way. So there will be a conflict and therefore an arbitration, maybe. That's why it is always it's always expected that there won't be any scope of ambiguity in a manual when it is drafted. We are not here to write a thesis when we are writing a manual. We are making it for the common employees. And that's why the language should be simple, the concepts should be very clear, and there should not be any ambiguity into it. Everything should be crystal clear. It should be in a binary form, 0 or 1. Okay? And it should be a ready reference for all. That means it should be accessible. Everyone should have access to that. For in our organization, there is no problem with that because all the manuals are there uploaded in the website. So whenever you need, you can download it, and you can have access. Now there are certain major concerns also related to public procurement, which we find in normal day-to-day affairs. First of all, we find there are certain existence of contradictory and multiple guidelines. For a particular matter, we find there are multiple guidelines issued from time to time, and sometimes we find they are contradictory. In one manual, it is written in some way, in another manual or in another guideline, it is written in a different way. But then we need to have a knowledgeable person who is totally conversant with these kind of things. They feel confused, and they at that point of time needs clarifications. The clarifications are required. That's why a clarification is to be sought when both the rules or the clauses have been, or the policy have been drafted and approved by the same authority. It should be actually discussed and
all the ambiguities or the clarifications those are required are to be given at that point of time only before the issuance. So this is one major concern. And another concern is the ignorance about among the employees about the updating of rules and guidelines. Maybe 4 years back you have gone through a particular rule and you think that you know the rule, but by that time there have been amendments and you have not kept yourself updated, and you still have that notion in your mind that the rule is this, whereas the rule has already changed. So you need to keep yourself updated as far as the rules and guidelines that are being issued, at least for those areas with which you are concerned. I'm not saying that you have to know all the rules that are being published in an organization, but at least for those rules which with which you are involved, that has to be done. You have to keep yourself updated, otherwise you might cut a very sorry figure someday. Then comes the concern of inexperienced manpower. By virtue of rotation of work, sometimes we find that a person who has gained considerable expertise in a particular field of procurement is now being transferred to another work area where his expertise has got either no involvement or very little involvement, and the person who is replacing him probably have not even worked in the field of that in the field of procurement earlier, as a result of which he finds it difficult to cope up with the requirements and the demands of the work, and he has to learn the thing from the scratch again. So this is one thing. And when you put in the inexperienced manpower without much what do you call it, exposure to such kind of work, uh, there is every possibility that he will make mistakes. And that is also a major concern. Fourth one is the frequent interchange of assignments. A person comes to the field of public procurement, he gathers over a period of years, he updates himself, he burns the midnight oil, and he gathers considerable knowledge. And after that, what happens? He's transferred. When this happens, this is total loss of the knowledge of that particular, or the resource of that organization, when you keep on changing, frequent interchange of assignments. That should not be done. Even if it is to be done, it should be among the people who have the similar kind of knowledge, and they should be rotated. Not that you bring a person who has got no exposure to the work and then ask him to be in the cockpit. That should not be the way it should be done. And then comes the lack of training and awareness programs. In any organization, it is very tough to very, very, very difficult to train each and every personnel. And even if you do it, it will be of short-term training. It will be a short-term training, which will not be adequate. Only thing, then you can just provide them the tools and nothing more than that. And that is one problem that we lack in training and awareness programs as far as public procurement is concerned. Then comes the very important thing, that is the fear of vigilance. Fear of vigilance department. I don't know why one should at all fear the vigilance department. This fear comes from, as far as I am concerned, my perception is concerned, this fear comes from ignorance. It is only because of ignorance that you are fearful. Why do I say so? Suppose you are in a jungle, in a dark jungle, and you suddenly find yourself alone over there, and you are fearful. You are fearful because you are uncertain. You are not knowing about anything about that jungle, where the road goes and where to go, where not to go, what are the kind of animals which are there in that jungle. You know nothing about it. That's why you are fearful. But if you had been staying in the jungle for 20 years and you have passed through the jungle every night,
probably you will never be so fearful. It is the knowledge, the lack of knowledge, which makes us fearful about the vigilance. If you have got the knowledge, then I don't think you will make a wrong decision. And if you don't make a wrong decision, even if you make a deviation, you will have certain logic, certain rules which you, as per the rules and the provisions, you will deviate. And when you do that, you don't fear vigilance at all, because you have got reasons behind it. You have got a backup in your mind that I have done it as per this provision, not as per this provision. So that's why, in order to drive away the fear of vigilance, I would always tell you that you keep yourself updated, keep studying about at least the subject that you are dealing with, that is public procurement, if you are dealing with that particular subject at all. Now, coming after that, we will start be on the right track. Now, you can fasten your seat belts. These were all pre-flight announcements. Now we are going to really सर एक flight takeoff डिपार्टमेंट क्यों नहीं रहता है with हर एरिया में? एक डिपार्टमेंट there should be must one department, sir, where every papers and all na they will be scrutinized. Yeah, they should, the experts should be there. no, see, this is a one kind of evasion. Is it Rajiv who is speaking? Yes, 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 sir. Okay, Rajiv, I tell you one thing. If you keep a department, that means you are trying to make them a scapegoat. If you say I will write anything that I want to write, and I put the onus on a particular special task force committee who is going to scrutinize my thing, and he will find a fault. Of course, there is a department. That's why you find so many observations from the finance department. If you send a file to finance department, you will find they will audit it, they will try to scrutinize it, they will try to find whether it is within the as per the provisions or not. With 10 or 5 or 4 observations, they might send the file back to you. It is the job of the finance also, and we get irritated at times with such kind of observations from the finance department. We think they are the impediments, they are actually the stumbling blocks, they don't want us to work, they don't understand the work pressure, and we abuse them. Let me tell you, Rajiv, they are the conscience keepers of our organization. If they were not there, we would have been charge sheeted many a times, 100 times. They are the people who keeps a check and balance on the hurriedness of our proposals. We make our proposals, we even, some of us even don't know how to make a proposal. We make a very sketchy proposal and send it to for approval. It is now this finance department who puts its observations there and sends it back to you for compliance, and then we comply. My question is, this kind of compliance are coming to you over years and years and years, isn't it? Then Yes, why sir. don't you make a checklist and you yourself send it for the very first time with the compliances in it? Why aren't we doing it? Sir, My, maybe, sir, many things people are doing just because of ignorance. They don't know. So in see, I that tell you case, one thing, Rajiv. When you make the mistake for the first time, it is okay. You make a mistake, you are ignorant, you don't know, and then you send it, and when it is being scrutinized or examined, they give you certain observations that these are to be complied. They send it back to you. Now you comply it. You are the person who is doing the compliance and sending it back. Next time when you are making a similar proposal, why don't you make it foolproof by putting all those aspects that has been observed by the finance in the earlier proposal, and make it, try to make it foolproof, so that there are minimum observations now from the finance during examination. My question is that normally what we do, we don't change ourselves and we make the same mistakes. I am not
getting personal to you, Rajiv. It is just a common comment that I am making. I've found many people making the same mistakes while making a proposal, and they wait for the other side to make an observation, then only they will comply. So that is why the standard operating practices are being developed by many vigilance departments of the subsidiary companies. They say when you make a proposal, these things are to be there. Even there should be an internal SOP for making a proposal, that when you make a proposal, these are the checklists, these are the things which should be provided mandatorily. Otherwise, it should not be sent for for Yes. approval. If you do that, Yes. you find that most of your fear is gone, because you are acting as per the standard operating practice as well as the prescribed checklist. You try to develop. Because what happens, sir, in many cases, means after experience, I have implemented many things. That these are the checklists. You when you Right, sending right. That any is file. how it is to be done, Rajiv. And I would say this is a very good practice to make a checklist and abide by the checklist before making any proposal and while making the proposal. If you do that, you will find that you get it approved. Your checklist and your SOP get it approved by from the competent authority, and it is being done many in many subsidiary companies. You get it approved and follow that checklist or the SOP. Okay. 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 Now, we would be discussing many things today which are related to the guidelines of CVC. I have segmented those because, when the guidelines come, those are sometimes very exhaustive, and one finds has to put his mind into it to find out what are the crux, what are the gist or the summary of these guidelines. So I have gone through all those guidelines. I have segmented them in terms of their applications, and then the classifications that I have made are: one is tender and bid document, then purchase preference, negotiation with L1 bidder, splitting of order, representation of agents in tender, publication of tender in website, which is no more relevant because we are into e-procurement now. Then mobilization advance, which we don't give in Coal India. Bank guarantee is one thing, selection of consultants, then award of contract on nomination basis, and then integrity pact. These are the things we are going to cover today. It's 10:55 now, and we will be continuing up to 11:30, and then we will take a break for 5 to 15 minutes and then start again. So up to 11:30, be with me, okay? Before the tea break. See, in the year 2002, in the month of December, there was a guideline issued by the CVC as far as pre-qualification criteria is concerned for any tender. They talked about the procurement of works as well as procurement of goods, and there, for civil, electrical, and mechanical works, they said there should be two pre-qualification criteria. First of all, the financial capability in terms of financial capability, for which CVC say that the average annual turnover of the bidder during the last 3 financial years should be equivalent or more than 30% of the estimated value of the work. This is as far as the financial capability of the bidder is concerned. And then the second part was about the ability of the bidder, technical ability of the bidder to do the work. So for that, they came with a guideline where they said that the bidder should have successfully completed similar works in the last 7 years, ending the last day of the previous month of the publication of the tender. That means if you have floated the tender on 1st of October, then the 7-year span will be counted from 30th of September till the
in backwards 7 years. So successful completion of similar work in last 7 years, ending last day of the previous month of the publication of tender, they said, and they have put three parameters. If the bidder is submitting or providing three such credentials of successful completion, then each of those credentials, now here it is not average, it is each of them should have the value of such. If they are putting three credentials of successful completion in previous successful completion of work, then each of those should be of minimum 40% value of the estimated value of the tender. If the bidder is submitting two such credentials, then each of those should be equivalent to 50%, at least equivalent to 50% of the estimated value. And if the bidder is providing only one such credential, then it should be equivalent to 80% of the estimated cost or estimated value of the tender. Is it clear? Yes? Yes, sir. Okay. Now, why was it done so? So, with every rule, you must understand that it is done because it has been found, it must have been found by the CDC that pre-qualification criteria was often being manipulated or tweaked to favor or disfavor some of the bidders. They must have found this in some cases. Sir, I have a That's why- question. yes. Sir, whether the both pre-qualification criteria like financial turnover or experience criteria should be Yes. mandatory to be part of a bid, or it's depend upon our decision. It is mandatory. It has already been adopted in your manual also. Okay, it is mandatory. You have to put it. If it is a procurement of works, you have to put it there. Okay. Okay. What I meant to say, why this has been, why this has been frozen. I mean, why average annual turnover 30% of the estimated value or the credential value? Why so? Because there were some people who used to manipulate this to favor some bidder or disfavor some bidder. When they found that they didn't want some bidder to participate, they would make it stringent for so that particular bidder cannot participate in the tender. Or they want to bring in some bidder who didn't have the credentials which is required, so they would dilute it. They will make it a little softer to accommodate that kind of bidder. So this kind of manipulation was going on, which leads to corruption, of course, and that's why CBC might have thought that it should be now formally sealed. Means it will be framed in such a way that everyone will have to follow it. And that's why this kind of pre-qualification criteria were evolved with in the year 2002. Okay. They also, see, you have seen this, there is a word called similar work which has come. Successful completion of similar work. So this similar work is another aspect where people used to play the game. You know, that's why CVC said the similar work, the term or the similar work should be clearly defined in the tender and the bid document. Why so? Suppose it is for one reason, of course, that when you want to do a particular specialized job, you must have a person who is really competent to do that. For example, if you go for civil engineering works, there are works related to construction of buildings, bridges, anything, airports, whatever. And that is the civil engineering nature of work. Now there is another work, cutting of jungle jhari, cleaning of drains. This is also a civil engineering nature of type of job. So if I put a definition of in the definition of similar work, I write any kind of job which is civil engineering in nature
Who are you making eligible for the tender? Tell me. You are including those people who have got no competence to build a airport or a bridge or a building also, but you are including them as a bidder. That's why it is very much required to at times restrict the bidding among those people who are capable to do the job. But at the very same time, you cannot restrict. Sometimes you are required to dilute it also. Means you cannot restrict to a certain class of people when you know that the same kind of job can be done by other people also. I give you an example here. I have given you one example about the civil engineering nature of work, how we can put ourselves in trouble by diluting the definition of civil engineering work. Another one is, suppose you are going to go for a say acoustic system, making an acoustic system for the diesel generator housing. You have got a diesel generator which is making sound because it's very old. There was no silent generator those days, and now there is an observation from the pollution board that you have to restrict the sound. For that you have to make some soundproofing, and you don't have the capability, so you are going to do it through contract. Now, naturally, when it is related to generators, you will try to find people who are conversant in the work of soundproofing the generator housings only, isn't it? That will naturally come to your mind. Yes, Mr. Arun Kumar. Mr. Arun Kumar, Sir, बताओ, आप तो ENM के हो ना? yes, आपको sir. डीजल जनरेटर हाउसिंग के साउंड प्रूफिंग कराना है तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे आप लिखोगे ना दोज हु आर केपेबल ऑफ मेकिंग एन अकाउस्टिक सिस्टम फॉर डीजल जनरेटर हाउसिंग ऑफ 250 kV or 500 kV. You'll write like that. Yes, sir. Yes, sir. But do you know that the same kind of job is done by those who are making soundproofing system for air conditioning plants? So my question is, if the job doesn't need the specialization of generator set itself, but this job can be done by someone who is actually doing soundproofing, similar soundproofing jobs or acoustic jobs for Any- other applications like air conditioning plants, why don't you include them in the definition of similar work? So there are certain dilutions also at times required to get, our objective kya tha? To get better competition, give access to the eligible bidders. So it is the prerogative and requirement of the person who drafts such kind of bid document that they include as many people who are competent to do the work, not the incompetents, but the competent to do the work. You get my point? So this is a very important thing, similar work, which I wanted to discuss. And many people make mistakes and then land into trouble by over dilution, by virtue of over dilution of this thing or over restriction of the definition of similar work. It is a very tricky job. So be very careful while defining the similar work. So recently we have You can be one of the area. you can be questioned because of over diluting or over restricting. So be very careful. It's a very sensitive task to define the similar work. Similar one. You get my point? Yes, sir. Yes. Okay. Now for stores and purchase contracts, CVC has given three aspects. One, they said experience and past performance on similar supply for at least 2 years that they have defined. In our case, we have made it even more elaborate, like in 5 years window, minimum 1 year performance, and all those things we have put it. Then capability with respect of personnel, equipment, and manufacturing facilities. This is to be seen before awarding the job for the first time. We do it on trial runs when we give trial orders. We also have got a provision for those who are MSCs
who are participating, our startups who are participating in our bid, we have got a provision in our manual that if we want, we can go and inspect their plants and to find out their capability with respect of personnel, equipment, and manufacturing facilities. So these were written in the year 2002 in the month of December, keeping it in mind that these are the basic things which is required to allow anyone new to enter into any bidding process. And also they said financial standing. Unfortunately, this financial standing has not been included in many of the purchase manuals of the PSUs. Although CVC had said that the financial standing has to be included in the bid process, as a pre-qualification criteria for the procurement of goods. Now comes another circular in the year 2003, where they say that there should not be any vague evaluation criteria. Sometimes it happens so that we make some evaluation criteria which are not in speaking order, and those are relative. Like if I say the quality should be of excellent in nature or good in nature, how do you define good and excellent? Can you define good and excellent until or unless there is a written down parameter for that? No, sir. No, sir. These No. are effective. It should be avoided. So these kind of things, the good quality. Sometimes, in the catering contracts, people write that 1 cup of tea in the nomenclature, 1 cup of tea in the BOQ they write with 2 types of good quality biscuit. Good quality biscuit. Now it becomes bad if you don't appease me. It becomes good if you appease me. There is a scope of corruption. This good or bad is decided by someone who has got a discretion. And the discretion is the root cause of corruption. Do you understand? That's why these vague criteria should not be at all included in any document. Then BOQ must be clearly spelled out in the bid document. In big purchases, it is very, very, very difficult to go for, some irregularity because there are multi-tiers examination scrutiny. But in the small procurement, small size procurement, small value procurement, there are less examination, less scrutiny, less audit. And that's why there is every possibility mistakes will be done or willful mistakes will be done over there. BOQs are never spelled out properly. In a quotation, what do you write? You need some ball pens, you need some papers, you need some baskets, paper baskets, you need some buckets. You only put the descriptions, you don't put the quantity over there. While you are asking for the quotation, you are not telling them the quantity. Now tell me one thing. If I go to a shop and say I want to buy 1 ball pen, and if I go again and say I want to buy 1,000 ball pens, will the price be the same? No, sir. No, sir. So do you understand the importance of quantity being put in the BOQ? That is why it is called bill of quantity. Many people don't do it. And that's why CVC says that bill of quantity must be clearly spelled out in the bid document. You get my point? Okay. And then no surmises or conjectures during evaluation regarding quantity for price bid evaluation. Means you cannot say ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, all those things, या इतना ही चाहिए होगा. You cannot say that. That's why the BOQ should be firm for the evaluation of the bid. You cannot change the quantity just to at the time of evaluation of the bid, price bid. You will do it only when you want to favor or disfavor someone, which leads to corruption.
You want to favor someone, your friend who is a bidder, what do you do? The highest, the item in which he has given the highest price, you minimize the quantity, nearing zero. And where you have put the maximum, minimum price, you maximize the quantity, so that ultimately in totality he becomes the L1. You can do it with certain kind of jugglery. That is not advised by CVC, and that's why they say no surmises or conjectures during evaluation regarding quantity for price bid evaluation. Do you get my point? Arun, Mr. Avilek Singh, are you getting me? Mr. Avilek Singh, I think Mr. Avilek is there. You are logged in. Anyway, then comes the two-bit system for tender should be followed, which we follow. Let me tell you one thing to all of you here who are into small purchases. In big purchases, we have got two-bit system. In small purchases, it is for the benefit of the officers dealing with the tender to have a two-bit system. Why do I say so? Why do I say so? I say this because suppose you are getting a single bid tender where you have asked for certain documents along with the price bid in the same envelope, because in smaller value it is always a manual tender, not a e-tender. So in such cases, when you ask for all the documents as well as the price bid in the same envelope, what is happening? You might have asked for the valid dealership certificate or authorized dealership certificate. You might have asked for the GST IN. You must have asked for the technical specifications that they are offering, the model name and all those tech spec, all those kinds of things. In works, you don't, in purchase of goods, you don't ask for PAN number or PAN card, but these things you ask. Now, when you have asked for all those things, you find that the L1 bidder, because the price bid is also there in the same envelope, you find the L1 bidder who has offered a price much lower than the L2 is actually not qualified, because the authorization certificate from its manufacturer, its validity has already gone way back, and he didn't bother to renew it. Uska to business chal raha hai. It doesn't depend on this government supplies. He's a big dealer in the town. His day-to-day job or business is going on as usual. He didn't even bother to renew his authorization. And even if he does that, it will take at least 15 days time, and it will not be considered by you anymore. The bid is open. Here you are in a dilemma as a committee member, because the price was low. Now you have to disqualify him. You are fearful with this kind of variation of price between L2 and L1. How can I reject the L1? It may be a question. This may actually make you fearful. In order to avoid this kind of dilemma, it is always better to have a two-bit system. You put all the technical documents, techno-commercial documents in one envelope, and the financial bid or the price bid in another envelope. And you open up the techno-commercial bid first. If he is disqualified, you did not bother to open the price bid at all. And you won't even know what kind of price he has actually put. So you are saved from such kind of fear or dilemma, isn't it? That's why I say it's for the benefit of those who are dealing with price bid, tender should go for a two-bid system, no matter how small the value is. Otherwise, you are in trouble. Unnecessary anxiety and stress. Don't take it. And then comes another important thing which came in the year 2003 September. That is, no splitting of work for the benefit of the lower officer. Many a times we are
we are tempted to split the work so that the work gets done faster, because the competent authority will be someone within your area, and you can get it approved by him and get the work done very fast. But you should resist this temptation, because this is a violation of the guideline of the CVC. It says that splitting of work for the benefit of lower officer is an irregularity. If you need certain things in one go for a particular machine or a particular purpose, you should estimate it in one particular go itself, no matter who becomes its competent authority for approval. It may go to the headquarter, it may go to the board. You need not bother about it. But please don't split it, because if you split it today or tomorrow, you will be held responsible for this kind of violation of the guideline of CVC, where it is clearly says that no splitting of work for the benefit of the lower officer. They use the word benefit, I don't know why. It may be a very sarcastic thing, that benefit, there is no benefit. But the benefit, yes, in a very illicit manner, there is a benefit if there is a involvement of corruption. Otherwise, sometimes it has been done for the fastness of the job, to do the job in a speedy way. But then also, you are not supposed to violate a rule or guideline to do something faster. Sometimes you need to reach home fast. That does not mean you break the traffic rules, do you? You don't. So this is something like that. Okay. Sir, one question. Yes, please. When we will call it as splitting, if we order for the same thing after 1 month or 2 months, will it be called as splitting? Yes, of course, if it is required and your track record, your consumption pattern says that it is required every 1 month or 2 months, and you have got a regular consumption pattern, there you will have to make at least a 6 monthly, half yearly proposal, if you don't want to make it an annual proposal. If it is a repetitive nature of work, you don't do it every day. And that too, if you find that if you do it for 6 months, the competent approval has to be given by one step higher authority. And if you make it monthly basis, it is being done by a considerably lower authority. The approval is given by a lower authority. If that is the kind of thing which is coming into the picture, in that case you cannot do it. And it is always advisable to plan your things at least for 6 months and then project your intent accordingly. It is a practice everywhere in the organization that we make at least indent for 6 months, not less than that. Or sometimes, which is required only for one time, for that there is no such hard and fast rule. But for those things which are consumables, fast moving items, where we need it every time and on a regular basis, we have to make a requisition or requirement. We have to pose our requirement at least for 6 months time, not less than that. Okay. Okay. Now, in 2003, in July, in the month of July, again there was some uh, guideline which says that Sir, one more question. yes, please. Yes, please. Sir, please explain splitting and wider participation, because both the guidelines are from vigilance. Sometimes when we are going Splitting has to, got nothing to do with wider participation. Splitting is in terms of the DOP of the person to whom you are sending it for competent approval. Means, suppose your area GM has got a power of 20 lakhs. I'm just giving you a hypothetical case. Your power of GM, area GM is 20 lakhs. And your requirement is for 41 lakhs or 40 lakhs, the estimated cost of the required items. So you may think of splitting it into two parts. Okay.
be it a civil engineering work or it is a purchase. So you split it in such a way that both the proposals remains within the DOP purview of the DOP of your area general manager. Whereas if you had clubbed these two, because the requirement came at the very same time, you should have gone to the higher authority, maybe the director of the company or organization. So if it is found that uh, you have bifurcated or segmented the requirement in two parts just to keep the the DOP, keep it within the DOP of your area general manager, who is a lower officer to the director, then it is an irregularity. It is a violation of the guideline. Fine. And as far as wider participation is concerned, it has got nothing to do with it. Wider participation, for that matter, you have to make two things. One is your specification should be generic. It should not be tailor-made to one particular product. Secondly, your terms and conditions should be such that means not the GCC. GCC is all frozen, but special terms and conditions should be such that you allow as many uh, bidders, keeping in mind your requirement. Of course, you will not change your type of requirement to entertain a bidder. Not that. I'm not saying that. But at the very same time, your specification should be so generic in nature that it is not it can cover as many bidders as it can. That is called wider participation, for wider participation, but not compromising with the quality, not compromising with the quality at all. Sir, we will discuss this case with a particular perspective. Okay. In our company, Yes, please. vehicle hiring is being done on a composite proposal basis Mhm. because that proposal comes to director once only in a year. Okay. Suppose 60 vehicles has been approved for a particular area. Okay. The types of vehicles that is to be tendered at area level within the DOP of AGM. Okay. All the 60 vehicles has been approved once at once. If they are going to do tender for 60 vehicles, never the tender will be finalized. See, I tell you one thing. In that case, It is, I understand how you. we can I make understand wider your point. participation, because when we I will go understand. for piecemeal. I do understand your point. See, it is been always told by CVC also that if works can be clubbed, if similar works can be clubbed, it should be clubbed to the extent possible, so that you can get a bigger contractor who has got better infrastructures, as a result of which can give you better service. This is a theory by virtue of which at times we get centralized procurement. Even in engineering departments, we find that certain items are procured in centralized manner, certain items are decentralized. I can't see your face and there is no name. There is a code over there. What is your name, by the way? Sir Manoj Ade. Mr. Manoj. Okay. Yes. Okay. So the thing is, it is always encouraged that if there are similar works in different areas, and if it is required, if it can be clubbed together, then in that case it should be done. And it is told that it will give you a better quality because bigger contractors will come into the picture and they have got better infrastructures and support system rather than the smaller players. That is what is said. But in practicality, in many organizations, we find that the hiring of vehicles is being done at area level itself, not at the project level, but at area level itself, not by the headquarters. I don't know which organization you are talking about, which subsidiary, but normally in other subsidiary companies, many subsidiary companies, this kind of hiring of vehicles are being done at the area level only.
Firstly. In Secondly, WCL also it is being run at area level. area level, right? So if there is some centralization of any product or any item, be it goods or services, then it is a decision taken at the local level of the subsidiary, where they can make a discrimination or discretion, rather not discrimination, whether to make it a procurement through area level or through the subsidiary. There are certain items, like high value sub assemblies of equipment in E&M as well as in excavation department. These items are always being procured centrally. Like if you want to buy a dumper, although the requirement is from your area, you cannot buy a dumper from your area. You'll have to buy it centrally from the subsidiary. If you want to buy a undercarriage of a dozer or something, you don't buy it from your area level, you buy it from the subsidiary level. Even if you want to buy a 10 cubic meter bucket for a particular equipment, that also it is being done centrally. But at the very same time, there are certain items which are of quite high value but are being procured at the area level. There are certain critical items also. In your case, it is not a critical item. Vehicle is not. Suppose we are going to tender for 8 vehicles, okay? For थोड़ा qualifying वॉल्यूम criteria is बढ़ाइएगा, 150%. आपका वॉल्यूम मेरे तरफ से तो ठीक ही है। हाँ, अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ, बोलिए। ये बोला था सर, सपोज 8 गाड़ियों का एक टेंडर किया जाता है, उसके लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो दिया है उसमें आपका छोटे पीछे बिडर जो कोई है बात कर रहा है इसमें। कम कॉस्ट को यदि अपन हाँ, बोलिए। जो कम कॉस्ट करके भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते थे, इसलिए मैं वाइडर पार्टिसिपेशन की बात इस बारे में कर रहा था। मैं ठीक से यदि किसी के पास एक गाड़ी है तो वो लगता है 2 माइक लिसनर्स होने एक बंद करना पड़ेगा। फिर जनरली क्या होता है कि वो एक आदमी जो है जिसके पास व्हीकल एक ही है, वो यदि कोट करेगा तो लो वैल्यू में वो कोट कर देता है और पूरा टेंडर बाद अरे में साहब, cancel हो एक जाता माइक है। बंद करिए, आपका 2 जगह से आ रहा है आवाज, 2 जगह से आ रहा है, एक बंद करिए। सर उसमें क्या है, यदि एक व्हीकल वाला कोई है उसको भी पार्टिसिपेशन में यदि लेना है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग 8 व्हीकल का टेंडर करके उसको तो हम लोग एक तरह से रोक रहे हैं। now let me tell you one thing. ये जो डिसीजन है, इट्स टोटली अ मैटर ऑफ पॉलिसी ऑफ योर लोकल सब्सिडियरी। लोकल सब्सिडियरी का डिसीजन है। आप आज के दिन में आपको पहले तो जेम पोर्टल में हायरिंग के लिए जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू जेम पोर्टल। आप ऐसे लोकल टेंडर, ओपन टेंडर नहीं कर सकते हैं, आपको जेम में जाना है। अब जेम में अगर वो अवेलेबल नहीं है, इवन आफ्टर कस्टम बिड, देन ओनली यू कैन गो फॉर ए ओपन टेंडर। दैट इज द रूल। अब ओपन टेंडर में आप अगर देखते हैं कि आपके पास आपको 60 व्हीकल्स का रिक्वायरमेंट है और एक ही एजेंसी 60 व्हीकल्स नहीं दे सकते हैं, देयर इज अ सिस्टम ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द वर्क, नॉट ऑर्डर। ये क्या है कि आप काउंटर ऑफर ले सकते हैं। Yes, sir. यू We कैन do it in a CCL likewise. हाँ, सुनिए, आप काउंटर ऑफर आप एक ही में देते हैं, उसमें आपका टीपीएस में लिखा हुआ रहेगा कि आप एटलीस्ट 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट का टेंडर अगर आप भरते हैं, मतलब 30 व्हीकल्स का आप टेंडर भरते हैं, तो आप एलिजिबल होते हैं उस बिड के लिए। आर यू गेटिंग मी? ये क्लॉज है सर हमारे इसमें, एनआईटी में ये क्लॉज है। अच्छा, नाउ लेकिन 50% हो गया। नाउ 50% का किसी ने 30 व्हीकल्स का दे दिया, तो वो मिनिमम 30 का उसको एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली सर, क्योंकि पहले टेंडर फाइनल नहीं होते थे अब इसलिए। मेरा बात सुनिए, अब मेरा बात सुनिए। देयर इज a L2 also, there is a L3 also, there is a L4 also, isn't it? अब ऐसा है कि जो सेकंड जो टेक्नो कमर्शियली क्वालिफाइड मैन है, बिडर है, जो कि L2 है, उसके लिए उसको आप काउंटर ऑफर के लिए बोल सकते हैं कि L1 प्राइस में आप कितना दे सकते हो ना। वो L1 प्राइस में अगर वो एग्री करते हैं टू प्रोवाइड यू से आउट ऑफ 30 20 व्हीकल्स,
सो आपको 20 व्हीकल सेम प्राइस में L2 से मिलता है. Remaining 10 you can give an counter offer to L3 who is techno commercially qualified. If he agrees to provide the vehicle at L1 price, then he gets the remaining 10. As a result of which of your all your 60 vehicles are hired, and you can put the award on L1, L2 and L3 on the at the L1 rate. That is the provision, and there is no other provision other than that if you go for in one go for 60 vehicles. But you can very well decentralize the tendering through a policy that you take in your subsidiary company, because in other subsidiary companies hiring of vehicle is done at area level. That is all I can say. And now it is already 11:33. We will take a break and come back in 15 minutes time, and please be there on time so that we can end the session. Could I ask a question before? Who is asking the question? Arun, sir. Okay, Arun. Sir, the question is, during emergency or suppose in a pandemic, we have, with the advice of competent authority, procured some item. Now we have not made payment, and after 6 months, it has been decided to negotiate for the rate. Whether it is justified? Sir, your voice is not audible. I had muted it to avoid the feedback. Now, this was an emergency purchase with a approval. There must be some paper. Without in record, but it was advised by competent authority. What kind of advice was that? Like in pandemic, it was advised to purchase the oxygen cylinder, and approval may be taken subsequently. But the Just a moment, Arun. Have you taken the approval subsequently? no, sir, this is not related to my department. Pandemic started 2 years back. No, this year pandemic, this second wave. Okay, second wave, 1 year back. Yes, sir, 1 year. They have not taken the approval. Did you find the time to take an approval after that? Sir, they have not taken the approval. Now they have decided a committee to negotiate on the rates. Now you cannot put the blame on the competent approval. They had competent authority. They had asked you that you take it and take immediate approval from me. You have not taken it for 1 year. Yes, sir. Since I am the part of the now committee to negotiate on the rates, that's why I'm asking whether after 6 or 8 months can we negotiate on the rates? We will come to that about negotiation with the L1. Okay, that is a part of CVC Yes, guideline. CVC yes, guideline. yes, sir. And let me let you know that you cannot negotiate. Yes, sir. Exactly. I'm saying to the committee that we cannot. You cannot negotiate. Yes, you can negotiate if it is a negotiated contract. Yes, sir. And you can negotiate. I can be a devil's advocate here. In one hand, I can plead that you cannot negotiate. In another hand, I can say that you can negotiate. So let it be a suspense here, and let us go for a cup of tea and come back after 15 minutes. Okay? Okay. Okay. Bye.
Well, welcome back. Are you there? Sir, welcome, sir. Ah, Welcome back, so sir. should we start? Yes, sir. Okay. So, in the last discussion, we were talking, we just had started uh, the guideline about talking about the guideline which was issued in 2003 July. It said that all pre-qualification evaluation or exclusion criteria, it should be made explicit in the NIT bid document. And acceptance and rejection of bid should be guided only by the laid down criteria of the NIT or bid document. What does it mean? Sometimes we find even in gem procurement that while drawing the specifications and the terms and conditions in our custom bid, because now Yes, sir. we will talk more about gem uh, parallelly with the provisions of our purchase manual and the guidelines. We find that when we draw the specifications, we make a very sketchy kind of specification. As a result of which, we dilute the process. Suppose you are trying to purchase a particular spare through GEM or any tender. If you say that you should be a past supplier, you should be a past supplier of this particular item, and forget to write that you should also submit the performance certificate from the earlier purchaser. And at a later time, it comes into your mind. You have not mentioned that in your specification that the bidder should also submit the performance certificate from the earlier purchaser. But at a later time, it comes into your mind that merely by submitting the supply order doesn't mean that he has supplied it, or rather doesn't mean that he has supplied it successfully. Means the completion of the contract was successful. It comes into your mind, and then you ask from the bidder as a shortfall document and say, you have given the supply order, now provide us the completion certificate also. If you do that, then it is a violation of CBC guideline. Do you get my point? Mr. Abhilek Singh, you're getting my point? Yes, sir. If you have to ask for the second document, that is the successful completion certificate from the earlier purchaser, it should be provided in your NIT or bid document in the very first place when you are floating the tender, not at a later date. You cannot ask for it. And that is what the CBC says. If you do it, and by virtue of non-submission of such kind of document by the bidder, you reject him, then you are responsible for to be questioned. So don't do this. Whenever you make your bid document, whatever kind of bid document you make, beyond that you cannot ask for any kind of question. Mr. Mayank, are you with us? Are you understanding the implications of it? Yes, sir. Yes. And so be very careful while you are drafting your NIT, the provisions of your NIT, so that at a later date there is no complication and no afterthought is allowed. Whatever is written in your bid document is written. Sometimes we make mistakes. We make mistakes in terms of different aspects of the bid document, like delivery terms, delivery period, and all. You gave an absurd delivery period, and then when you are asked or when you are questioned, you say, "Okay, we will. It will not be 3 months. Let it be 6 months." You cannot do that. If you have to do it, you have to go for a re-tender. You will have to cancel that tender and then again come up with a tender where you change the delivery period from 3 months to 6 months, because that is more practical if you feel so, as per the reasonability and the reality of the fact. And then you come up with the retender incorporating these changed terms and conditions.
with an approval from the competent authority, of course. So these are the things which you have to keep in mind. If you change any condition midway during the tender, it is a violation. You cannot do that. No matter how small it can be, it may be. Don't think that it will go unnoticed by anyone. All the bidders are observing you, and if one bidder's interest is hampered because of such kind of changes, then they will make a complaint against you. They are going to make a complaint against you. So if you have to make a change, if you think there is some blunder has been made, some mistakes have been already made, go for a cancellation of the tender and then re-tender it. Do not try to change it in between. Okay, But Arun. in that case, that department had always already executed that contract without payment. Which one are you talking about? Sir, Oxygen. oxygen plant case. Okay. The See, work has been see, executed. coming Payment back to has you, not been if you either I give you the answer just now or I keep it for the right time when the topic comes. Okay. Okay, Arun, I okay, will come back to you. I will come back to you when the topic comes. okay, Okay. sir. Negotiation with L1 or negotiation Yes, sir. or as a word of work on nomination basis. I will come to that. Okay. Okay. Sir, regarding this, I have a question. Yes, please. Carry on. Regarding the delivery period which you have mentioned, sir. Like, say in a case which the tender is due for opening, and if a bidder makes a representation that a delivery period can may be extended, citing the reasons that in this pandemic the resources cannot be obtained quickly as such. Some of the reasons. So prior to tender bid opening, we have that. Can we extend the delivery period, sir? Because we are Yes. giving No. giving the chance to No. all the bidders. Mr. Sri Ramamurthy, isn't it? Yeah. Yes, sir. So can I call you Sri? Yes, sir. You can call me, sir. Okay. Sri, I want to tell you one thing. There are provisions both in our e-procurement system as well as in GEM where clarifications can be asked for Yes, sir. in a certain period, a stipulated period of time. Okay. Yes, Once sir. the bid is floated, tender is floated, the bidders have got a scope to seek clarification in certain matters. Yes, And sir. there is a stipulated time given for the purchaser to give the response against such kind of clarification sought by the bidders, Yes, both sir. in GEM as well as in our e-procurement system. Fine? Yes. Yes, sir. Suppose this kind of delivery period thing. For example, we are taking one example only. Suppose there is a bidder who says that the delivery period has to be extended. Yes, sir. And we know there are, we just don't know how many bids are there. But there is one requirement, Yes, sir. one clarification asked by one particular bidder. If you have got past experience of procurement of such kind of items, where you had given the similar delivery period and you have gotten it in the same circumstances, say pandemic or otherwise, if you have successfully received bid with the same delivery period, you have got no way or no reason to Why to extend it? take action against the clarification. You can disagree with the party and saying that in the similar situation, we had gone for a tender and with the same delivery system where we have already procured with participation of sufficient number of bidders. Yes, sir. That's why your uh, your Claim. your representation Request. cannot be agreed to. Agreed to. Yes. But Okay. but if you think that no, the representation has got some merit, and you find that this is to be done because the kind of delivery period you have given earlier was for a smaller number quantity. Here the quantity has increased, and considering the capability of the manufacturers or the bidders,
we should have increased the delivery period proportionately, or at least by some period. Some period. Some period. There, if you think rationally that it is a valid request, then you should go for a retender. You cannot change it arbitrarily. You will have to go for a retender, giving, making a provision of extended or a wider period of delivery, and then go again for a tender. That is a retender. But in between, you cannot change it. There is no such provision in our purchase manual as well as in GEM portal. You get my point? Okay, sir, that's clear. So Thank you, in sir. any case, if you want to go for a change in your provisions of the tender document, you will have to cancel the tender and accordingly go for a retender. We have done it several times. We have done it several times whenever we found that their contentions are genuine. And why do we do it? We do it for wider participation. We Yes, don't sir. want to, we don't want to discriminate. We don't want to keep someone away from the tender just because we have written something and we don't accept our mistake, or we don't understand. Not so. We should not be egoists. We should not be rigid on our earlier decisions. We should be open to criticism. We should be open to discussion. And if we find it is going to give certain amount of leverage or certain amount of comfort to a genuine seller, we should accommodate it. Although at the loss of the time, we will be losing some time on that, but we should hurriedly make a retender for that. That is how it is done. Now, coming to a very interesting topic where CVC says that submission of advanced samples by successful bidders may be stipulated for indeterminable parameters like feel, finish, shade, etc. They say sample-based tender can be done where you cannot determine or you can draw a specification for matters like some parameters like feel, finish, shade. When we say that, it is normally about the textile kind of thing that we procure, like drapers, the towels and all those things for our guest house purpose or any other purpose. Because we are not textile technologists here, that's why we don't know how to draw a specification as far as textile is concerned. But we know the basic things. We know the basic things. In the same clause, the same guideline of CVC, which was published in the month of October 2003, they say that you can go for a sample-based tender, but in the very same notification, they also say that tender sample should be avoided to the extent that possible. That means you should not make it a habit. You have to come out with some procedure through which you can make it more reasonable in the approach of purchasing on items where indeterminable parameters are there. Especially for those who are in the administration department, they find it difficult to draw a specification for items like, guest house curtains, drapers, and towels, bed sheets, all those things. So for that matter, there are two ways of doing it, which we have we had worked out and we have practiced it also. These are all time-tested procedures. You must understand what is the intention of CVC while telling you this, guiding you in such manner. They want that the things have to be done in a very transparent and equitable way. What we normally do when we are going to buy a curtain, we go to one shop, get a sample from that shop and display it and say, this is the sample which the other
dealers or outlets should also supply, and they should quote for the price, isn't it? Now tell me, who is at the most advantageous position? Which bidder is at the most advantageous position in such matter? Yes, Mr. Sri Ramamurthy, tell me, who is at the most advantageous position? कहाँ से सैंपल लिया गया है? Sir, Precisely. The And suppliers for which we have I'm kept sorry, the I couldn't able prototypes. to hear, sir. Can you please कहाँ repeat it, से sir? हमने- हाँ, okay. Now switch off your microphone, otherwise there will be feedback. Yes, I sir. got your point. So the agency or the dealer from where you have taken the sample will be at the most advantageous position because he has got a ready stock, so he can always manipulate with price. I mean, he can tweak with his price, not manipulate, tweak with his price. He can reduce it because he has got a ready stock. On the second hand, do you think all the dealers and the outlets get their commodities or their fabrics from the same textile mill? No. So it is very, very unlikely that all the outlets will have the same texture and same design available at their outlet. Even if they don't have, they will have to take time to get the supply from that particular textile mill or somewhere. So who is at the advantageous position? The one from where you have taken the sample. This is a very, very irregular way of doing it. Collection of sample from one place and then asking others to quote for it, who don't have any idea from where the product has come. So what is the remedy? Remedy is to bring in an equity among all the bidders, to give them the confidence that we are also with you. We want you to give us the best price. How do you do it? First of all, while making your administrative approval, the proposal for administrative approval, you should decide upon, after a immediate market survey, you should immediately have a survey and you should know the budget from your finance, how much is to be provided, is kept for this kind of work. You go there, you know the quantity, and then you find out a bandwidth of product available in the market of similar texture and similar design, not the same, but similar, which looks quite similar to each other from each and every outlet. Accordingly, whatever may be the price, you make an estimate and go for an administrative approval. Then the committee collects those kinds of samples from each and every outlet of the same price band, displays all those in your office and say that these are already displayed. The bidder can bid or quote for any of those fabrics that has been displayed in the office. That means you are trying to give equal opportunity to each and every dealer who are going to participate in the bid, not one single sample that you have collected from one particular dealer. You are giving equal opportunity, trying to give equal opportunity to everyone. And it is not for your drawing room. It is for the official purpose. A little bit, a tulip can be rosebud. It does not make any difference. It's just not that your personal choice is tulip and it should be tulip on the design. It can be a rosebud also. It can be anything. As long as the price and the texture and the designs are similar, not same. Okay. And so you will find you get a genuine price and genuine competition this time. Every dealer or every outlet will be genuinely interested to participate in it because now they know they have got it in the stock and they can also play with the price and bit to back the contract. Do you agree with me or not?
Do you agree with me or not? If we adopt this kind of process, are we not going to get a better price and a better competition? Although it is a sample-based tender? Tell me, any one of you, don't you think Yes, sir. that Yes, sir. Yes, we sir. are going to get a better price and better competition? We Yes, are. sir. Yes. Yes, sir. That's why you have to make some improvisation, staying within the guidelines, provisions of the guidelines, trying to do the best to bring in competition and equity and transparency in this matter. Okay? Secondly, when you are going to buy some towels or bed sheets, say white bed sheets, white Turkish towels, how do you do it? You are not a textile engineer, but you are a person who has got common sense. You can draw some specifications, of course. How? You understand one thing, that knit per square area, whatever it is, square inch or whatever, is one parameter which determines the quality of the product. If the density of the knit is more, then the price goes up, quality goes up. कहीं कहीं पे बैंडेज जैसा भी टेक्सटाइल मिलता है, कहीं कहीं पे बड़ा अच्छा टाइट टाइप का मिलता है जो कि ड्यूरेबल होता है. You understand that? You realize that while you go for a shopping, until or unless going to buy a muslin or a chiffon, when you're going to buy linens and towels, you always go for a heavier material, which is heavier inside. What is that heaviness within this same dimension? It is the knit, the density of the knit. Okay. So you can say that you cannot count the knit, but you can always weigh the commodity. Suppose someone says the best kind of things are produced or manufactured by a particular textile mill. You go to a shop, get a particular best quality product, weigh it in an electronic weighing machine of a particular dimension, of course. And then you know with this dimension comes this particular weight. So if you make a range of the dimension plus minus of that particular available dimension of that particular uh, reputed product, which will suffice your work, you go for a range of it, say plus minus in the length and plus minus in the width. And through unitary method of calculation, you can also say what will be the weight in the higher dimension, what will be the weight in the lower dimension. This much of area, this much of weight. So this much of area will be the weight. You can understand, we can always calculate it. Simple mathematics, class 6 standard. So you know that this is my range of dimension, this is the weight I need. You know it will be a Turkish towel, that gives you the second dimension is one specification, weight is the second specification. Then it is a Turkish towel, third specification, white in color, fourth specification. So you have drawn 4 specifications yourself. In order to put a check and balance on the quality of the thread, you can always put in a criteria that during inspection of the material, it will be seen whether the lints are easily coming out or not. If the lints are coming out easily, which happens only when the poor quality thread or old threads are used, or the product is already old, the shelf life has already crossed, then the quality of the thread has gone, has lost. In such case, you can say that this kind of products will be rejected. No lint should come out while rubbing it. आपने देखा होगा स्टाफ कार्स में टॉवेल्स लगा हुआ रहता है, आप बैठते हैं हायर्ड कार में और जब उठते हैं गाड़ी से आपके पैंट के पीछे पूरा सफेद सफेद रंग का थ्रेड लगा हुआ रहता है. देखे हैं आप किसी के? फिर झाड़ना पड़ता है. What are these kind of towels? The worst kind quality of towels that are being used by the hiring agencies of the cars or the vehicles that are being given rented out to you. आपने टॉवेल बोला तो सस्ता वाला टॉवेल लगा दिया और वो लिंट जो है आपके पैंट में चिपक जाता है. Why?
because the quality of cotton is poor. So you can always put a check in the inspection clause that this kind of things, if it is found, will be rejected outrightly. So that is how you can make a specification and then go for it. We have done it in the past and we have successfully done it. There was no objection to it, and we got a very good price because there was only the brand people, not the brand owners didn't participate. The manufacturers participate. Way back, way far away from Punjab, Ludhiana, they participated, and their product was excellent. They are using it still. So that's why, and at a very cheaper price, I must tell you. So you must understand that this can be avoided to some certain extent. You can avoid sample-based procurement, and you should try your best to bring in transparency and equity in the process of your procurement. And this is more important for those people who are into the guest house procurement and all those things, administration, personnel, HR. They are involved in such kind of things. Now, in 2005, there was another guideline which says that most NITs have a clause saying that tenders can be rejected without assigning any reason. It is there. We have seen this particular clause each and every each and Yes, sir. Good morning, sir. Good Yes, afternoon sir. हो गया. Good afternoon. हाँ सर, वो ट्रेनिंग चल रहा है ऑनलाइन. Yes, sir, it is there, sir. मिस्टर हरीश कुमार, आपका माइक को बंद करिए. यहाँ भी सुनाई दे रहा है. ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू. So this is one clause which is always there since the time probably any bid document was created. Any bid document was created. But now in 2005 March, CVC said it does not mean that accepting authority is free to take such decision arbitrarily. They say that such rejections must be recorded with logical results. Illogically, you cannot reject any tender. There must be some reason for rejection of any tender. Tender cannot be rejected without assigning any reason. It is written, but it is for the purpose that you are not supposed to give an explanation to the particular bidder whose bid you have rejected. But in today's scenario, they can always ask for it. And the cause of rejection is already uploaded. This is the reason why your bid has been rejected or the tender has been rejected, entire tender, cancelled. So this thing you have to keep in mind, that you are not at a liberty without assigning any logical reason to reject any bid as well as cancel any tender. There were instances where in the first go we rejected certain bid because of some valid reason as per the provisions of the purchase manual, and later on in another bid, another tender, in the same fashion we had rejected another bidder. Now this bidder whose tender was floated later, he challenged it by virtue of the interpretation of the clause of the particular clause of the purchase manual. Although we had a different concept or interpretation, they had a different interpretation. In such case, it is always better to seek a clarification from the author of the manual. Don't keep it to yourself. My advice is this: seek a clarification, putting in the interpretation of the bidder as well as your interpretation while seeking the clarification, and then seek a clarification from the author of the manual as to what will be the right way of doing it, whether we should reject or we should accept. Whatever they say, it is final, because they are the author. Okay, they are the author of the manual. So if they say yes, you cannot reject them, you will have to accept them, fine. And if they say no, you can reject them, then reject them.
Now you have got a backup. It is not arbitrary in nature. You have put all your efforts to get to know, go deep into the truth of it, and then only you have taken a decision. So that kind of thing you have to do every time when you're in the business of uh, public procurement. Be very careful. It's a very sensitive task. So don't take any arbitrary and whimsical decision. Always be very careful. Now, regarding EOI, expression of interest, you understand this word? You have gone through this word? All of you? What is expression of interest? It's not a tender. Mr. Abhishek Gautam, have you come across the word expression of interest? Mr. Avinash Srivastav? Sir, excuse me, sir. Mr. Avinash Srivastav? Are you there? Excuse me, sir. Mr. Roshan Kumar? Sir, morning, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Have you come across the word Yes, expression sir. of Yes, sir. interest? I have come across this term. What is This that? term basically What is that? What is that? is an intent to know the market players or the market presence of vendors for which we are about to enter into a business, into a new business or a new. Um, New is the key word here. New, about which we don't have much idea about. idea. Yes. You don't know about the technical specification part, about the technicalities. So you need someone to guide you in this matter, and then you go ahead. Now, when you go for an expression of interest where you don't have the design or specifications with you, you invite designs and technical specifications from different agencies who are competent to do it. For that matter, in earlier days, what used to happen, people used to call for the price also in a separate envelope, of course, of the design that has been submitted by that particular participant. Here we don't call them bidder, we call them participants in expression of interest. That participant will give the price of his particular design. But who knows whether we are going to select his particular design or not? We might be selecting another design. So his price, whatever he has given, has got no significance anymore. That's why it is thought that, first of all, as per guideline of CVC, which came up in February 2011, that we should first of all call for a techno-commercial bid. We along with the design or the plan. Fine. Now, once the techno-commercial scrutiny is done, and how do we do it? With a preliminary estimate of that kind of thing, which is not a final estimate, it is a preliminary estimate based upon which the pre-qualification criteria are fixed, like 30% average annual turnover, or credentials as far as the completion of similar work, all those things. And then after being techno-commercially qualified, only with those people the designs are opened, and when the designs are opened, a panel of the experts will look into the matter and select a particular design which is to the liking, to most of the liking of the people in the company, which will be adopted for further execution. During that time, there should be a meeting with all the techno-commercially qualified participants who will be asked whether they will be able to execute the chosen design and with that chosen technical specification. Here CVC said the specification should be generic in nature. It should not be something where certain aspects are patented or proprietary in nature. It should be generic. Everyone should be, all the other techno-commercially qualified participants should be able to execute it. No design or specification will be accepted which is not generic in nature. This is what CVC says. Once that is decided,
and everyone agrees, all the qualified participants are techno-commercially qualified participants agree to the design, then only the price competition will start and the price bids will be invited. That is what CVC says as far as expression of interest is concerned. I have a question on this point, sir. Yes, please. Go ahead. Sir, my question is, for say we are inviting an expression of interest for a new technology or a new business venture of coal India for say gasification, and we have invited the expression from license holders of gasification technology. Okay. This business is entirely new, and no one, I shouldn't say so, no one, but most of us don't have any technical know-how of the subject. Now, how So can in you this, how can you say that no one has got? Because that would no, be sir, but sir, the intending department or the nodal department uh, is not competent to decide the best technology, and that is why they have called an expression of interest from the license holders. okay. Most suitable for our. These kind of things are normally done when you don't have any player in India. Then you have to go for a global one, global tender, global EOI. We went for the global UI through the portal, Okay. and the point is that still after getting the offers from the license holders, we were not we are not in a position to decide which is the best one for our company. Going back again, reiterating the point that we don't have the technical know-how. Just a moment. Is it because of your ignorance about the subject that you could not decide? It is because of I mean, no business in this field of the company. No, I mean No to say, previous. you had got the designs, you have got everything, but at the very same time, you could not decide upon which particular technology will be suitable for you. Is it Yes, sir. because Yes, sir. you are not into the business and don't have sufficient knowledge in that field? Is it because of that reason? My question Yes, is sir. It is yes. basically, yes, sir. Okay. Exactly because of that reason. In that case, you have got every right to go for hiring of a consultant. Yes, sir. Yes, You sir. Yes, will sir. take a decision on your part. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, now my question arises from here. I was just giving you a practical case. We hired a consultant to decide that which is the most best suitable technology among the offers that we have received. Now Now, there's one thing before you forget. Ji. The consultant who you hire, that is Ji. a CVC guideline, should not have any connection with any of those bidders or participants. Yes, sir. Yes, sir. The consultant was hired through an open tender. No, they should also certify that they have Ha, got, or rather the participant should also certify that they have got no connection with the consultant that you have hired. yes, Then sir. you are eligible to participate. Yes, sir. Okay, Yes. Okay. carry on. Okay. Okay, sir. Carry on. Sir, Then sir, now they went through the offers received, and they submitted their report based on the inputs provided. inputs of, what did you say, Roshan? You are disconnected, it seems. रोशन सर नाउ जी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्या बोल रहे थे आप, बताइए. सर मैं ये बोल रहा था कि नाउ द पॉइंट कम्स दैट मैनेजमेंट आस्क्स टू सर्टिफाई दिस रिपोर्ट, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंसल्टेंट. Report, see, the consultant has been appointed by the management only, and Yes, sir. their scope of work or terms of references are very clear. That they will have to select among the designs or specifications that has been received through the participation in the EOI. Yes, sir. Yes, sir. There must be certain clause which will be binding upon the consultant, that if there is any loss to this company, then they are also responsible, isn't it? Sir, Why, but very this first instance, why did you hire the consultant? Because you didn't have sufficient knowledge yes, or sir. exposure for selection of or examining such kind of specifications, isn't it? That's why Yes, you sir. have. So there is a certain level of responsibility which should be quantified in terms of uh, certain financial terms, that if there is something goes wrong into this,
that you are also responsible for it. So you have to take a very prudent decision and responsibly done decision. So that has to be covered in your terms and conditions with the NIT with the consultant. So Answer. once that is done, it is their responsibility to make the management understand why they have chosen over one particular specification over the other, and convince the management. That is the prerogative of the management to get themselves convinced through the consultant and understand the matter. You understand? Mhm. Yes, sir. Yes, sir. I'm getting Once your you point. are convinced, see, the management don't take that the management is totally ignorant. They understand certain aspect. They are knowledgeable people. They are technocrats. Only thing, maybe they are not in that particular field. That's why they need a consultant. The consultant's responsibility is to make the people in the management understand why and how they have gone and zeroed in into a particular design or specification. I am pretty sure if they can convince the consultant are good enough in explaining the process of their selection or shortlisting, the management representatives will be very easily convinced, or they will understand what is there, and they can take a call on that. So I don't think there is a big issue in this. Certification, after understanding the matter, can be done by the committee constituted by the management. Yes, we select this as per the what do you call it, recommendation of the consultant. That can Okay, be. sir. There is certain element of risk in each and every purchase. I tell you. But then too, there should be some competent people sitting in that committee who has got considerable knowledge, if not specific to that particular area, but they should be competent enough to understand the technicalities of the matter. Not some people who are ignorant about everything. They should not be put into such committee at all. Okay, sir. Okay, sir. Now, coming back to one particular aspect of guideline, where they say that the purchase preference policy was taken away with effect from 31st March 2008, which was earlier given to PSUs and the government sectors by other PSUs, purchase preference, sometimes 10% purchase preference. Means if I, being a PSU and a bidder, bid say 109, and some private sector fellow bids 100 rupees, then I am the L1 because I am within that 10% purchase preference. So these kind of things were there, but later on the government thought this is actually one kind of encouragement of inefficiency. Why should we encourage inefficiency or cost overrun of the PSUs? So they discontinued it with effect from 31st March 2008, and the office memorandum was issued in 2007 in the month of November. Okay, but it was told in the same memorandum that the concerned department may evolve with, or review their preferential policy if it is at all required. And if they continue to give preferential policy, pass on some preference to some organizations, that has to be brought into the notice to the CVC. That is all that they said uh, in their circular dated November 2009. Okay, because that should not be also arbitrarily done. You have to understand that. Now, why do we need purchase policy preference? Why do we need? It is not always to encourage, some government organization so that they can survive. That's why you give them some purchase preference. As you know, in the government of India, there was a policy that any government official of central union government should travel Air India when Air India was a PSU. It is kind of, an indirect way of purchase preference given to Air India so that they can survive, and that is how it was done. And that purchase preference has now gone away with the privatization of Air India. Now, not that is not my point. Point is sometimes it is given to encourage industries to come up, like in MSc and startup. In the policy of the government, today's government, as far as MSc and startup is concerned, we are giving them some purchase preference. If their price is within the 15% range of the L1, and if they are MSCs and startup, they will have to be given 25% of the share of the purchase award.
of the items. This is one kind of purchase preference. Why do you give it? Because we want to encourage new industries, smaller industries come up and then grow to bring up the GDP of the country, isn't it? We encourage newer participants. Otherwise, what will happen? Only the old players will keep on running, and there will not be no new player, and they will never get a chance to enter the field. So that's why they're given this kind of leverages, preferences. This is a preferential thing. Sometimes we give preference to our ancillaries also. Why do we give preference to our ancillary? That is the first one has got some sociological and economical aspects into it. For an organization, sometimes it is needed that we give preference to certain people, because these are the people in a state of emergency or crisis. These are the people who come handy to us. So it is our requirement to keep these industries, these small industries or ancillaries alive by giving them some purchase preference. If you don't keep them alive, then sometime it will happen so that the supply chain is disrupted due to certain reason and we are left with nothing. Then these ancillaries will come handy. But if we put them in a normal condition of competition, maybe they will not be able to survive and eventually shut their industry down. So in order to keep them surviving, we give them some purchase preference. So these kind of things are being done with certain concepts, and purchase preference in general for PSUs and other people were taken away in the month of March 2008. Now coming to the question of negotiation with L1. Arun was asking that we are asked to negotiate now, after that we have purchased it. See, there are two aspects of it. First, you cannot negotiate because if it is, there are three reasons or three conditions where you can negotiate with the L1, that too with L1. And you probably know that. One is if the item is proprietary in nature. Second, if the item has got a limited source of supply. Third, if there is a suspicion of cartel formation among the bidders. So here, your case does not fit in any of these preconditions, does it, Arun? It is not a proprietary item, oxygen plant. Then you cannot say there are limited sources of supply for oxygen plants or this thing. Thirdly, you could not even have any suspicion that there is a cartel formation between the people, because you have gone for a single source. Probably, you please switch on your microphone and reply. Yes, a kind of nomination. They have. Okay, fine. So it doesn't come into this particular aspect here that you are purchasing it through a tender and then you are negotiating with the L1. What is coming is actually as per the what do you call it, award of contract on nomination basis. See, there is a provision, and with that provision you can jolly well negotiate with the seller in certain preconditions. And where from does it come? It comes from a judgment of Supreme Court. And now you should understand, all of you, Yes, and sir. be very careful about it. Listen very carefully. Meerut Munshi. Yes, judgment of Supreme Court, SLP. It's a civil this thing, and it was in 2006, where it was related to auction, not tender, auction. Yes. Yes, But the same concept can be used. Same concept can be used for tender also, and we are doing it. It says that in rare and exceptional cases, for instance, during natural calamities and emergencies declared by the government, where this is one thing. Now, will you not consider this pandemic and condition, which is quite a calamity or a state of emergency? Yes, Although it's not a declared emergency, but it's a state of emergency. Yes. People were dying like anything. Okay. Disaster Management Act is already there. Yeah. Now, it also says that where procurement is possible from a single source only.
it doesn't apply to your case. Then there is another thing where supplier or contractor has exclusive rights with respect of the goods. That is also not applicable to you. Not sir. Then where tender was held on several dates, here it is written auction. I'm just using the word tender. Tender was held on several dates, but there was no bidder or the bids offered were too low. In That our was case, in case of auction, it is low. In case of tender, it will be bids offered were too high. Means you are always getting unreasonable price and you are keeping on tendering and tendering. Finally, after 3 attempts, you say, this is not the only job we do. We have to purchase the thing also. Let us go for a negotiated contract. Here, because it is a case of natural disaster or natural calamity or a state of emergency in the country, so this particular judgment of the Supreme Court gives you the liberty to go for a negotiated contract. So since you have approached only one agency and you have gotten it done through them, yes, sir. your case comes under this particular provision only. And this is also circulated by CBC. You get my point? So under this particular judgment of CBC, Supreme Court, you can very well negotiate. It will be known as an award of work on negotiated contract. But after 6 to 8 months after the execution of the order. He may agree or disagree. Purchaser, seller has got the right to agree or disagree to bring down his price. But now it had to be done at that time when you were procuring. Yes, sir, exactly. The See, department. doing it post facto, it is just a ritual. Yes, It is sir. just a ritual for you now, I would say. And this should have been done at that point of time when we are awarding the work. Now, if you do it, it has got no meaning. It is just a ritual, formality that you are doing. We negotiated, we failed. Or you convince him, tell him, for God's sake, bring down the price. I beg you, I pray. Like that. But this is not the way of doing it. You should have done it earlier. Okay? Yes, sir. Now, there are certain other aspects also, like asking for revised price bid also tantamount to negotiation. Yes, sir. Sometimes you say, okay, the price is high, we will ask for a revised price bid from all. You cannot do that, or even from L1. If you ask for a revised price bid, it also tantamounts to Negotiation. So you cannot do that. Okay. So these things you have to keep in mind. And then comes one aspect, that is bank guarantee. In bank guarantee, you have to be very careful that about the genuineness of the bank guarantee, which has to be verified. There should be a nodal agency who would be checking on the genuineness of the bank guarantee. And other than that, that nodal officer or nodal agency should also keep a track about the validity of the bank guarantee. Validity of the bank guarantee. Sometimes it happens so that an extension has been given to the contractor, but he has not been asked to extend the validity of the bank guarantee. That responsibility lies on the nodal officer as per CBC guideline, and he should be specifically designated with the responsibility for verification and timely renewal of BGs. So this is one thing. And regarding Integrity Act, you must be knowing that as per the provisions, it is a tool which was first introduced by the Transparency International, and where the prospective bidder and the buyer commits not to exercise any corrupt influence on any aspect in the contract. It's done in the high value contracts, and then only they are allowed to participate in the tender once they have agreed
to sign on in that pact. And to monitor these activities, independent external monitors are appointed from the panel of the CVC with the approval of the CVC, and they are of essentially of very high integrity and reputation. But in any case, and they are mostly retired officers, highly placed retired officers. But in any case, and now by virtue of certain amendments of the guideline, it is said that they cannot be from the same organization. The retired officer cannot be from the same organization. He should be from different organization. This is one thing. And an IEM, that is independent external monitor, is to review independently and objectively whether or to what extent parties have complied with the obligations of the pact, integrity pact, and they should have access to all the project documents. If they ask, you cannot deny them the access to the documents, and they can give the report to the CEO of the company, the CVOs of the company, and the CVC as well. There are certain SOPs for implementation of Integrity Pact formulated by CVC, which has to be adopted by all major government departments and organizations like our PSUs, CPSUs. So these are the things, and they are initially these IMs are appointed for 3 years, which can be extendable for another 2 years, not beyond that. And that is how it works. So with that, I come to the end of this session, and I leave the remaining few minutes for Q&A. If you have got any discussion to be made, any clarification to be sought from me where I can help you, I will be more than happy to do that. I have one question on changes in tender conditions after evaluation, and is there any guideline which restricts or, I mean, questions this part of? So there's a Yeah. case where there's a case of construction of washery, sir, where we have floated tender on BOO model, and land is to be leased to the bidder. A certain specific land which you have specified in the tender document is to be leased to the bidder for setting up the washery. The capital cost is borne by the bidder, and he has quoted the rates in terms of washing charges per ton. Now, sir, the point is, after 2 years post issuance of LOI, due to certain other reasons, we have still not awarded the LOA. But there are some changes or there are some restrictions on the exact portion of land which we have specified in the NIT. Now there are two options: either just a moment. I mean to say, you mean to say that the work has, I mean the bid has been finalized, but not the letter of acceptance has not been given. Yes, sir. Yes, sir. Letter of acceptance has not been. Is at that stage. Okay. Ji. Now, sir, due to non-acquisition of land, certain portion of the land, and with full details and deliberations on paper, that portion of that, the leaseholders or the title holders are not turning up whenever they are being asked to with the legal document. The area management has that land has not yet been acquired. That land has yet not been acquired, sir. It is under possession, but is not under acquisition. This clause was it is acquired, but it is so it is acquired, but it is not under possession, physical possession. Not under possession. Okay. R&R has not been settled. Okay. So the area management has offered a solution that there is an adjoining portion of land which is under physical acquisition and possession, and that may be provided totaling to the same amount of land which was specified in the NIT. See, the prudent thing would have been to incorporate such kind of clause in your NIT itself, that this is the land specified, but in an extraordinary situation, the location may shift, which should be agreed upon by the bidder. In a very ideal condition, I'm saying that, because you could not foresee that this kind of trouble is coming your way
you probably had not considered incorporating this kind of savings in your NIT. Fine. Isn't it, Mr. Roshan Kumar? Yes, sir. Yes, sir. It is, sir. But there is one issue with it, that the infrastructure facilities that are associated with the project will also have an impact on the cost. And if I write this provision that in case of uncertainty or any changes, the strip of land may be changed. So in that case, the bidder will not. We will have a definite question that Of how course. will we decide? How will you decide and at what distance? Suppose Exactly, you exactly, sir. you cannot keep this kind of clauses, preconditions, open-ended. You have to Open. you have to confine it within a jurisdiction also. Say Exactly, sir. Exactly. you should have written, what you should have written is within an area of a radius, in a radius of this much from the actual site. That means the person would know that you are not going to shift the project from Orissa to Andhra Pradesh. You are going to shift it by a few miles or few kilometers from that place, or few furlongs, few meters, or whatever. So जी जी. this should have been given. Now that it has not been done, Sir, now now in the present scenario, when it is not in the night incorporated in the 90, but sir, physical parameters are as such that there is no substantial change in the cost impact parameters of the project, even after the change of change or precise. rather direction of the land. See, that is called a good document and a bad document, Roshan Kumar. A good document always foresees Yes. every possible aspect of it. It can foresee. That is called a good document. It has got remedy for each and every eventualities. If it is missed out, if it is ignored, or if it is somehow, omission rather from the provisions, I would say you will have to evaluate it in the in the perspective of cost involvement for any bidder who would have been L1 in this case, Yes, sir. for the purpose of shifting of the site from the site that you have allocated to the site now you are proposing. You are proposing. That has to be done. If there is no cost involvement, then any other bidder who had participated in this cannot challenge. Even if they challenge that had it been this site, I would have quoted less. Now there is a question of equity. I would have put lesser quote in my bid had I known that you are going to shift this from location A to location B. So your contention, your reasoning in the perspective of the cost involvement by virtue of the shifting from the location A to location B should be more or less zero. And if you can Yes, sir. calculate it, if you can really justify it logically and technically, then you can put up this matter to the competent authority with this kind of proposition and it should be done. You cannot do it yourself. You should again go back to the competent level where this kind of approvals are taken, or maybe at times a level higher, for taking a call on these locations, this thing, change of location. We are doing several such kind of changes of location with certain level of um, approvals, competent approval. In case of outsourcing patches also, outsource patches also. Suppose they are supposed to work here, we are asking them to shift to some other places with certain competent approval because there is no property, mineable property, and their contract period is going on. So we shift from one area to another means within the vicinity of the mine, but we do it. So with some due approval. So that kind of approval has to be taken where you will have to logically justify that there is no cost involvement, additional cost involvement or lesser cost by virtue of shifting. ऐसा ना हो कि वो bidder को advantage, bidder को ना कोई advantage मिलना चाहिए, ना it should be disadvantageous cost wise. That if you can
logically justify and get an approval, I don't think there is a problem for this. Sir, I have a question. Yes, please. Okay. Sir, what is the role of independent external monitor? See, they are the people, they have got access if they want, if they get any complaint, if they get any complaint from either of the side that they are someone, the buyer or the seller, any side, the other side is using some malpractice, so they can put a complaint. Both the side can put the complaint, purchaser side and the seller side. Sometimes there is a conflict between the buyer and the seller. So in such case, before going for any arbitration, before going to the court, if you go directly, court will ask you, have you exhausted all your resources? Because you have got IM in place, you have got the arbitrations in place, all those things in place. So have you exhausted all those things before coming to the court? So first of all, you exhaust your resources of settling down the matter, and then only you come to us if you are unhappy with the decision. So first and foremost, what happens if you as a purchaser finds that the bidder is not good enough to be qualified and you reject the bidder, they can go with a complaint or a representation to the IEM and say, see, I am aggrieved. They have taken an arbitrary decision, and by that way, they have rejected us. We are not happy with the decision. So we need your intervention in this matter. Thereby, the IEM will call the purchasers or representatives or purchaser to sit front to front with the bidder and have a hearing of both the sides and take a decision that who is correct and who is not. Then IM will make its own report and recommendations. They can say, no, the buyer is right. They can say the seller is right. They can say, well, it is a very complicated issue. Better you change these things and go for a retender. They can also say that. They have said such things in the past. They can also suggest a retender. So these kind of things are happening, and that is one role. And other role is, if there is any foul play from any other side, they can bring it to the notice of the CBC and make their reports. And to the CEO. Decision made by independent external monitor, is it compulsion to obey that? It is mandatory for you. It is mandatory for you for any high value contract. You will have to appoint IEMs and you have to enter an integrity pact. Both the sides should sign. Sir, I have one question, sir. Yes, please. Sir, every tender should have a budget certification or budget concurrence BC before floating of tender. Right. Without that, you cannot proceed. Sir, so sir, I am giving you a. You are. Your voice is not audible. Who concept? Or in fact, sir. You repeat the question. You got disconnected. You repeat the question. Yes, sir. My question is that there are. This is a case of our company that tenders floated on BOO concept, build own operate concept. Washery tenders are floated on it, and some gasification tenders as well by coal. Okay. For Dankpur comes. Sir, in that tenders, let me talk about district master washery. Estimate is being prepared by CMPDL, and we take the approval of board on that estimate. However, we don't take any budget certification because the expenses will be made after 3 years or 4 years after construction of those washeries. See, you will have to make a plan. You have to certify this because this work will start or executed or the payment will be made against the capital expenditure in the year say 2024-25. Okay, therefore no budget is required at this point of time. This is an advance action. Okay, sir. This is an advance action. Okay. But you have to note it down that tentatively the capital budget will be required in the year 24-25
or 23-24, and at this point we don't need any budget provision, and we will be keeping this budget in the provision, or we will take an approval of the budget at that point of time when the work is actually executed and the payment is to be made in the same financial year. But this is Sir, here. Ji. Ji, sir. Sir, please go ahead, sir. so Sorry. this is how it is done. This is a kind of a process in big projects where immediate capital expenditure is not there, and capital budget or budget certification is done only when that particular budget will be spent within that capital budget year, CB. Okay. Sir, sir, in this case which I just mentioned you, there is no capital expenses. The expenses are of revenue in nature. We'll pay them operating charges, only operating charges. Okay. Like we hire. Fine. If you are giving them the operating charges, in that case, for the revenue part of it, you know when you are going to award the work and when you are going to execute the work. So will it take more than 1 year from the date of tender, floating of the tender and award of the work and starting? Yes, sir. Even after award of work, we are giving a time of 3 years for construction of the washery. So only after post construction and post successful commissioning, the payment terms will start. So you record it in your proposition. Accordingly, you this we call noting of the budget. Okay, sir. You will have to send it to the finance. In any case, they will note it that this revenue budget will be required in the year so and so, and that time you will have to put it in your revenue budget. I give you a simple example, and that will make the thing clear. When we purchase an equipment, it comes with a performance guarantee period. Say first year is the warranty period. There you have the equipment has to perform for say 80% availability or 85% availability. Second year also it has to give 85% availability. Third year also it has to give 85% availability. After that the performance guarantee period is over. But to ensure, we also tell the manufacturer or the bidder during the tender that if you need us to buy some spares to keep this particular machine to the level of this availability as stipulated in our tender, we are ready to buy it. But it will be added in the pricing part of it. And so if you give a huge list of spares, then you may be priced out. And if someone gives less, he will be the L1. So keep it in mind and put the spare list and the cost of it, which will be the tender will be evaluated on the basis of totality cost of the equipment plus the cost of the spares over a period of 3 years, 1 plus 2. Now what happens? The first year spare and the cost of the equipment is taken in the capital budget. Mr. Roshan Kumar, are you hearing? Yes, sir. Yes, sir. I'm hearing, sir. I'm hearing. Second year spare is a revenue nature. Third year is of revenue nature. So while we purchase the equipment, what we do? We take what do you call it, budget certification or final budget allocation for that particular thing before awarding the supply order. But we send it to the director technical operations, associate finance also, who deals with the revenue part, and ask them to note that this much of revenue budget will be required in the coming 2 years. That is exactly what you will have to do once you have started the job and the job is finalized, and then you are going to award, or the work award order is to be awarded to your to the contractor. That time you get it noted that in 3 years time this revenue will be budget will be required, say after 3 years. So get it noted to the finance through the in finance department that this kind of revenue budget will be required, say after 3 years or 2 years. That is all you can do. And during that year when the revenue budget will be spent, that year you have to keep it in the revenue budget and get it approved. Is it clear?
Sir, one more question, sir. Yes, please. Sir, Who as is you it? have told us that on procurement on nomination or negotiation basis, Yes. we can procure it in case of a national calamity, government declared emergency, Yes. or if a tender has been done at several times And and no no, bidders have applied for it. no bidder was there, or the price received was too high, unreasonable. Okay, sir. Any more conditions? Yeah, of course, if it is proprietary in nature. Okay, sir. If the item is not manufactured by anyone else. Single Sir, source. sir, two questions, sir. Please go on. The first question is, sir, uh, what is exactly the term that should be used for budget? Because in BCCL we use BC first and then FC. In CCL we use FC first then BC. So what I is know the very confusing, very confusing, very confusing. I know that. See, FC in MCL is given during administrative approval. Okay. With the administrative approval, the FC is given. Whereas uh, in some places it is in CCL also FC? what happens, FC is given. Ji, In sir. the MCL, it is budget certification that the budget is there, and finally the FC, that is the financial concurrence. Now, you have to Yes. understand one thing: it is not a financial concurrence; it is the recording of the provision of the amount that will be required during that particular financial year, which is to be kept aside because now it has been awarded. It is actually the diary number. The diary Sir, is that this amount is there. Now, what is the meaning of FC? If Sir, you yes, fund certification, I guess. if it is fund certification, that is the fund is kept for you. But if you say it is a financial concurrence, then it is to be done at the very first stage. If you say term it as financial concurrence, it has Sir, to be but done at at the very the first. time of recommendation of the TC, we and post approval of it, we send the proposal for financial concurrence If you or say fund financial allocation. concurrence, what do you mean by Or, financial concurrence? sir, now when the rates have been disclosed and the committee has recommended the expenses that are to be met for the said job, that exact amount of budget will be, I mean, concurred and kept for the Yes. same purpose. Yes, after due approval of the competent authority. Ji, ji. After due approval. Once the approval is done and there was a provision in the budget, now that has to be finalized that yes, this year we are going to purchase it. So this amount has to be set aside, put aside. You get my point? So my question is, sir, why Coal India never interfered into this matter and normalized or generalized the terminologies that is to be used? You consult SAP, you go into ERP, find out what is the term used. That is the accepted terms as on today. There is no Okay, sir. ambiguity, no disparity. You go into ERP and find out at this stage what is the name of this particular kind of certification, and in the final stage what is the name. Whatever name is there, that is final. Okay, sir. Okay, sir. And sir, my second question is, sir, then when entire Coal India was being just, fair, and transparent using the Coal India portal, why we are being forced, or why was there need of GEM portal? No, no. See, this is a question which is totally out of place. GEM Out portal of is obviously, GEM portal is a tool where we are actually trying to, bring in or mitigate the cartel formation. The cartel formation, what was happening earlier. Firstly, secondly, across, I mean, pan India, anyone can see what your requirement is, and they have now access to you, and they can send it sitting at Gujarat. They can send the material to say a remote area of ECL also, if it is required. If it can actually compete price wise, and the specifications are in order. I mean, he has got techno commercially qualified. He can beat from there, from Gujarat. And again,
The payments are also made in a very easy way, and which is a reform. We should see it as a reform, not as an impediment. This is not an impediment, it is a reform. The problem lies with us who don't know how to draw the specification for the items, and that's why we find sometimes poor quality items are coming. It is our duty and our capability, I would say, to which actually decides what item we actually want and what item we are actually getting. So this is one very tricky thing, and it's a very important thing also, where the specifications are to be made in such a way where you can, accept or reject, uh, accept the right people and reject the wrong people, whose quality is not known. So that is how it is done. There are other tricks also which cannot be disclosed here. People are they're getting good quality products by, doing certain exercises. And GEM is at it's developing, but it is also in its nascent stage. It's only a few years that GEM has come, and you can see the kind of development every time. It is actually transforming itself. It is at a evolving stage. And you will find it will be more easy for you to operate in GEM. It will be more easy in the years to come. And of course, it takes time. If it is not available, then you have to wait for 21 days. Then again, go for a tender cancellation. Then again, go for an open tender. All those things are there. It is time taking. But then with some advantages comes a few disadvantages. Tomorrow you might find that you can buy dumpers and shovels in GEM portal, maybe someday. Or you can actually go for a service or contract like erection and maintenance of CHP through GEM tomorrow. Who knows? Who knows? People will be joining in GEM in bigger number. Is there any other question, or should we close it? Should we close it then? Okay. Okay. sir. Thank you. sir. Thank you very much. And it was nice interacting with you. Good participants. And, Thank you, sir. and wish you all the best. Wish you all the best for the remaining part of the program, as well as You your. will take our session on case study as well. Yeah, I will be coming back on 23rd to take a class how to write a case study. Yes. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you, sir. Bye. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Hmm.
Good afternoon, everybody. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Yes, sir. और ये पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ वो दिख रहा है? Yes, दिख रहा है. दिख रहा है ना? Good afternoon, all of you. I welcome Sri Abhishek Mishra, sir, who has accepted my request to take this session on service contract, outsourcing, HOE, and coal transportation contract. Currently, sir is posted at NCL headquarter, and sir is already taken the similar class in our previous programs also, and the feedback was very good. And I hope this session will be in line with your requirements. You will find that the doubt which you were having in your mind will be clarified by the sir. With this preamble, I request sir to take the session and interact with the participant. Thank you, Mohit. I think I will proceed with slide by slide, and the topic given to today is service contracts, outsourcing, HOE, and coal transportation contracts. ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये आप लोगों को ऑलरेडी सबको पता है कि एक एग्रीमेंट, एक लीगल एग्रीमेंट दो लोगों के बीच होता है, दैट इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच में बात करें तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि देखिए दो स्टेजेस होते हैं. एक होता है प्री अवार्ड स्टेज और एक होता है पोस्ट अवार्ड स्टेज. तो चाहे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ये दोनों स्टेज सब कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉमन होते हैं. अब यहाँ सवाल आता है कि ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में आउटसोर्सिंग, एचओई, कोल ट्रांसपोर्टेशन, इनको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्यों डाला गया है? अभी आप देखेंगे जब भी आप पोर्टल पे जब टेंडर क्रिएट करने जाते हैं तो आपको टेंडर कैटेगरी में 3 ऑप्शन पूछता है वो कि गुड्स, सर्विसेज या वर्क्स. तो इसमें हम लोग जब भी ओबी रिमूवल का, कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं. इसलिए ऐसा क्यों होता है मैं आपको जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन से उसको समझा देता हूँ, मे बी आपको और भी बाकी चीजें मदद देगा. कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज बेसिकली सर्विसेज प्लस सप्लाई ऑफ गुड्स. जैसे सिविल के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आपको मान लीजिए दीवार बनानी है तो आप ईंट भी लेके आओगे, सीमेंट भी लेके आओगे, सरिया भी लेके आओगे, आप वो सब लगाओगे वहां पे, वो मटेरियल वहीं रह जाएगा और आपने सर्विस भी दी उसको असेंबल करने की, उसको लगाने की. तो दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट.
सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, जो सप्लाई पोर्शन जो हमारे एमएम डिपार्टमेंट में होता है, कि वो सिर्फ मटेरियल सप्लाई किया उसने लाके। और ये होता है सर्विसेज। यहाँ पे क्या है कि इसमें कहीं कोई मटेरियल वो हमको देता नहीं है जो हमारी साइट पे रह जाए, वो सिंपल एक काम करता है कि यहाँ से मटेरियल उठा के वहां पे जाके रख देता है। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सिंपल डेफिनेशन दे रखी है कि इट इज बेसिकली ए कंपोजिट सप्लाई ऑफ बोथ सर्विसेज एंड गुड्स। तो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, ये हमारे जो हम बेसिकली आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं इनफॉर्मली, तो वो है ओबी रिमूवल कोल ट्रांसपोर्टेशन के। तो उसमें है नो सप्लाई ऑफ गुड्स इज डन, ओनली द सर्विस ऑफ एक्सकेवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसलिए ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। तो इसलिए जो आज का सेशन है, चूंकि इन्हीं दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे कंसंट्रेटेड है, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्री अवार्ड स्टेज पे आते हैं हम लोग पहले। अब जो प्री अवार्ड स्टेज है, जनरली हम लोग ये मानते हैं कि भाई जो एस्टिमेट अप्रूवल है और वो आपका कि उसके बाद हम टेंडरिंग करते हैं तब वो होता है, जबकि टेंडरिंग का जो पूरा बेस है वो आपका एस्टिमेशन पे ही टिका हुआ है। तो प्री अवार्ड स्टेज उतना ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टेंडर के लिए जितना उसका पोस्ट अवार्ड स्टेज है। तो आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ टेंडरिंग होते हैं वो तो एक इम्पार्शियल होना चाहिए प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। तो आपको एस्टिमेट इस तरह की रेट्स का ऐसा बनाना है कि ऐसा ना हो कि हम लोग कुछ बहुत हाई वैल्यू बना दें कि सिलेक्टेड बिडर्स ही क्वालिफाई कर पाए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि एक लॉजिकल बेसिस होना चाहिए एस्टिमेट का, कि साहब हमने इस तरह से रेट लिया है, इस तरह का ये लिया है, जस्ट कुछ हैपासर्ट नहीं लिया है किसी कहने पे कि जस्ट एक कोटेशन के बेसिस पे हाई वैल्यू टेंडर कर दिया, नहीं। दूसरा है कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। आप इस तरह का कोई टेंडर नहीं कर सकते कि तो बहुत कम उसका कंपटीशन हो जाए जो है। तो इसलिए आपको उस हिसाब से रखना है कि मैटर कॉम्पिटिटिव भी रहे टेंडर जो है आपका। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इंस्ट्रक्शन दिए थे लास्ट ईयर कि ऑल टेंडर प्रोसेस टू बी इन लाइन विद कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट मैनुअल ऑफ द सीपीएससी। Tendering process is to be reviewed and tendering process procedure and CNP manual to be in sync with extant public procurement policies and CVC guidelines. इसको मैं अभी आपको क्यों दिखाया हूं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो पहला पॉइंट है, देखिए, ऑल टेंडर प्रोसेस टू बी इन लाइन विद कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट सीएनपी मैनुअल ऑफ द सीपीएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी स्टेप करना अपनी मैनुअल से हटके हमको नहीं जाना चाहिए। और अभी तो कोल इंडिया ने अगस्त में अपडेटेड मैनुअल्स भी डाल दिए वेबसाइट पे। तो आप कोई भी चीज किसी भी स्टेज पे, एस्टिमेशन से लेके मॉनिटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक भी स्टेज पे, वी शुड स्टिक टू द मैनुअल। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि विजिलेंस की जितनी गाइडलाइंस है वो सब ऑलरेडी मैनुअल में इनकॉर्पोरेटेड हैं। अनलेस एंड इट अपडेटेड होती है तो मैनुअल भी उस हिसाब से फिर अपडेट हो जाता है। देखिए, हम लोगों का इसमें क्या क्या एप्लीकेबल गाइडलाइंस और मैनुअल्स लगती हैं। ओबी रिमूवल में लगता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनुअल चैप्टर 6, और कोल ट्रांसपोर्टेशन में लगता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनुअल चैप्टर 3। ये दोनों तो मान लीजिए, इन दोनों मैनुअल्स में क्या इसका पूरा प्रोसेस एक स्टैंडर्ड एनआईटी बनी हुई है, इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स भी है, प्लस जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से। जैसे चैप्टर 6 में क्या है ना, आपके बहुत तरह के वर्क्स हैं। जैसे सिर्फ ओबी रिमूवल का है, कुछ जगह ओबी रिमूवल प्लस कोल एक्सट्रैक्शन दोनों कंबाइंड जॉब होता है, उसका भी उसमें पूरे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे हैं। सी कोल ट्रांसपोर्टेशन में कोल ट्रांसपोर्टेशन का है। अब ये जो ई प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस और वर्क्स एंड सर्विसेज हैं, ये बेसिकली हम लोग का जो ई टेंडरिंग वाला पोर्शन है उससे डील करता है। तो ये दोनों के लिए ही ऑलमोस्ट कॉमन रहता है कि किस तरह से हमका टेंडर क्रिएशन में किसका क्या रोल है, पब्लिशिंग में किसका क्या रोल है, कब आप टेंडर का एनआईटी का ऑर्गोंडम दे सकते हैं पोर्टल पे, कितना दिन का देना है, ये सारी चीजें इस ई प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस में वो है। आपका इवेल्युएशन ऑफ बिड्स आपको कैसे करना है, ये सब चीज इसमें दे रखा है। इसके पॉइंट्स अभी जो कोल इंडिया ने लेटेस्ट अमेंडमेंट अपडेटेड किए हैं अगस्त 16 में, तो इसमें भी आ गए हैं काफी हद तक कॉमन पॉइंट्स। बट फिर भी हमको इसको भी पैरेलल लेके इसमें चलना है कि हम कोई भी टेंडरिंग पार्ट जब करेंगे तो ये और ये मिला के ही हमको देख के ही उसको आगे बढ़ना होगा। अब देखिए, प्री अवार्ड स्टेज पे आते हैं। एस्टिमेशन, देखिए, किसी भी एस्टिमेट को करने के लिए सबसे पहले हमको जॉब आइडेंटिफिकेशन करना है कि हमको कौन सा जॉब चाहिए। हमारे जो भी रिमूवल का चाहिए वो हो गया। फिर डिफाइनिंग स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड, अब हमको ये चाहिए कि इस इतना क्यूबिक मीटर हमको पर डे हटाना पड़ेगा या पर ईयर हटाना पड़ेगा, तब हमको इतना कोल मिलेगा, तो वो हमको करना है। फिर उस अराइविंग एट एस्टिमेटेड कॉस्ट, उस पे आने पे कितना हमारा एस्टिमेशन लगेगा वो हमको देखना है।
ये पार्ट हो गया जो टेक्निकल डिपार्टमेंट करेगा इनिशिएट, जनरली प्रोजेक्ट से होता है, जो प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डिपार्टमेंट है वो इस चीज को इनिशिएट करता है कि हमको नेक्स्ट ईयर प्लानिंग के हिसाब से जो एक्चुअली एनसीएल में इस चीज के लिए एक मेथोडोलॉजी बनी हुई है, वो भी जस्ट मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक ओबी रिमूवल के प्रपोजल में कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और उसको किस तरह से हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो सब कंप्लायंट है। तो उसके बाद अगला स्टेज होता है अप्रूवल का और तीसरा स्टेज होता है टेंडरिंग का। तो हम इन तीनों स्टेज को एक एक करके अभी डील करेंगे। इसपे एस्टिमेशन में अभी क्या है कि सब सब्सिडीज के लिए कोल इंडिया ने 2019 में सीडीज मीट में हुआ था कि सारी सब्सिडीज अपना एसओआर जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से बनवाएंगी। तो एक एक करके सब सब्सिडीज हमने एसओआर उससे बनवाया है। तो अभी हमें आते हैं ओबी रिमूवल का, मैं एनसीएल का एक मेथोडोलॉजी लूंगा, तो इसको आप एक आइडिया ले सकते हैं कि उस वर्क में क्या क्या वो होता है। जब कोल्ड ओबी रिमूवल का पहला मैनुअल जो आया था, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनुअल चैप्टर 6, वो कोल इंडिया लाई थी नवंबर 2014 में। उसमें उन्होंने कहा था कि हर सब्सिडरी अपना एक इन हाउस मैकेनिज्म डेवलप कर सकता है उसको वो करने के लिए कि आप अपने हिसाब से अपनी मेथोडोलॉजी बना सकते हैं। उस बेसिस पे एनसीएल ने एक कमिटी बनाई और यहाँ उन लोगों ने अपने अप्रूविंग अथॉरिटी से उसको अप्रूव करा के एक मेथोडोलॉजी बनाई प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट की। उसका एक बेसिक फ्लो चार्ट ये है। देखिए, जो सबसे पहला स्टेज है जॉब आइडेंटिफिकेशन का, प्रपोजल एक आपने आइडेंटिफाई किया। जनरली ये प्रपोजल दो कैटेगरी में आता है, एक होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड, एक होता है नॉन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड। लीजिए आपके प्रोजेक्ट की पीआर अप्रूव्ड है और पीआर में लिखा है कि आप इतना क्यूबिक मीटर ओबीआर थ्रू आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, तब वो प्रपोजल पीआर बेस्ड माना जाएगा। और अगर उसमें नहीं है पर आपका टारगेट, चूंकि टाइम के साथ हम लोग का टारगेट हर साल बढ़ता है और उस हिसाब से हो सकता है डिपार्टमेंटल कैपेसिटी एडिशन उतना ना हो पाए, तो फिर हमको आउटसोर्सिंग मोड में जाना पड़ता है। तो उस कैपेसिटी गैप को जब हम पूरा करते हैं तब वो आते हैं नॉन पीआर बेस्ड प्रपोजल्स में। तो सबसे पहले कि ये कितना क्वांटिटी हमको चाहिए कितने पीरियड के लिए टारगेट को पूरा करने के लिए, इसको प्रोजेक्ट अपना आइडेंटिफाई करके देता है, जिसको कॉर्पोरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट कह लीजिए हेडक्वार्टर्स का, और सीएमपीडीआई जो है कंसर्न, जैसे हमारे यहाँ का सीएमपीडीआई आरआई 6 आता है सिंगरौली में, एनसीएल में, ये लोग उसको वेटिंग करके देते हैं कि हाँ ये इतना क्वांटिटी जो है इतने पीरियड के लिए हमको चाहिए, ये ओके है। उसके बाद अगर नॉन पीआर बेस्ड है प्रपोजल, तो फिर हम लोग यहाँ पे एनसीएल बोर्ड से अप्रूवल लेते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्वांटिटी का, कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एस्टिमेट किया कि अगले 3 साल के लिए इस प्रोजेक्ट में हमको 100 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी रिमूवल थ्रू आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा, तब हमारे अगले 3 साल का टारगेट पूरे हो पाएंगे। तो इस क्वांटिटी का, जस्ट सिर्फ क्वांटिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हम लोग एनसीएल बोर्ड के पास जाते हैं, और जो वो सिर्फ नॉन पीआर बेस्ड प्रपोजल्स में। अगर पीआर बेस्ड प्रपोजल्स है तो हम आगे सीधे आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर जब एक बार आपका ओवरऑल क्वांटिटी आइडेंटिफाई हो गया, आपका सर पीरियड एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई है, हो गया। हेलो, सॉरी सर एक क्वेश्चन है, हाँ ये बोलिए। पीआर बेस्ड जो प्रपोजल है वो कितने इयर्स तक इम्प्लीमेंट होता है, देखिए, मतलब वो उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर है, ये जनरली प्लानिंग डिपार्टमेंट उसको हैंडल करता है, हम लोग के पास इतना वो आता नहीं है। पर जहां तक मेरा नॉलेज है कि मान लीजिए उन्होंने 10 ईयर्स के लिए इतने एमटीपीए का माइन का पीआर को अप्रूव कर रखा है, यस सर। तो वो उतने पीरियड के लिए उस हिसाब से उसमें देखा जाता है, उसमें उसका सब होता है, स्ट्रिपिंग रेशियो कितना रहेगा, किस साल क्या है, उस हिसाब से फिर क्वांटिटी लोग असेस करते हैं। ओके सर, जैसे मेरा है ना? ये कहना था सर कि जैसे जब माइन कोई ओपन होती है तो उसका तो इनिशियल 3-4 इयर्स तक तो पूरा पीआर को ही फॉलो करते हैं, उसके बाद हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर टारगेट हम लोग उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो पीआर वहीं लागू नहीं होता है। इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि पीआर बेस्ड जो प्रपोजल्स बनते हैं वो कितने साल तक के लिए होते हैं। देखिए, वो इस साल तक के होते हैं कि मान लीजिए कि हम वही जो अभी आपने खुद ही बोला ये चीज कि मान लीजिए हमने एसेस कर रखा है कि अगले 6 साल बाद हमारे पास इतना फ्लीट एडिशन हो जाएगा डिपार्टमेंटल, तो हमको इतना ही वो भी आउटसोर्सिंग से करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए वो चीज नहीं हो पाती है, मान लीजिए 3 साल तक तो हमारे पास डिपार्टमेंटल कैपेसिटी से हम अपना पूरा कर पाए, पर उसके बाद हमारा कोल का टारगेट तो बढ़ता जा रहा है, जी सर। पर हमारा डिपार्टमेंटल एडिशन उतना नहीं हुआ, तो उसमें इसीलिए फिर हम सेकंड कैटेगरी में जाते हैं ना, नॉन पीआर बेस, कि जब आपके उस पीआर में इतना ही आउटसोर्सिंग का था पर उतना आप ऑलरेडी कर चुके हो जी सर। और बाकी आप कर नहीं पा रहे हो, तो फिर आपको उसके लिए फिर सेकंड कैटेगरी कर रखी है जो है। अभी मतलब जैसे वो फॉर पूरा एग्जांपल कुछ रिक्वायरमेंट बेसिस प्रोजेक्ट्स पे का है। जैसे हम लोग का हुआ कि 20 एमटीपीए के लिए उनके पीआर रिपोर्ट अप्रूव थी, अभी 25 एमटीपी के लिए हो गई है, तो अभी उसमें आ गई आउटसोर्सिंग का ऑप्शन। तो ओके उनके सर। जब हम अभी टेंडर करने जाएंगे तो उसमें हमको पीआर बेसिस पे ही हम कर देंगे। और अभी मान लीजिए 5-7 साल बाद
क्योंकि जो हमारा टारगेट होता है वो जितना हमने एस्टिमेट किया होता है जनरली उससे ज्यादा ही बढ़ता है हाँ वो है सर। हर साल। तो हमारा उस हिसाब से फिर हो सकता है 3-4 साल बाद वो भी नॉन पीआर बेस में हमको प्रपोजल वहां भी बढ़ाना पड़े। ओके सर। तो इसको ये केस टू केस बेस पे हम कह सकते हैं, इसमें स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, है ना? समझ गया। तो फिर इसमें अच्छा ये पीपीटी सबको दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। हाँ इट इज विजिबल सर। ओके ओके। दिख रहा है सर। फिर इसके बाद क्या ना आईटी डिपार्टमेंट जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो उसको क्या ना प्रोजेक्ट एक वो दे देता है कि ये इतना एनुअल क्वांटिटी हमारा रहेगा, रिमूव होगा, इस वेटेड एवरेज लीड पे एक रिमूव होगा, प्लस इतने पीरियड के लिए रिमूव होगा। उस हिसाब से आईटी डिपार्टमेंट अपना सीएमपीडीआई नॉर्म्स के हिसाब से एक मैन पावर और इक्विपमेंट की स्टडी करता है। वो निकालता है कि साहब इसमें मिनिमम इतना एक्सकेवेटर पर डे लगेगा और उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम इतना टिपर लगेगा पर डे, और उसके करस्पॉन्डिंग डोजर हो गया, ग्रेडर हो गया, ड्रिल हो गई, ये सब एक वो निकालता है और इतनी मैन पावर लगेगी। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट अपना डिटेल पूरा एस्टिमेट बनाता है। उसके बाद ये हम लोग क्या एक टेक्निकल कमिटी बनी हुई है जिसमें जीएम प्रोडक्शन है, जीएम आई है, जीएम एनवायरमेंट है, जीएम आरएनआर, एक्चुअली जीएम एलएनआर होगा, और जीएम एसएनआर है, सेफ्टी एंड रेस्क्यू। उसके बाद जीएम एक्सकेवेशन है और एचओडी सर्वे है। तो इसमें देखिए हर एक डिपार्टमेंट का अपना रोल है। जैसे एचओडी सर्वे उसको एग्जामिन करते हैं कि उन्होंने जो लीड वाइज, लिफ्ट वाइज क्वांटिटी निकाली है, स्लैब वाइज क्वांटिटी निकाली है, क्या वो सही निकाला है। एक जो उसका अर्थमेटिक कैलकुलेशन पार्ट है, प्लस जो उसका टेक्निकल पार्ट है, क्या सब तो उन्होंने उस एस्टिमेशन में कुछ गलत किया हो। जीएम प्रोडक्शन उसको माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना हमारा ये था, इन्होंने यहाँ से ये एरिया लिया है, ये बेंच का लिया है, वो लिया है। आईडी डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपना टेक्निक वो कर चुका है इक्विपमेंट स्टडी, बट फिर भी इस कमिटी में वो अपना पॉइंट्स देता है कि हम क्या हायर साइज इक्विपमेंट का हो सकता है स्कोप, या भी क्या हमारे स्टेटस चल रहा है। फिर एलएनआर जो है उसके लैंड एक्विजिशन रिपोर्ट को लेकर अपना कमेंट करता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास अभी इतना लैंड है करस्पॉन्डिंग। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास पूरा लैंड एक साथ नहीं अवेलेबल होता है, पर चूंकि हमको ये पता होता है कि अभी ये इस स्टेज में है, अगले साल तक इतना मिल जाएगा, उसके अगले साल इतना मिल जाएगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं और इसी तरह का अप्रूवल फिर बोर्ड से भी ले लेते हैं कि जैसे जैसे हमको क्लियरेंस मिलेगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी एनवायरमेंट भी एनवायरमेंट क्लियरेंस के एंगल से, प्लस किस तरह का उसको मशीनरी लगानी है कि वाटर स्प्रिंकलर और ये सब प्रॉपर लगाए ताकि एनवायरमेंटल नॉर्म्स को जितना हो सके फॉलो हो पाए। सेफ्टी एंड रेस्क्यू अपने पॉइंट्स उसमें सजेस्ट करते हैं कि आप अगर जो भी लेटेस्ट उनका अपडेटेड डीजीएमएस से या माइन रूल से या जो भी लेटेस्ट सर्कुलर्स आते हैं उसको वो उसमें इंकॉर्पोरेट कराते हैं, उसको हम लोग करस्पॉन्डिंगली एनआईटी में भी फिर डालते हैं। तो ये पूरा एक वो एग्जामिन करने के बाद फाइनल प्रपोजल वो टेक्निकली उसको ये लोग वेट करते हैं कि हाँ ये प्रपोजल अब टेक्निकली योग्य है और उसमें ये हमारा सजेशन है, ये एडिशन है। उसके बाद ये लोग कॉर्पोरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट को दोबारा भेजते हैं। तो जनरली तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि शुरू के स्टेप में तो सीपी ने ऑलरेडी उसको वेट कर दिया है। इन केस अगर कोई स्टेटस अपडेट नहीं होता है तो सीपी उसको आगे बढ़ा देता है, कुछ होता है तो वो सबनी नोटिंग करके अपना रिमार्क देके उसमें कर देता है कि इस चीज को ध्यान रखा जाए कि ये इस कंडीशनल बेसिस पे किया जाए, क्योंकि कई बार कुछ कुछ प्रोफेशनल कंडीशनल होते हैं तो वो अब सीपी अपना उसमें रिकॉर्ड कर देता है। उसके बाद एक एस्टिमेट कमेटी है जिसमें जीएम सीएमसी, जीएम फाइनेंस और जीएम प्रोडक्शन है। तो अब तो चूंकि हमारे सारे एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी द्वारा जो एसओआर बनाया गया उसके बेसिस पे बनते हैं, तो ये एस्टिमेट कमेटी फिर अभी तक जितना प्रोसीजर फॉलो हुआ है उसको एक बार पूरा वेट कर देती है कि हाँ ये सब ड्यू प्रोसीजर से एस्टिमेट अभी तक आगे बढ़ा है। प्लस जो फाइनल रेट्स होते हैं लेटेस्ट डीजल रेट और एसपीसी वेजेस के हिसाब से वो उसको अपडेट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो आगे उसमें बढ़ते हैं। इसी चीज को देखिए मैंने अभी आगे इन सब स्लाइड्स में दिखाया है कि जो टाइप्स ऑफ प्रपोजल आपको बताया कि एक पीआर बेस्ड, एक नॉन पीआर बेस्ड। तो पीआर बेस्ड तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और नॉन पीआर बेस्ड में जो भी बैकलॉग हो गया, कैपेसिटी गैप है। लेकिन कोई भी प्रपोजल हम लोग इस तरह का इनिशिएट नहीं करते कि हमारा डिपार्टमेंटल मशीन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है इसलिए हम इनिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग लास्ट ईयर कोल इंडिया ने एक अमेंडमेंट निकाला था, एक नया क्लॉज ऐड किया था मैनुअल में, स्पेशल पर्पस लिमिटेड टेंडर। एक तरह के वो भी प्रपोजल होते हैं, वो जनरली होते हैं कि जब कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर फेल कर रहा है, आपका कंसेक्यूटिव 6 मंथ्स में उसका 50% से कम प्रोडक्शन है, मतलब टारगेट अचीवमेंट है, तो आप उसको जितना उसका क्वांटिटी बचा है उसको आप स्पेशल पर्पस लिमिटेड टेंडर में जा सकते हैं। लेकिन उस पे 2-3 राइडर्स हैं। पहला राइडर ये है कि उसकी टोटल वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कि वो 6 महीने से ऊपर का प्रपोजल नहीं होना चाहिए।
इसका जो बेसिक पर्पस है कि मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट आपको करना पड़ रहा है, तो आप रीटेंडरिंग करेंगे तो इट विल टेक टाइम, कई बार 2 से 3 महीना 4 महीना भी लग जाता है नए कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड करते उसको काम शुरू करते करते। तो स्पेशल पर्पस लिमिटेड टेंडर में क्या है कि लास्ट 3 इयर्स में आपके जिन जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने काम अवार्ड किया था, आप उनसे एक 50 करोड़ तक का एक प्रपोजल बनाते हैं और उनसे आप रेट्स मंगवाते हैं, और वो जब ये विद इन ए वीक, आप 1 वीक का उनको टाइम देते हैं, वो आपको रेट्स देते हैं और विद इन नेक्स्ट वीक आप उसको काम को अवार्ड करके 3-4 दिन में उसको 5 दिन के अंदर अंदर दे देते हैं और वो अपना जल्द से जल्द उसको मशीन को शुरू कर देता है। तो इस क्लॉज को जब इन्वोक करते हैं तो विद इन ए मंथ हम उस काम में एटलीस्ट 50 करोड़ तक का काम कुछ दिनों तक करा सकते हैं, 6 महीने तक, जब तक कि नया टेंडर आपका फाइनल होने का फिर स्थिति में आ जाएगा, तो आप फिर उसे नए टेंडर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी एक तरह का एक नया प्रपोजल हो गया है, ऑल्दो हम लोगों ने अभी तक उसको इन्वोक किया नहीं है, बट ये है एक प्रोविजन में। प्लस इसका एक और कंडीशन भी कि अगर मान लीजिए आपने किसी को नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया और वो उस काम नहीं शुरू कर पाया या आपको टेंडर कैंसिल करना पड़ गया ड्यू टू हाई रेट के कारण, तो फिर आपको रीटेंडर में टाइम लगेगा, तो उस केस में भी आप इस क्लॉज को इन्वोक कर सकते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी है इसमें। सर, हाँ बोलिए। in finalization of such type of tender, what is the up to what value more than estimated value you consider for award of the work? देखिए इसमें क्या है कि मैं एक्चुअली अभी आऊंगा इसमें रीजनेबलनेस पे, है ना, टेंडर में, तो एक बार अपन तब आपके उस डाउट को डिस्कस करें तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। अभी आगे, है ना, टेंडरिंग में जब आएंगे ना तो उस दौरान रीजनेबलनेस पे फिर भी आप पूछे तो मैं बता देता हूँ कि देखिए अपर लिमिट कुछ नहीं है। Yes, जैसे sir. जो सिविल इंजीनियरिंग मैनुअल है उसमें दे रखा है कि जस्टिफाइड प्लस 10%, और Yes, आपका sir. जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनुअल है, चाहे आपका ये चैप्टर 2 है टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स का, या चैप्टर 3 है कोल ट्रांसपोर्टेशन का, चैप्टर 6 है ओबी रिमूवल का, इसमें कहीं नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें कहीं नहीं डिफाइन है सर। हाँ, इसमें कहीं भी डिफाइन नहीं है। आपको जब याद होगा जब रिवर्स ऑक्शन में हम लोग थे तो वहां लिखा रहता था कि एस्टिमेटेड प्लस 10% की उन्होंने लिमिट कर रखी थी कि अगर इसके अंडर नहीं आया तो हम लोग कैंसिल कर देते थे। हाँ हाँ हाँ। तो वहां एक लिमिट थी, पर वो भी लास्ट ईयर से हट गई जब से रिवर्स ऑक्शन हटा है। यस सर। तो अभी कोई अपर लिमिट नहीं है अभी। हाँ, रीजनेबलनेस के लिए आपके मैनुअल में प्रोविजन है कि आप रिकमेंडेड रेट को आपको रीजनेबल डिक्लेयर करना, उस रीजनेबलनेस को चेक करने के लिए जो प्रोविजन है उस हिसाब से आपको देखना है। तो उसमें से 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब वी हैव अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस 7.5%, माइनस 20% भी हम कर रहे हैं। तो कोई इसमें अपर लिमिट नहीं है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि रेट रीजनेबल है। There is lot of subjectivity over it कि what to go for and what not to go for. हाँ, सब्जेक्टिविटी है, पर एक जनरल नॉर्म लेके जो मेरा एक्सपीरियंस है कि टीसी एक चलती है कि ठीक है 10% तक, 10% से ऊपर में जाने में लोग बजटते हैं कि 10% से ऊपर हम लोग नहीं देते हैं, बट ये कहीं रिटर्न वो नहीं है कि आप 10 बियॉन्ड 10% नहीं दे सकते। नो वेयर इट इज रिटन। Yes sir, कहीं नहीं रिटर्न। हाँ, इवन इफ यू अवार्ड ए कॉन्ट्रैक्ट 11% अबव, देन आल्सो नोबडी कैन से कि आपने क्यों अवार्ड किया, बिकॉज देयर इज नो अपर लिमिट इन द कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, लेकिन उसमें फिर कुछ चीजें होती हैं कि जैसे आप रिसेंट अवार्डेड रेट से कंपेयर करते हैं। जैसे अभी मैं टेंडरिंग वाले पोर्शन में आऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा, उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप अपने एस्टिमेशन से कंपेयर कीजिए, अपने रिसेंट अवार्डेड से कंपेयर कीजिए, मार्केट एनालिसिस रेट से कंपेयर कीजिए। तो वो सब जब आप करेंगे, अगर आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं तब कर सकते हैं, नहीं तो देयर इज ऑलवेज स्कोप टू गो फॉर रीटेंडर। देखिए, अगर रेट आपको रीजनेबल नहीं लग रहा है, इफ यू कैन नॉट क्लेम कि रेट इज रीजनेबल, देन वन शुड ऑलवेज गो फॉर रिटेंडर। रेट रीजनेबलनेस एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तभी आप रिकमेंड कर सकते हैं उसको। ठीक है ना, चलिए अभी आएंगे हम लोग उस रीजनेबलनेस वाले क्लॉज पे भी। ये देखिए, ये वही सब है जो अभी हम लोग डिस्कस किया था कि ड्राफ्ट स्कीम प्रोजेक्ट बनाता है, जस्टिफिकेशन देता है अपना कि हमारी रिक्वायरमेंट है, वेटिंग करता है सीपी सीएमपीडीआई, और एनसीएल बोर्ड का इन प्रिंसिपल अप्रूवल नॉन पीआर बेस के लिए होता है। फिर मैन पावर और इक्विपमेंट कैलकुलेशन आईडी करता है। फिर जिसका ऑथेंटिकेशन है टेक्निकल पैरामीटर्स का प्रोजेक्ट करता है कि लीड वाइज, स्लैब वाइज, ईयर वाइज, रूट प्लान, डिटेल ड्राइंग प्लान, बोरहोल डाटा, डंपिंग लोकेशंस, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। फिर वही टेक्निकल कमिटी है, सब लोग अपने अपने एंगल से उसको प्रपोजल को देखते हैं, अपनी नोटिंग उसमें देते हैं, फाइनली प्रपोजल जस्टिफाई है करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रपोजल सीपी में जाता है, फिर यहाँ एस्टिमेट कमिटी के पास आया,
और फिर फाइनली हम लोग एस्टिमेट में उसको करके दे देंगे। ये हो गया ओबी रिमूवल का हम लोग का जो होता है। कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग का इतना इलाबोरेटिव प्रोसेस नहीं है, उसमें रिक्वायर्ड टीपीडी क्वांटिटी प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करता है और कहाँ से स्टॉक से उसको कहाँ तक लेके जाना है क्या है, उस हिसाब से लीड डिस्टेंस मेजर करता है प्रोजेक्ट और आईडी डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव, और उसके बाद वो लोग एनपीसी प्रिपेयर्ड एसआर के बेसिस पे एसआर बनाते हैं, फाइनेंशियल कंकरेंस होता है। इन सब के बाद जो आपका फिर कोई भी एस्टिमेटेड कंकरेंस में तो जाता ही है, उसके बाद अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाता है। ये देखिए अभी जो लेटेस्ट सीआईएल की जो भी डीओपी चल रही है एस्टिमेट अप्रूवल में, तो ये सारे चूंकि सर्विसेज में आते हैं और रेवेन्यू आइटम्स में आते हैं, कोई भी कैपिटल वर्क नहीं है, तो इसमें 15 करोड़ तक की पावर दे रखा है एस्टिमेट अप्रूवल में डायरेक्टर्स को, और सीएमडी सर को पूरा फुल पावर से कोई भी रेवेन्यू एस्टिमेट हो या कैपिटल एस्टिमेट हो, कोई भी एस्टिमेट हो, CMD of the subsidiary is fully competent to approve those estimates। तो हम लोग अगर 15 करोड़ से ऊपर का एस्टिमेट होता है तो फिर CMD एनसीएल के पास भेजते हैं उसको अप्रूवल के लिए। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि जनरली अभी मैं आपको एक छोटा सा जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग का एक पायलट स्टडी हुआ था सीएजी वालों का, जो इसमें पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब शुड बी नीड बेस्ड ओनली एंड नीड शुड बी प्रॉपर्ली जस्टिफाइड एंड करेक्टली असेस्ड। तो अभी इन लोगों ने, अब तक ये लोग जनरली हम लोग का ट्रांजैक्शन ऑडिट करते थे सीएजी वाले, अभी इस बार ये लोग आए थे हम लोग का परफॉर्मेंस ऑडिट करने। उस पे इन लोगों ने करीब 2-3 हफ्ते लोग रुके, इन लोगों ने स्टडी किया, फाइल्स ली। इस बार इनका पूरा कंसंट्रेशन था हम लोग के एस्टिमेशन पे, और एस्टिमेशन में भी मोर ऑन द प्लानिंग पार्ट कि आपने क्वांटिटी कैसे आइडेंटिफाई की, कैसे आपको ये जॉब लगा। तो ये सब चीजें भी स्क्रूटनी में रहती है हमेशा। जनरली हम लोग सोचते हैं कि ठीक है हमने टेंडर कर दिया, वही सेंसिटिव पार्ट है, पर अभी इस ऑडिट के बाद हम लोगों ने फील किया कि ये प्लानिंग पार्ट को भी जो है वो लोग अपना उसमें लेता है परव्यू में। ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ आपसे मिस्टेक हो गई हो या आपने ओवर प्लान कर ली हो कोई चीज, क्या हो सकता है आपको इतने कॉन्ट्रेक्चुअल की जरूरत ही ना पड़ती हो, आप डिपार्टमेंटली कर पाते या आपने नहीं ढंग से असेस किया। ये सब चीज वो लोग बहुत थॉरोली इस बार चेक किया है। तो हम लोग को भी मतलब जो भी कोई एस्टिमेट बना है, नॉट जस्ट सीएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी एस्टिमेट बनाए, आपका नेसेसिटी बहुत प्रॉपर्ली जस्टिफाइड होनी चाहिए, एंड अलोंग विद जो बाकी अपना अर्थमेटिक क्लरिकल जो कैलकुलेशन है और ये सब है, ये तो ऑब्वियस तो सही होना ही चाहिए मतलब, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जस्टिफिकेशन और नेसेसिटी बहुत थॉरो होनी चाहिए। दूसरा है कि रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन शुड बी जेनरिक एंड अप्रूव्ड स्टैंडर्ड। ये हम लोग का थोड़ा कम ही इसका वो रहता है, क्योंकि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा स्पेसिफिक है कि भाई ये तो हमको इस लैंड से चाहिए, इस एरिया से चाहिए, पर ये जनरल आप बाकी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में कर सकते हैं जो किसी और तरह का अगर हो तो। एस्टिमेटेड रेट शुड बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। तो हम लोग चूंकि पहले क्या होता था कि लास्ट अवॉर्डेड एस्टिमेटेड रेट्स पे बनते थे टेंडर्स, कि लास्ट 3 अवॉर्डेड का ले लिया, उस हिसाब से उसका एवरेज निकाल के अपडेट किया। अब तो चूंकि एसओआर पे बेस है तो काफी हद तक वो एक पार्ट जो है वो स्टैटिक हो गया है कि अगर ये हमने टेक्निकली असेस किया कि इतना लीड इतना क्वांटिटी है तो यही रेट आएगा हमारा एस्टिमेशन का मतलब। पर फिर भी उसको भी एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए कि हमने प्रॉपर्ली उसको करंट डीजल प्राइस अपडेट किया नहीं किया, करंट वेजेस से अपडेट किया नहीं किया, और फिर बजट प्रोविजन हमको देख लेना। ऐसा ना हो कि हम अप्रूवल लेने सीधे टेंडर कर दें और हमारे पास बजट ही ना हो उस चीज के लिए, तो बाद में पेमेंट में दिक्कत आएगी। फिर ये आपका एस्टिमेशन का प्रोसेस हो गया कि इसमें हमको क्या क्वेश्चंस रखने हैं, प्लस अपना मैनुअल को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, डीओपी को प्रॉपर्ली चेक करना है कि जिसकी डीओपी में है वो चीज करेगा, और उसके बाद एस्टिमेट अप्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एनआईटी का। देखिए अभी क्या है कि जो जितनी भी अपडेटेड मैनुअल्स हैं उन सब में स्टैंडर्ड एनआईटी फॉर्मेट अवेलेबल है, कि उन्होंने कि दे रखा है कि मिनिमम आपको इतना तो कैटेगरी रखनी ही रखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, आपके प्रोविजंस हो गए, क्लॉजेस हो गए, और इन केस आपको लगता है कि उससे कुछ डेविएशन आप कर सकते हैं, कुछ माइनर डेविएशन आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें कंसर्न डायरेक्टर से आप अप्रूवल करा के वो चीज की जा सकती है। तो जनरली देखिए एक और चीज है कि हम लोग ओबी का या कोल का जो भी एस्टिमेट अप्रूव कराते हैं तो उसमें एक मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट का भी एक टेबल रहती है कि इतना उसको मिनिमम पर डे एक्सकेवेटर लगाना है, मिनिमम पर डे इतना टिप्पर लगाना है, ये सब है। उस सब का भी हम अप्रूवल लेते हैं और वो चीज एनआईटी में भी डाली जाती है। अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन बाय कोल इंडिया, 2-3 चीजें जो वर्क स्पेसिफिक रहती हैं। पहला है ये जो मैंने आपको बताया इक्विपमेंट वाला आपका, कि इतना इक्विपमेंट लगेगा पर डे, उसको एफिडेविट देना होता है, प्लस हमको उसको एनआईटी में नॉलेज में लाना होता है। दूसरा रहता है कि आपका स्कोप ऑफ वर्क,
आपको पूरा टेक्निकल स्कोप ऑफ वर्क उसको देना पड़ता है कि आपको इस आरएल से इस आरएल तक आपको लेके जाना है, क्वांटिटी यहाँ से यहाँ निकालना है, इस लीड पे लेके जाना है। तो जितना आप उसको टेक्निकली एग्जॉस्टिव रख सके उतना बेटर है, ताकि एग्जीक्यूशन के दौरान फिर दिक्कत नहीं आती है। देखिए आपकी एनआईटी जितनी क्लियर और अनएम्बिगुअस रहेगी उतना आपका लिटिगेशन और डिस्प्यूट कम होगा। जनरली बाद में एग्जीक्यूशन के दौरान देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर से हम कोई चीज कहते हैं तो वो यही कहता साहब ये कहाँ लिखा है, और हम लोग कहते हैं कि नहीं ये लिखा है ना, इसका यही मीनिंग है। तो ये इम्प्लाइड मीनिंग जितना कम से कम हो, जितनी थॉरोली क्लियर चीजें हो कि नहीं यहाँ से यहाँ तक निकालना है, इस लीड पे आपको निकालना है, इतने टाइम में निकालना है, जो भी है वो सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर उसमें रहनी चाहिए, स्पेशली टेक्निकल पार्ट पे जो है जितना। तो ये सब चीज हमको इंश्योर कर लेनी है एनआईटी अप्रूवल से पहले। और फिर जब डीटी साहब का अप्रूवल हो जाता है उसको हम लोग अपना पोर्टल पे पब्लिश कर देते हैं। अभी तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की हमको जरूरत नहीं तो पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट में देते थे। अभी तो कॉमन एडवर्टीजमेंट जाता है सब सब्सिडीज का उसमें न्यूज़पेपर्स में, तो अब हमको अलग से न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट पोर्टल पे इसको पब्लिश कर देते हैं। तो देखिए टेंडरिंग के दौरान जो हम लोग मिस्टेक करते हैं कुछ कुछ केसेस में, जैसे सिमिलर नेचर ऑफ वर्क देखिए बहुत क्लियर डिफाइन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने डिफाइन कर दिया है और या एंड, इन्हीं सबको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो कॉमा में था, बिडर कहता है कि नहीं साहब हमने तो ये किया है, इसका तो यही मीनिंग होता है। तो वो सब चीज देख लेना है कि बहुत क्लियरली डिफाइन है और उसका हमारी अंडरस्टैंडिंग उसमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अभी तो क्या मैनुअल में क्लियर कट दे रखा है कि अगर आपको ओबी रिमूवल का वर्क है तो आपको क्या लेना है, कोल ट्रांसपोर्टेशन का है तो क्या लेना है। दूसरा हमारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, जैसे मान लीजिए एक होता है वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद एक होता है वर्किंग कैपिटल कि टेंडर ओपनिंग से 3 मंथ्स पहले तक की किसी भी डेट में सीए द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए कि इस डेट को इन बिडर का इसकी एनुअलाइज वैल्यू का 20% इनका वर्किंग कैपिटल है। इसमें अभी क्या हो गया है कि वर्क ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जॉइंट वेंचर को लेकर अभी काफी अमेंडमेंट आए हैं। तो जिसमें अभी 2-3 चीजें कोल इंडिया ने की हैं। एक तो ये किया है कि लीड पार्टनर का जो है शेयर होना चाहिए कम से कम 50% किसी भी जॉइंट वेंचर में। जनरली जब ये चीज नहीं थी तो पहले ये होता था कि कोई भी बिडर अपना लीड पार्टनर बन जाता था, शेयर उसका कम रहता था, या वो अपना एक्सपीरियंस दे देता था और दूसरा जिसके पास नहीं है एक्सपीरियंस या नहीं क्रेडिबिलिटी है वो काम ले लेता था। अभी ऐसा नहीं, मिनिमम शेयर लीड पार्टनर का 50% होना है और बाकी पार्टनर का कम से कम 20% होना है। 20%। जस्ट 1-2% होने से नहीं चलेगा। और वर्किंग कैपिटल में अगर मान लीजिए हमको 10 करोड़ वर्किंग कैपिटल चाहिए तो उस 10 करोड़ वर्किंग कैपिटल की कम से कम 50% वर्किंग कैपिटल लीड पार्टनर की होनी चाहिए और बाकी पार्टनर की कम से कम 25% होनी चाहिए। यस दोनों की टोटल जोड़ के हमारे एलिजिबिलिटी से ज्यादा हो कोई इशू नहीं है, पर इंडिविजुअली भी उनको ये चीज को फुलफिल करनी है। पहले ये चीज नहीं थी, पहले किसी एक से भी होता था, बाकी का 0 भी है तो चल जाएगा। एक्चुअली ये चेंज क्यों आया है उसका, एक्चुअली हम लोग का एक केस हुआ था कि एक बिडर ने जिसका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव कह सकते हैं कि उसका डेब्ट में था वो बिडर, उसने जेवी बनाई, अपना ले लिया 98% शेयर जेवी में लीड पार्टनर का, 1-1% शेयर बाकी दो बिडर को दो अपने पार्टनर को दे दिया और उनका वर्किंग कैपिटल लगा दिया। एज पर एनआईटी हमको उसके उसके पार्टनर्स के वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे हमको उसको ओके करना पड़ा। सब में तो लिखा है एस ऑफ वास्ट मीडियम को बिल्कुल कथरावासी। तो इसलिए ये चीज जो है अभी कोल इंडिया ने अच्छा कर दिया है कि सबको पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, कोई भी बिडर या उसका पार्टनर जो है वो 0 वर्किंग कैपिटल या नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में नहीं रहेगा। सर ये टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है? नहीं अभी ओबी रिमूवल कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हो गया ये चीज। तो मतलब स्पेसिफिक कोई मैनुअल के थ्रू हुआ है या फिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र करके एचईएमएम आउटसोर्सिंग ओबी रिमूवल नहीं ऐसे? तो मैनुअल में देखिए जो मैनुअल आता है तो उसमें लिखा रहता है ना कि जैसे ये अमेंडमेंट आपका सीएमएम चैप्टर 6 के लिए है, सीएमएम चैप्टर 3 के जी लिए, जी जी सर, एमसीडब्ल्यू जी के लिए, सर। है ना, तो उसमें वो अमेंडमेंट आया है। ठीक है सर। अभी आप लोग जो अगस्त वाली अपडेटेड मैनुअल एक बार उसमें देखेंगे तो उसमें काफी हद तक इनकॉर्पोरेट कर दिया सारे अमेंडमेंट्स को, और उसके बाद भी कुछ कुछ आए हैं बट वो बहुत ही एरिया स्पेसिफिक अमेंडमेंट आए हैं, जैसे डीजल एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, इन सबके पेमेंट को लेके। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है उसके बाद से। फिर आपको देखना है कि टेंडर में
पोर्टल पे टेंडर क्रिएट करते टाइम मिस्टेक ना हो। कई बार हम लोग कुछ ऑप्शन गलत ले लेते हैं या कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते। जैसे एक केस मैंने देखा था, उन्होंने ऑटो इवैल्यूएशन सेलेक्ट नहीं किया था, तो ये वर्क एक्सपीरियंस और वर्किंग कैपिटल ऑटो इवैल्यूएशन वो नहीं उसमें दिखा रहा था, या कुछ डेट हमने गलत सेलेक्ट कर ली या कुछ इस तरह से। तो ये एक जो क्रिएट करते टाइम हमको बहुत थॉरोली उसको चेक करना है और एक एक स्टेप को मतलब एक मतलब सजेस्ट यही करूंगा कि अगर जैसे आप लोग जो नया अगर कोई कर रहा हो तो किसी भी एक अच्छे पब्लिश टेंडर की जो कंक्लूड हो गया उसका पोर्टल की एक एनआईटी का प्रिंट आउट अपने पास हमेशा रखें चेकलिस्ट की तरह, और हर एक स्टेप पे एक बार क्रॉस चेक कर लें कि ये आपने इसमें देखा ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब चीज हमको देखना है। टेंडर शेड्यूल का हमको देखना है कि अगर 50 लाख से ऊपर के टेंडर को 15 दिन का रखना है 15x24 आवर्स का, तो वो मीट होना चाहिए। एक मैं केस देखा था जिसमें एक्चुअली 15 दिन वैसे दिख रहा था डेट वाइज, बट शाम 5 से सुबह 11 कर दिया तो 15x24 मीट नहीं हो रहा था उसमें। सर वो तो क्राइटेरिया मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम तो हम ज्यादा भी ले सकते हैं। मैक्सिमम तो हम 30 भी ले सकते हैं, उसमें कोई आपको नहीं रोकेगा। हाँ, मिनिमम बट इतना टाइम अगर मैनेजमेंट दे दे तो है। यस सर। तो वो तो यही ना बोलते मिनिमम कितना ये बताओ। हाँ। 15 तो ठीक है दे दो 15, तो हम किसी तरह से लड़ झगड़ के बोलते हैं कि साहब 2 तो संडे ही पड़ जाएंगे, कम से कम 17-18 दिन तो देने दीजिए, 2 संडे हटा के 15 वर्किंग डेज तो रखें किसी को। तब ऑन एन एवरेज हम लोग ऐसे 16 से 18 दिन देते हैं जस्ट वही संडे वाले पोर्शन के लिए। ऑल्दो मिनिमम है उसको हम लोग 20 पहले 21 दिन देते थे। पहले एक्चुअली मैनुअल में 21 डेज लिखा था। यस सर, सिविल मैनुअल में अभी भी लिखा नहीं, इसमें भी था, ओबी रिमूवल में भी 21 डेज का था। तो हम लोग 21 रखते थे, लेकिन अब तो चूंकि प्रोकॉन गाइडलाइंस में 15 आ गया, तभी हम लोग उसको 15 पे ही मतलब मिनिमम मान के चलते हैं, देते हैं 17-18 दिन, 20 दिन भी दे देते हैं कभी कभी, अगर मान लो कोई हॉलीडे पड़ रही हो तो। यस सर सर। ग्लोबल टेंडर के लिए तो अभी भी ये 29 30 डेज 30 डेज ग्लोबल टेंडर 30 डेज। और सर ये प्री बिड मीटिंग के बाद है ना, प्री बिड मिनट्स अपलोड करने के बाद 30 डेज ऑफ बिडिंग, 30 डेज हाँ ऑफ हाँ बिड देखिए, ये तो सबमिशन प्री पीरियड बिड है, मीटिंग के बाद submission period 15 डेज है ना सर? है। ठीक। हाँ देखिए, प्री बिड में जनरली हम लोग उसमें करते नहीं है, पर प्री बिड का जो आपका ई प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने टेंडर पब्लिश किया, उसके बाद आप एक प्री बिड मीटिंग रखेंगे। अब प्री उसके बिड 15 मीटिंग दिन कितने दिन बाद रखी ये भी कहीं नहीं लिखा है। सर प्री बीट के बाद हमको टेंडर के डेट्स भी बीट के बाद बढ़ाने तो हैं। लिखा हुआ है सर, 15 दिन बाद करना 15 है। दिन नहीं नहीं नहीं, 15 दिन बाद नहीं, 15 दिन का सबमिशन पीरियड रखना है, और मतलब प्री बिड के हाँ, बाद डेट नहीं बढ़ानी है। प्री बिड में अगर जब- कोई ऐसा पॉइंट आता है जिससे आपको एनआईटी में अमेंडमेंट करना पड़ जी। रहा है, हाँ, अमेंडमेंट के बाद सर। तब आपको वो एफडी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब इन दैट केस आपको 15 डेज बढ़ाना है। यस जी सर, सर, रिस्पेक्टिव एफडी से लेना होगा। एटलीस्ट 15 डेज तो उसको मिलना चाहिए सबमिशन के लिए सर। हाँ, उसको 15 डेज सबमिशन पीरियड मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने आज एनआईटी पब्लिश की, आज क्या है मंडे है ना, मंडे को आपने एनआईटी पब्लिश की, आपने अगले हफ्ते अगले मंडे को रखी प्री बिड मीटिंग, तो आपका सबमिशन पीरियड अब शुरू होगा नेक्स्ट डे ऑफ प्री बिड मीटिंग, यानी ट्यूसडे से। उस ट्यूसडे से आपको 15 दिन पीरियड उसको कम से कम देना पड़ेगा। जी सर। सर उसमें प्री ऐसे बिड मीटिंग दूसरे दिन तीसरे दिन भी तो रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी है कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप 3 दिन बाद भी रख सकते हैं जो है। लेकिन देखिए अब जनरली प्री हम बिड लोग मीटिंग का एक मिनट्स ये अपलोड करने के बाद ही टेंडर सबमिशन स्टार्टेड होना चाहिए हाँ, ना। प्री बिड मीटिंग होने के बाद ही टेंडर सबमिशन शुरू होगा। पर देखिए एक दिन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। रीजन बीइंग कि आपने भाई टेंडर पब्लिश किया, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कोई आएगा साइट देखेगा तब से आपसे प्री बिड में क्वेरी करेगा। आप जी वरना सर, तो इसीलिए ऑनलाइन हम लोग क्लासिफिकेशन तो जनरली वैसे भी ले 4 to सकता 5 है। डेज देते हैं, उसके बाद फिर बिड सबमिशन रखते हैं। हाँ, 4 to 5 डेज देने के बाद आप एक बिड सबमिशन उसके बाद ही होगा। प्री बिड के नेक्स्ट डे से ही आपको बिड सबमिशन शुरू करना है, एंड दैट शुड गो फॉर मिनिमम 15 डेज। प्री बिड के अगर किसी क्वेरी के कारण आपको कोई अमेंडमेंट करना पड़ रहा है, तब आपको एफडी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उस केस में फिर वो आपको कोरिगेंडम निकाल के उसको डेट एक्सटेंशन देना होगा। अच्छा, इसका डेट एक्सटेंशन का भी देखिए बहुत क्लियर है कि मिनिमम डेट एक्सटेंशन आपको 10 डेज का देना है, इनकेस अगर आप कोरिगेंडम निकालते हैं तो। ये एक्चुअली 2015 का एक सीवीओ सीआईएल का सर्कुलर है कोरिगेंडम को लेके, वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि जब भी कोरिगेंडम निकालते हैं उसमें। सर वो सर्कुलर साइट्स पे हाफ ही है, अगर उसका फुल कॉपी आपके पास हो तो शेयर कर दीजिए। अच्छा, मेरे पास है फुल कॉपी, आप मैं मोहित को मेल कर दूंगा, वो आप लोग को मेल कर देगा। ठीक है सर, क्योंकि साइट पे जो अवेलेबल है वो वन साइड ऑफ द एक ही पेज है, पीछे वाला एक्चुअली क्या ना, उसमें तो वन साइड है, उसमें पीछे वाला जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, अगर वही आपको नहीं मिल रहा कोरिगेंडम है। निकालना डेट एक्सटेंशन देना है तो कम से कम 10 दिन का रीजनेबल टाइम दीजिए।
हाँ वो सेकंड पेज है ही नहीं साइड पे, हम्म। मैं देखा था सर। हाँ तो मैं मोहित को मेल कर दूंगा, ऐसे तो वो ऐसे आपको ये ई प्रोक्योरमेंट मैनुअल फॉर वर्क्स एंड सर्विसेज में भी लिखा हुआ है 10 days ऑफ हाँ मिनिमम उसमें भी वो चीज आ गई है कि मिनिमम 10 उसमें भी डेज वो का चीज आपको लिखा देना हुआ है है। ना। तो ये तो कोरिगोंडम वाला खैर पॉइंट हो गया। तो ये सब हमको चूंकि इस तरह से हम लोग देखिए, इसलिए एनआईटी बहुत थॉरो प्रिपेयर करें और कोई एरर ना रखे तो कोरिगोंडम की नौबत ही ना आए। तो खैर तो पर लेकिन हो ही जाता है। प्लस कई बार क्या होता है कि फेस्टिव सीजन होता है एनआईटी का, कई बिल्डर्स की रिक्वेस्ट आती है कि साहब एक हफ्ता डेट एक्सटेंड कर लीजिए। जैसे हम लोग लास्ट ईयर कोविड से बहुत ज्यादा इसको झेले हैं, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स की उसमें भी झेले कि बहुत रिक्वेस्ट आती थी सबकी कि लॉकडाउन है, ये है वो है। तो हम लोग किए हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन भी दिए टेंडर्स में, 30-30 दिन का एक्सटेंशन भी दिए हैं जो कि मैक्सिमम है। तो वो देना पड़ता है आपको उस समय सिचुएशन को देखते हुए। सर मेक इन इंडिया के क्लॉज पार्ट ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट होते हैं कि नहीं इसमें? यस यस बिल्कुल होते हैं। मेक इन इंडिया का इसमें बिल्कुल है क्लॉज, पार्ट ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट है। और उसको अपना अगर 10 चार्टर्ड करोड़ अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट देना है सर उसमें 50% हाँ चार्ट फंडिंग वाला। सीए से देना है इसको, जो कंपनी नहीं है उसको। बाकी को तो उसको अपने कॉस्ट ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर से इशू करा के देना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यस सर। वो जनरली उस बेसिस पे भी लोग रिजेक्ट हो रहे हैं कि कई बार वो सिर्फ नॉर्मल सीए से करा के दे देते हैं, क्योंकि उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर कई बार इशू करता नहीं। अच्छा सर, ये जो 10 + 20 या 30 का हम टोटल टाइम एक्सटेंशन का आप बताए कि मैक्सिमम है, हाँ हाँ सर इससे ऊपर क्या कोई प्रोविजन ही नहीं है? मतलब डीओपी नहीं है, डिफाइन नहीं है प्रोक्योरमेंट मैनुअल में कि हो ही नहीं सकता है? नहीं, ये प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस में डिफाइन है मैक्सिमम एक्सटेंशन करके वर्ड लिखा हुआ है। हाँ, मैक्सिमम एक्सटेंशन 30 लिखा हुआ है सर। हाँ बट सर अगर पैंडेमिक के ही, जैसा आपने एग्जांपल दिया पैंडेमिक टाइम हाँ में तो दे सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन है कि डीटी की, वो मैक्सिमम एक्सटेंशन डीटी की पावर का लिखा हुआ है कि 30 दिन तक। यस जी सर। जी जी पर सर। आपका ऐसा सिचुएशन आ गया है कि नहीं, हमको उसके भी ऊपर अगर देना पड़ रहा है, क्योंकि पोर्टल आपको रोकता नहीं है। हाँ, पोर्टल नहीं रोकता सर। पोर्टल नहीं रोकता। पोर्टल में आप कितने भी दिन तक का दे सकते हैं, एक बार में या 3 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं, उसमें कहीं पोर्टल का भी नहीं रोकता है। तो अगर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन हो रही तो दे, लेकिन देखिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल मैनुअल को क्रॉस ना किया जाए, क्योंकि आपकी जरूरत है या आपको उस समय दिख रही है। हो सकता है कि 2 साल बाद मैं वो पेपर चेक करने हूं, मुझे लगा कोई जरूरत नहीं थी, आपने फालतू में एक्सटेंड किया किसी को अकोमोडेट करने के लिए। तो ऐसे सर हर कॉरिजेंडम पे 10 डेज है ना? मतलब जितना कॉरिजेंडम हम निकालते हैं उस पे 10 डेज, मिनिमम 10 डेज देना है। डिपेंड करता है। देखिए ऐसा कि आपका मतलब जो सीवीओ सर्कुलर वाली जो बात कह रहे थे ना, उसमें लास्ट लाइन एक लिखी हुई है कि आपका कोरिगोंडम निकालने में और बिड सबमिशन में कम से कम 10 दिन का गैप रहना चाहिए। ओके सर। तो मान लीजिए अब कहीं आप ऐसा दे रहे हैं कि आपका भाई ऐसा कोरिगोंडम है कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर कोई टाइपोग्राफिकल एरर है कुछ है जिससे बिडिंग में कोई वो नहीं आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि बिड सबमिशन और उसमें 10 दिन का गैप है, ठीक है। तो वो चीज आप डेट एक्सटेंशन ना भी दें तो भी चल जाएगा। अच्छा सर, पर ई ये है कि प्रोक्योरमेंट ये सर्विसेज में। प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन लेकिन कहती है कि अगर डेट एक्सटेंशन देते हैं तो फिर मिनिमम 10 दिन का देना पड़ेगा। जी जी जी। वो ये कहती जैसे है एक कि डेट एक्सटेंशन माइनर अगर आप कर रहे हैं तो मिनिमम 10 डेज। माइनर और मेजर चेंज का भी एक टर्म यूज किया गया कॉरिजेंडम में कि आप माइनर हाँ देखिए, माइनर और मेजर चूंकि डिफाइन नहीं है, तो माइनर होता है वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइपोग्राफिकल एरर है जिससे आपका बिडिंग पे कोई देखिए बिडिंग से मेरा मतलब है रेट पार्ट पे या एलिजिबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। सी सर्कुलर में कुछ डिफाइन है थोड़ा सा कि किसको, उतना नहीं उसमें भी एक डिफाइन है वो। एग्जांपल कोट किया है उसमें बस सर्कुलर में शायद। वो क्या ना, देखिए ये सब चीजें क्या ना वो डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देता है यस सर, यस सर। कि आप अपना डिस्क्रिप्शन यूज कीजिए कि आपको क्या लगता है क्या माइनर है क्या मेजर है। तो मेरा तो जो एक्सपीरियंस है मैं तो उसमें ये कहता हूँ कि मेजर वही चीज है जिससे आपका रेट पार्ट अफेक्ट हो रहा है। यस सर, टेक्निकल। हाँ, जो बिडर का क्या ना स्टेटस बदल देगा। मान लीजिए आज आपने ऐसा चेंज कर दिया कि हो सकता है कि मैं 5% नीचे कोट कर रहा था, मेरे को 5% ऊपर कोट करना पड़ जाएगा। या हो सकता है आपने एलिजिबिलिटी रिलैक्स कर दी, एलिजिबिलिटी टाइट कर दी। टाइट तो देखिए करनी नहीं चाहिए कभी भी, इससे अच्छा आप रिटेंडर कर दीजिए। सर जैसे जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर मानिए वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन में जीएसटी छूट गया एस्टीमेट में, फिर हाँ याद है कि एस्टीमेट में जीएसटी ऐड करके वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो क्या उसको इसको कॉरिजेंडम में करेंगे? नहीं, इसको आप रिटेंडर कीजिए, क्योंकि उसका रीजन है कि इससे जो आपका पोर्टल एलिजिबिलिटी। तो क्या ना, पोर्टल पे तो आपने वो वैल्यू डाल दी है। नहीं सर, मानिए कि पोर्टल मैंने ऑटो इवैल्यूएशन ऑफ रखा था, पोर्टल में नहीं है वो ठीक केस है। है, और मैंने सिर्फ मैनुअली डाला है कि आपको वर्किंग कैपिटल अमाउंट इतना होना चाहिए, लाइन्स ऑफ क्रेडिट। तो अब क्या उस केस में कॉरिजेंडम मतलब क्या सजेस्टिव रहेगा सर आपका कि किया जा सकता है? देखिए मेरा क्योंकि सजेशन तो ये है कि
चूंकि अब आपने ऑटो इवैल्यूएशन ही ऑफ कर दिया तो सब कुछ आपको मैनुअली इवैल्यूएट करना है जी और अब आप इंक्लूडिंग जीएसटी डालेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। जी जी जी। अब मान लीजिए कि इस दौरान कोई आदमी टेंडर डाल चुका है कम एलिजिबिलिटी पे, फिर आप क्या कीजिएगा? तो मॉडिफाई तो कर ही सकता है ना बिड अपना। नहीं हाँ मान लीजिए एंटिटी। उसमें भाई वो बोला कि भाई हमने तो कम पे डाल दिया था, हम नहीं मॉडिफाई किए, हम अपने हमने सोचा हमारा बिड सबमिट हो गया, हम चले गए घर अपने, हमने नहीं उसको चेक किया। सर हम एक लाइन और भी डाल सकते हैं ना उसमें कि बीडर हैज रीड और सीन ऑल द corrigendum बिफोर अपलोडिंग देयर बीड। हाँ वो तो देखिए, वो तो सीबीओ का सर्कुलर भी कहता है, ये इंश्योर कर लिया जाए कि भाई उन्होंने सारे कोरिगोंडम, इसलिए जनरली हम लोग जब कोरिगोंडम इशू करते हैं तो उसमें एक बड़ा बड़ा येलो बैकग्राउंड में ब्लैक में बोल्ड में सबसे पहली लाइन ये करते हैं कि आप इस कोरिगोंडम को अपने बिड के साथ अपलोड करेंगे, और जब आप ये अपलोड करेंगे चूंकि डीएससी से डिजिटली साइन करके अपलोड करेंगे तो माना जाएगा कि आपने इसको पढ़ लिया और आप इसको समझ लिए, जान ली और आपने कंसिडर किया इसको बिड करना। पानी नहीं है, पानी सर एक चीज मेरे को पूछना है सर, ऑटो इवैल्यूएशन पर सर, हाँ पोर्टल पर सर, जब हम ऑटो इवैल्यूएशन ऑन करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, टेक्निकल और फाइनेंशियल। ठीक है, तो सर मैं टेक्निकल ऑफ करके सिर्फ फाइनेंशियल ऑन रख सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं आप, है ना, वर्क एक्सपीरियंस वाला चेक बॉक्स हटा दीजिएगा हाँ जब जी। आप वर्क आइटम और सर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना। सर फाइनेंशियल में मेरे पास सिर्फ वर्किंग कैपिटल और नेटवर्थ ही चूज करने का ऑप्शन है, मैं टर्नओवर नहीं रखा है, मेरे एनआईटी में टर्नओवर का कंडीशन नहीं है क्योंकि नहीं, सर्विसेज और टर्नओवर देखिए, आप जब आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे ना तो आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में टर्नओवर का ऑप्शन आएगा भी नहीं, उसमें नहीं, तो आपको उसमें वर्किंग कुछ और कैपिटल और ऑप्शन वर्क आते हैं एक्सपीरियंस सर, ही आएगा। उसमें सर कोई और, क्योंकि दोनों में तीन तीन ऑप्शन आते हैं फाइनेंशियल में। मतलब नहीं तो इसमें सर्विस में तो आपका वर्क एक्सपीरियंस और वर्किंग कैपिटल आएगा, टर्नओवर तो उसमें आएगा नहीं। नहीं, फिर उसमें नेटवर्थ नहीं आता है बट सर। तो नेटवर्थ अभी आपको इसमें जरूरत थोड़ी ना पड़ता है, सर्विस में, सिविल में पड़ता होगा। नहीं मेरा सर, जैसे मेरा बू बॉम्ब का टेंडर है, बू बॉम्ब वॉशरीज का एक मॉडल डॉक्यूमेंट है कोल इंडिया का, अच्छा, उसमें तो ये सीसीएल आपका एमएम बोर्ड है। डिपार्टमेंट से है क्या? नहीं नहीं सर, मैं वॉशरी डिपार्टमेंट से हूँ, यहाँ सीसीएल में वॉशरी नहीं नहीं, डिपार्टमेंट का मतलब टेंडर है। मेरा पॉइंट ये है कि आपका ये किस मैनुअल के तहत आप इसको कर रहे हैं, पहले मैनुअल बता दीजिए एक सर बार तो। इनका डॉक्यूमेंट ही मॉडल डॉक्यूमेंट बना है बू बॉम्ब का, जो सीएमपीडीएल ने बना के कोल इंडिया से अप्रूव करवाया था। बू ठीक में है, उन्होंने फाइनेंशियल टर्नओवर, नेटवर्थ और वर्किंग कैपिटल रखा था, बट हमारे बोर्ड ने फाइनेंशियल टर्नओवर हटा दिया, नेटवर्थ और वर्किंग कैपिटल रखा सिर्फ फाइनेंशियल अच्छा, रिक्वायरमेंट में। ठीक है। अब ये चीज पोर्टल मेरे को नहीं अलाउ करता है, मैंने देखा कि जब मैं सर्विसेज सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई एक ऑप्शन नहीं हो रहा है, और जब वर्क सिलेक्ट कर रहा हूँ तो तीनों ऑप्शन हाँ आ रहे हाँ हैं। हाँ, वो होगा। देखिए उसमें फिर क्या है ना कि आप पहले देखिए, आप अपनी मर्जी से वर्क और सर्विसेज मत सेलेक्ट कीजिए, पहले आप देखिए आपका काम किस कैटेगरी में आ रहा है, वर्क्स में आ रहा है कि सर्विसेज में आ रहा हाँ सर, उस पे भी मैंने प्रीवियसली लोगों, मतलब सेशंस में है। क्वेश्चन पूछा है हाँ कि मेरा जो टेंडर है वो इस नेचर का है कि उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्टी बॉन्ड करता है, और मेरे को वो वॉशिंग चार्जेस, जैसे अपने सीएचपी में ऑपरेटिंग चार्जेस होते हैं ना सर, वैसे यहाँ पे वॉशिंग चार्जेस पर टन मेरे को कोट कर रहा है, और वो वॉशिंग, काम मैं उसको, जी वो एक्सपेंडिचर 3 साल बाद इनकर होगा कंपनी का, 3 साल तक उसको टाइम दिया गया वॉशरी बनाने का। ठीक है। तो अच्छा मान लीजिए वॉशरी बनाएगा तो वॉशरी तो अपना एसेट हो जाएगा। नहीं, अब 18 ईयर्स तक, लाइफ ऑफ वॉशरी 18 ईयर्स तक वो ओनरशिप उसके पास रहता है, 18 ईयर्स के हाँ, बाद वो मेरे को हैंड ओवर कर देगा पूरी प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब, लेकिन वो तो अपने एसेट में फिर जुड़ जाएगी ना, पेमेंट तो अपन कहीं करेंगे ही उसको। पेमेंट हम लोग वॉशिंग चार्जेस करेंगे कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के बाद, जब वॉशरी की वो तो कमर्शियल, करेंगे, पर मान लीजिए सर 18 अपनी साल बाद अपनी तो अपने एसेट में ही आएगा ना। अपने एसेट में वो तब तक नहीं आएगा सर जब तक वो हमको हैंड ओवर नहीं कर देता है, 18 साल तक। मैं 18 साल बाद ही कह रहा हूँ कि 18 साल बाद तो अपनी एसेट में आएगा वो। हाँ, स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि 18 ईयर्स हम लोग टेक्निकल लाइफ मानते हैं वॉशरी की सर एज तो पर, 18 ईयर के बाद जब आएगा तो उसकी तो वैल्यू ऐसी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो जाएगी। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वो भी, वो हमसे कुछ पैसा ले नहीं रहा है। ये तो देखिए इस वाले केस में फिर आपका ये है कि आप चूंकि अभी हम उसको, वो बट हमसे सर कोल लेके वॉश कुछ करके दे कंडीशन, देगा बस। सर कुछ कंडीशंस और हैं सर, जैसे लैंड हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम उसको लीज ले रहे हैं, लैंड हम्म, को हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, हाँ ठीक है। और लैंड का लीज वैल्यू हम उससे ले रहे हैं हम्म, एनुअली, वो एस्केलेट भी हो रहा है। तो हम्म। मतलब नेचर ऑफ वर्क्स है, वर्क्स वर्क्स लगता है जो डेफिनेशन जीएसटी रूल में है वर्क्स नहीं का। लेकिन देखिए, जैसा आप मेरे को बता रहे हैं कि 18 साल तक तो वो प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम कर रहा है,
हम उसको मैं कॉल दे रहे हैं, बट वो सर कॉल हमको ये भी लिख रखा है डॉक्यूमेंट में कि वो वॉशरी वो किसी और के लिए कोयले वॉश करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, वो हमारे ही कोयला वॉश करेगा उस वॉशरी से। अच्छा, क्योंकि इसमें अच्छा, पेमेंट उसको हम वॉशरी सेटअप करने का नहीं देंगे। नहीं दे रहे हैं, बू मोड में नहीं दे रहे हैं सर, बिल्ट ओन ऑपरेट। अच्छा, ओके ओके, तो उसमें तो बस वो पर टन का उसने कल को रेट सेट हाँ, किया पर वो। टन का कैलकुलेशन होगा, वो वॉशरी कमर्शियल ऑपरेशन के समय शुरू होगा। तो ये तो आपका रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आ रहा होगा फिर। हाँ, मतलब रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आएगा सर, वहाँ हाँ, कैपिटल रेवेन्यू कॉस्ट में को आ ही रहा है तो आएगा। फिर उस हिसाब से तो सर्विस के अंडर ही फॉल करेगा ये, क्योंकि इसमें हम उसको कोई भी, भाई वो जीएसटी भी अगर लेगा इसमें इसमें मेनली हाँ, जीएसटी वाले और बेटर बता पाएंगे। जीएसटी वालों का क्या कहना है आपका फाइनेंस का? जीएसटी वाला एक सेशन हुआ था जिसमें संजय सर ने बताया था कि मतलब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है उसमें ये फॉल करता है कि वो हमको हैंडओवर कर दे रहा है प्रॉपर्टी, और बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, और प्रॉपर्टी हैंडेड ओवर हो रहा है वापस एसेट हाँ, के तो फॉर्म में। तो वो इसलिए मैं आपसे पूछा था कि 18 साल बाद तो हमको हैंड ओवर करेंगे, हमारे एसेट में आएगा ही आएगा वो चीज। जी सर, 18 साल मान बाद तो लीजिए आएगा ही। मान लीजिए एक तरह से अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि साहब ये आपको बिल्डिंग बनानी है और 18 साल का टाइम पीरियड है, 18 साल में बना के दीजिए हमको, तो आएगा बना तो के वर्क्स तो में। उनको बनाना तो 3 साल में है सर, 18 साल तक चलाना है उनको, मेंटेन भी लेकिन उन्हीं को देखिए करना चाहिए। इसमें, हाँ, तो ये तो क्या, चलिए एक आपका एक थोड़ा ये फाइनेंस वाला टैक्सेशन वाला पार्ट ज्यादा रहेगा इसमें कि वही लोग कंफर्म कर पाएंगे इसको कि जीएसटी उनको लगाना है। बट अगर आप टेंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछेंगे वैल्यूएशन के लिए, हाँ, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कोई जरूरी नहीं आप ऑटो वैल्यूएशन सेलेक्ट ही करें। जैसे आपने टर्नकी नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट तो डील वो किए हैं। मैं तो वो ऑफ करके रख चल रहा हूँ अभी। हाँ हाँ बट हाँ, सर तो अभी वैसे जो आप कर आपने लीजिए। भी एक एप्टली क्वेश्चन उठाया कि हम वर्क्स और सर्विसेज ऐसे नहीं सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले ये डिसाइड करते हैं कि या तो ये वर्क्स होगा या तो ये सर्विसेज हाँ, होगा। वही चीज हम हाँ, उसको तो ये ऐसे। सर अभी मैंने 2 बार टेंडर किया, एक बार वर्क्स में भी किया, एक बार सर्विसेज में भी किया है, बट अब सर जब ये कोर्स कर रहा हूँ और सेशन हो रहा है तो फिर तो अब मतलब राइटफुल डिसीजन लेना बनता है ना कि या तो वर्क्स हो या फिर हाँ, सर्विसेज हो। नहीं देखिए इसमें आपका एलिजिबिलिटी में क्या क्या डाला है, एक वर्क सर एक्सपीरियंस या टेक्निकल एलिजिबिलिटी में उनको वॉशरी सेटअप का नहीं नहीं, सेटअप, उसमें बताइए टर्नओवर भी लिया है, नहीं वर्किंग कैपिटल और नेटवर्थ लिया है। वर्किंग कैपिटल और नेटवर्थ लिया है, टर्नओवर नहीं लिया है। हाँ, टर्नओवर नहीं लिया है। कैपिटल जनरली हम लोग सर्विस स्टैंडर्ड्स में लेते हैं। लेकिन नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से तो अगर वो हमको हैंड ओवर करता 18 साल बाद ही करे तो भी मेरे हिसाब से तो आना तो वर्क्स में चाहिए। अब सर इसके मॉडल डॉक्यूमेंट के ऑथर सीएमपीडीएल है, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं उनसे लिख के पूछ लूँ कि ये आप बीओक्यू और टेंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में बना रहे हैं या सर्विसेज के फॉर्म में। क्योंकि जो आप ये बिल्ड एंड ऑपरेट वाला जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। हाँ जी जी, ये इट इज नॉट ए टेम्पररी स्ट्रक्चर की वो नो आके नो अपना सर, बस एक हाँ इट प्लांट इज अ बैठाया और परमानेंट। बैठा के जैसे हम लोग का मोबाइल क्रशर लगाते हैं, ये सब नहीं लगाता है नहीं सर, कि ये बैठाया तो किया और परमानेंट लेके है चला सर, गया। एस्टैब्लिशमेंट है ये यस, नेचर। ये हम उसको अपना लैंड दे रहे हैं, वो उस पर एस्टेब्लिशमेंट लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है हमारे लिए। जी। तो वो चीज सर्विसेज में नहीं डाल सकते क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द डे दैट इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। जी सर, और बेसिकली वो कॉस्ट तो इनबिल्ट है ही उसके वॉशिंग चार्ज में, वो तो वो जैसे ले रहे अभी, हैं। हाँ, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग यहाँ मोबाइल क्रशर का जैसे टेंडर करते हैं कि वो क्या करता है, सेमी मोबाइल क्रशर का प्लांट सेटअप करता है पूरा। 6 महीने उसको लगते हैं सेटअप करने में। उसके बाद वो क्रश करके हमको कोल देता है। पर जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो मोबाइल क्रशर हमारी प्रॉपर्टी नहीं रहती है, नहीं सर। वो अपना वापस ले जाता है। जी जी तो वो जैसा वो हमने उसको साइड दी थी वैसी साइड हमको वापस छोड़ जाता है। जी तो सर। हम जी उसको सर, सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में डालते हैं कि उसने हमको कोई गुड सप्लाई नहीं किया पूरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं में। किया है, यस सर, कोई पर हैंड यहाँ वो गुड ट्रांसफर ऑफ सप्लाई गुड्स आपको नहीं कर किया। रहा है तो दैट शुड कम अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी आप एक बार सीएमपीडीआई से पूछ लीजिएगा जो उसके ऑर्डर है। जी सर, जी बट थैंक इफ यू यू सर, आस्क माय ओपिनियन देन दैट शुड कम अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ दैट थैंक एसेट इज बीन ट्रांसफर्ड टू यू। यू, यस सर, यस सर, थैंक यू। है ना? तो ये चलिए कॉशन ड्यूरिंग टेंडरिंग तुमने क्या कि भाई क्रिएट करते टाइम बहुत बार हो सकता है आप लोगों ने भी, मैंने खुद ही नहीं की है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, बाद में वो टेंडर पब्लिश होने के बाद पता चलता है कि गलती हो गई। तो यस उस सर। चीज को अवॉइड किया जाए, नहीं तो एम्बेरसमेंट होता है कि सर गलती हो गई, कोरगंडम निकालो, ये करो वो करो, इसका अप्रूवल उसका अप्रूवल सब। तो लेट अस अवॉइड दैट। अब ये देखिए पोस्ट टेंडर स्टेज, ये अभी हम लोग एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के मिडिल उस पे आ गए हैं कि हमने अब एस्टिमेट हो गया, टेंडरिंग कर दी, एनआईटी ये सब हो गया। अब हमारा आ गया टेंडर खुलने के बाद क्या।
एक टेंडर खोलने का प्रोसीजर तो आप सबको पता ही है कि मिनिमम 2 और 4 डीएससी, मतलब 4 डीएससी ओपनर हम उसमें ऑलरेडी सेलेक्ट करके दे देते हैं, उनमें से किसी की भी 2 की डीएससी से टेंडर खुल जाता है। और ये इंश्योर किया जाए कि जो टीसी मेंबर्स हैं उन्हीं का ही डीएससी यूज हो, तो गाइडलाइन में हमारी यही कहती है। फिर उसके बाद हमने टेंडर ओपन कर दिया तो फिर टेक्निकल इवैल्यूएशन का काम आता है। अब देखिए हमने जब ऑटो इवैल्यूएशन ऑन कर रखा है तो पहला इवैल्यूएशन स्टेज तो सिस्टम ही करेगा कि उसने अपना वर्क एक्सपीरियंस किया, वर्किंग कैपिटल देखा कि हाँ इन्होंने रिक्वायर्ड पीरियड, रिक्वायर्ड वैल्यू का है, और सारा रिपोर्ट हम भेज भी दिए उस फोल्डर में। हाँ, उसके बाद हम लोगों का फिर टीसी का रोल आएगा कि जो उसने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दी है, जिसके बेसिस में सिस्टम ने उसे क्वालिफाई किया है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ पीडीएफ फाइल अपलोड करता है, चाहे वो ब्लैंक पेज अपलोड करे चाहे जो अपलोड करे, वो तो सिस्टम नहीं चेक करता। वो अब क्या हुआ, जब हम टेंडर ये कमेटी कर को लिए चेक ना, करना है। तब हम वो मोबाइल में रिपोर्ट से मिलाना शुरू किए, तो देखते हैं कि 2900 को बीएसपीएस और लिखा हुआ, उसके 2800 बाद ये वेरिफिकेशन जो है अपलोडेड क्रेडेंशियल्स का, ये हमको देखना है कि क्लॉज के हिसाब से हमको कराने की जरूरत है या नहीं है। अभी देखिए कंपलसरी नहीं है वेरिफिकेशन कराना, और जब ये हमने पूरा टेक्निकल इवैल्यूएट कर लिया, शॉर्टफॉल वगैरह मांग लिया, उसके बाद हमने डिसाइड किया अब ये मान लीजिए 10 बिडर आए थे, 10 में से 6 एलिजिबल हैं, 4 इनएलिजिबल हो रहे हैं, तो फिर हम प्राइस बिड ओपनिंग अप्रूवल लेंगे। प्राइस बिड ओपनिंग अप्रूवल का डीओपी किसका है एज पर गाइडलाइन? अगर टेंडर अप्रूविंग अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन है। यस सर। टेंडर अप्रूविंग अथॉरिटी सीएमडी है तो डायरेक्टर का आप अप्रूवल ले लीजिए, और अगर अबव सीएमडी है, एफडीज या बोर्ड है कुछ है, तो फिर आप सीएमडी का अप्रूवल ले लीजिए प्राइस बिड ओपनिंग का। और अगर सीएमडी से नीचे है तो फिर रेस्पेक्टिव टेंडर अप्रूविंग अथॉरिटी का ही आप अप्रूवल ले लीजिए। फिर आपने प्राइस बिड ओपन किया, प्राइस बिड ओपन करने के बाद आपने देखा कि भाई ये केस आ गया उसमें, फिर आपने रेट रीजनेबिलिटी चेक की, फाइनेंशियल कॉन्ग्रेंस, सॉरी अब इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में जाते हैं। देखिए टेंडर ओपनिंग का तो हो गया कि सर एक डीएसपी क्वेश्चन से पूछ होगा, एक सकता हूँ क्या? ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, इसमें कहीं कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता, ना कोई चेंज कर सकता है, जो सर डॉक्यूमेंट उसने अपलोड ईएमडी किए से वही रिलेटेड हमको एक दिखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? बिल्कुल ईएमडी से बोलिए। रिलेटेड बिल्कुल। सर, अभी तो ईएमडी का प्रोविजन नहीं है, बट आफ्टर 31 दिसंबर हमको ईएमडी ऑटोमेटिकली फिर से वापस कर दें या कोई सर्कुलर का वेट करना होगा सर? नहीं, मेरे हिसाब से आपको खुद से वापस कर दे, वापस शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उस सर्कुलर में क्लियर कट लिखा था कि 31 तारीख तक ही वैलिड है। अच्छा सर। सर अभी तो हम लोग जैसे सिंगल बिड 2 पार्ट सिस्टम कर रहे हैं, तो टेक्निकल इवैल्यूएशन पहले जब सर हम लोग L1 सिर्फ इवैल्यूएट कर देते थे, तो उनका टेक्निकल टेक्नो कमर्शियल नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन कॉम्पिटेंस पे हम उनका ईएमडी फोरफिट कर लेते थे। हाँ ठीक है। तो अभी सर अब के केस में क्या, जब हम सब पार्टी का टेक्निकल स्क्रूटनी कर रहे हैं और एक हाँ। पार्टी नहीं एलिजिबल हो पाया फॉर प्राइस बिड ओपनिंग, तो क्या हाँ। उसका ईएमडी फोरफिट कर लेंगे हम? नहीं नहीं करेंगे। देखिए आप किसी को इनएलिजिबल होने के लिए पेनलाइज नहीं कर सकते। जी जी जी। वो चीज उस केस में हुआ करती थी कि भाई आप L1 निकले रिवर्स ऑप्शन के बाद, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं है, तब आप उसमें वो पेनल्टी लगाते थे। तो मान लीजिए किसी ने टेंडर डाला, उसमें से अगर कोई इनएलिजिबल है, आप मतलब जस्ट एक उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के एंगल से सोचिए कि किसी ने टेंडर डाला और उस रिवर्स ऑप्शन वाले प्रोसेस में क्या होता था कि उसकी इनएलिजिबिलिटी हमारे टेंडर प्रोसेस को विशिएट करती थी। जी जी। ये साहब वो ऊट पटांग रिवर्स ऑप्शन में रेट कोड करके L1 बन गया, अब हमको उसको छोड़ के L2 पे जाना पड़ रहा है। मान लीजिए L2 ने फिर वो नहीं दिया, मान लीजिए उसने क्लैरिफिकेशन हमने मांगा, उसने नहीं अपलोड किया, तो इन लोगों के लिए तो कार्टेलाइजेशन का तरीका हो गया ना ये। जी 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 सर। तो मान लीजिए L5 ने कह दिया L1 से L4 तक कि तुम लोग कोई भी शॉर्टफॉल मत देना, तो मेरे को L5 की रेट में काम देना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल। उस चीज को एक अवॉइड करने के लिए वो चीज था कि भाई अगर आपने नहीं दिया तो हम आपको बैन करेंगे और आपका ये ईएमडी फोरफिट कर लेंगे। पर अभी के केस में आप नहीं कर सकते, ये पेनल्टी आप कभी नहीं लगा सकते कि आप इनएलिजिबल हो इसलिए हम आपको पेनलाइज कर रहे हैं। लेकिन बिलो 50 लाख वाले में तो हम लोग करते हैं सर, हम कर ही सकते हैं। ये तो बिलो 50 लाख में फिर आपके वो कहाँ हो रहा है टेक्निकल इवैल्यूएशन? हाँ नहीं, वो दोनों टेक्नो कमर्शियल हो रहा है इसलिए करते हैं। हाँ वो तो एक साथ ही आप आगे बढ़ रहे हैं ना उसमें, तो उसमें तो आप क्योंकि उसमें तो L1 L2 पे जा रहे हैं फिर आप। यस सर। उसमें तो वही वहां तो फिर मैकेनिज्म वही वाली बात हो जाएगी, किसने आपका टाइम वेस्ट किया टेंडर का। तो खैर इसलिए तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग 2 बिट में सबका इवैल्यूएट करते हैं, और अगर जो नहीं एलिजिबल है तो नहीं एलिजिबल, बस उनका बात। प्राइस बिड नहीं खुलेगा बस। हाँ उसका बस प्राइस बिड नहीं खुलेगा, उसकी सजा है और कोई उसको सजा नहीं। इसमें ईएमडी फोरफिट बस वही होगा कि जिनको हम टेक्नो कमर्शियल L1 कह रहे हैं
उनका अगर वो नहीं टर्न अप करते हैं फर्दर सिक्योरिटी के लिए तो हम उनका ईएमडी फॉरफिट करेंगे। हाँ देखिए, ईएमडी फोरफीचर की क्या है ना कि अभी आप देखेंगे अभी क्या ना बिट सिक्योरिटी डिक्लेरेशन हम लोग सबसे ले रहे हैं। जी जी। और बिट सिक्योरिटी डिक्लेरेशन में लिखा है कि जहां जहां कहीं भी ईएमडी फोरफीचर की पेनल्टी है वहां उसकी जगह हमको 2 साल के लिए पूरे सीआईएल और उसकी सब्सिडीज में बैन कर दिया जाए। बैन कर दिया जाएगा। तो अभी ईएमडी फोरफीचर की देखिए पेनल्टी आपकी 3-4 जगह है। एक आपकी पेनल्टी है कि आपने टाइम से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं दी। जी। दूसरा है टाइम से एग्रीमेंट नहीं किया, काम शुरू नहीं किया। और एक और चीज है कि आपने ये बिड अपनी विड्रॉ कर ली। विड्रॉ कर ली। और एक है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन जो दी है वो जेन्युइननेस पे उस पर डाउट है। मान लीजिए आपने लिख के हमको दे दिया कि भाई हम कहीं भी बैन नहीं है, बैनिंग का होता है ना डिक्लेरेशन, यस सर। कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम आई हैव नॉट बीन बैन्ड एनीवेयर, और कहीं से आपको कंप्लेन आ गई, हम तो उसकी बात मान लेते हैं, तुमने कहा बैन नहीं, हमने मान लिया तुम बैन नहीं हो। पर अगर हमको कहीं से कंप्लेन आ गई और एस्टेब्लिश होगा कि नहीं आप तो बैन थे, आपने हमसे छुपाई है इन्फॉर्मेशन, देन इन दैट केस भी उसका फोरफीचर ऑफ ईएमडी का पेनल्टी बनता है। तो वो खैर हम लोग को उसमें देखना पड़ेगा कहाँ का फोरफीचर है, तो उस हिसाब से उस पर वो एक्ट करेगा। तो फिर ये टेंडर ओपनिंग आपका हो गया। उसके बाद टेक्निकल वैल्यूएशन में आता है जो सिस्टम करता है। देखिए सिस्टम क्या क्या करता है कि ईएमडी अगर है तो आपका वो तो देखेगा सीधे जो अमाउंट आया ऑनलाइन ईएमडी का ही है, उस हिसाब से कर देगा। वर्क एक्सपीरियंस पर रिक्वायर्ड वैल्यू देख लेगा, रिक्वायर्ड पीरियड देख लेगा। वर्किंग कैपिटल में रिक्वायर्ड वैल्यू देखेगा, रिक्वायर्ड पीरियड देख लेगा। और जीटी में तो यस नो है। ये जैसे सैंपल शीट है आपका कि ये एमडी आता है और ये यस 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 वो सबको करता है, ऑटो वैल्यूएटेड हो जाता है। ये देखिए ये इसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स का जैसे अच्छा एक आई डोंट नो आप लोग सबको पता है नहीं पता हो सकता, कहीं को पता भी हो कि जनरली सिविल में हम लोग 3 सिमिलर वर्क 2 सिमिलर वर्क और सिंगल सिमिलर वर्क का कॉन्सेप्ट रखते हैं। यस सर। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका पिछले 7 साल में किसी भी एक साल में आपने टोटल इतने वैल्यू का वर्क किया होना चाहिए। कितने वैल्यू का? आपने जो टेंडर किया है उसके एनुअलाइज वैल्यू का 50%। यस सर, सर्विस टेंडर के लिए। हाँ, ये इनके ओबी और गोल्ड रिमूवल के सर्विस टेंडर्स के लिए ये है कि मान लीजिए आपने 1000 करोड़ का हमारा टेंडर है 5 साल का, तो 5 साल के हिसाब से एक एनुअल वैल्यू हो गई 200 करोड़। 200 करोड़ का 50% यानी 100 करोड़ का वर्क उसने पिछले 7 साल में किसी भी लगातार 365 डेज में किया होना चाहिए। मान लीजिए अगर उसने डेट चुनी 26 जुलाई 2017, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस एंड डेट पकड़ लेगा 25 जुलाई 2018। और फिर वो जैसे हमने सिविल में तो ये होता है कि 3 से ज्यादा वो एक्सपीरियंस एंटर ही नहीं कर सकता। यस सर। इसमें है वो कितने भी कर सकता है, 10 15 20 कितने भी कर सकता है। उन सबका टोटल आना चाहिए 100 करोड़ से ज्यादा, मतलब जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू इससे ज्यादा। और पीरियड लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए वही जो उसने सेलेक्ट किया। अगर उसके बियॉन्ड है तो आप उसे कंसिडर नहीं करोगे वैल्यूएशन में। तो ये चीज यहां से एक डिफरेंस आता है सिविल से इसका एक्सपीरियंस कैलकुलेशन में। यस सर, ये मैनुअल में। रिपीट कीजिए सर। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल का स्टार्टअप के लिए प्रोविजन आप लोग अभी कोई टेंडर ऐसा हुआ है क्या? नहीं सर, स्टार्टअप का देखिए हम लोगों ने अभी इसमें नहीं दिया क्योंकि हम लोग का सारा हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। यस सर। तो इसमें वो स्टार्टअप वाला फॉल कर ही नहीं पाता है। तो हमारा ऑन एन एवरेज टेंडर का वैल्यू जाता है 500 करोड़ प्लस ही जाता है। तो मैंने तो अभी तक डील नहीं किया स्टार्टअप का, वरना मैं वुड हैव थ्रोन सम लाइट ऑन दैट। बट क्योंकि स्टार्टअप के लिए वो मैनुअल में लिखा है कि प्रोविजन भी नहीं है अभी ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे अभी। हाँ, अभी प्रोविजन भी नहीं है। और लास्ट टाइम जो आया था उसमें ये था कि भाई इसका फिलहाल तो हमको सभी का एलिजिबिलिटी लेना है करके। स्टार्टअप के लिए गुड्स में हो सकता है सर, मतलब ये वर्क्स में तो हमको एक्सपीरियंस चाहिए ना। हाँ, नहीं है प्रोविजन, कंडीशन दिया हुआ मैनुअल में कि प्रायर टर्नओवर एंड क्राइटेरिया विल बी रिलैक्स्ड फॉर सर्टेन कंडीशन है डिफाइन। हाँ, लेकिन अभी इसमें हम लोग का इसमें नहीं है वो चीज। रिस्क ज्यादा है। सर नहीं है एनुअलाइज्ड वैल्यू के बारे में काइंडली रिपीट कीजिए सर। किसके? एनुअलाइज्ड वैल्यू के बारे में। हाँ, एनुअलाइज वैल्यू के बारे में देखिए सिस्टम इसको कैसे कैलकुलेट करता है। मैंने तो एक बहुत लेमैन उसमें बताया था, आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि हम लोग जब टेंडर क्रिएट करते हैं तो हम लोग पीरियड ऑफ वर्क देते हैं डेज में। मान लीजिए आपने डेज में दिया कि 3 साल के हिसाब से 1096 या 1095 हो जाएगा, और लीप ईयर पड़ रहा है तो 1096 भी दे सकते हैं। आपने 1096 का दे दिया कि इस अगले 3 फाइनेंशियल ईयर का ये हमारा 1096 का पीरियड। तो सिस्टम ये करेगा कि आपने अगर टोटल वैल्यू पकड़ी है 100 करोड़, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 1096 मल्टीप्लाई बाय 365, ये सिस्टम की ऑटो कैलकुलेटेड एनुअलाइज वैल्यू आ जाएगी।
उस एनुअलाइज वैल्यू को 50% निकालेगा, वो आपका रिक्वायर्ड सर्विस एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो किसी भी एक साल में होना चाहिए। ओके सर। और यही चीज वो वर्किंग कैपिटल पे करेगा कि जो आपकी एनुअलाइज वैल्यू आई है उसका वो 20% निकालेगा, जो आपका वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होना चाहिए। सर वर्किंग कैपिटल के केस में आप लोग मतलब एक तो वो 20% ऑफ एनुअलाइज वैल्यू भी होना चाहिए, और दूसरा एक्सेस ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट भी चेक कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो अगर देखिए सीए अगर उसमें लिख देता है कि वर्किंग कैपिटल इज इंक्लूसिव ऑफ एक्सेस टू लाइंस ऑफ क्रेडिट, तो हम उसको मान लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ फर्क क्या होता है कि ओबी रिमूवल और कोल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे में एनुअलाइज वैल्यू जैसे 55 करोड़ है और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस वैल्यू 35 करोड़ कैसे आ गया? 50% होना चाहिए ना, जो एग्जांपल दिए हैं आप। हाँ हाँ, उसमें नहीं जैसे वो एनुअलाइज वैल्यू 336 लिखा है। करोड़ है, ध्यान से देखो 336 करोड़ है। नहीं, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस वैल्यू बोल रहा हूँ सर, 35 करोड़ लिखा है। हाँ, तो ये एक्चुअली पुराना वाला शीट है जब 60% हुआ करता था। अच्छा 65 से हुआ 65% करता हुआ था। करता था, अभी अभी 50 राइट 50%। राइट, ओके है ना, ओके ये ओके ओके। अभी 50%, लास्ट ईयर से 50% हो गया, पहले 65% होता था। हाँ हाँ ठीक है सर, ओके ओके। है ना। तो अभी क्या बात हो रही थी, कौन कुछ पूछ रहे थे ना सर डाउट? ये पूछ रहा था कि जब अगर स्पेसिफिक अगर मेंशन नहीं है कि एक्सेस ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट इन सीए अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं किया है, तब वो बैंक से आप लोग कंफर्मेशन लेते हैं क्या? नहीं, अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि टर्नकी वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे होते हैं उसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर इंक्लूसिव ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट अगर आपका वर्किंग कैपिटल कंस्टिट्यूट कर रहा है तो आपको बैंक का सर्टिफिकेट भी देना है। एग्जैक्टली, यस सर। ओबी रिमूवल और कोल ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ये नहीं लिखा है बैंक का सर्टिफिकेट भी देना है। ओके। तो हम लोग फिर अगर एनआईटी में नहीं स्पेसिफिक है तो हम नहीं मान सकते। हम लोग नहीं स्पेसिफिक है कि मांगना है, जबरदस्ती क्यों जाएंगे। तो उसमें फिर वही जो मैं देखिए, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि आपकी एनआईटी में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली एलिजिबिलिटी में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वो लिखा है कि यही है तो फिर आप एक्स्ट्रा अपने से मांग के उसको कुछ एक्शन नहीं ले सकते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर सर ये आपके पोर्टल में, इस पोर्टल में ऑटो इवैल्यूएशन में वर्किंग कैपिटल का पीरियड क्या रखते हैं, मतलब कब से कब तक वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डेट हो सकता है? वो देखिए, वो टेंडर ओपनिंग डेट से 3 महीने पिछला पकड़ लेता है। जी, 3 महीने पिछले से लेकर सर उसका मतलब बॉटम रेंज नहीं टेंडर देखिए, टेंडर जैसे आप ओपनिंग देखिए डेट इस तक। एग्जांपल में देखिए, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर दिखा हुआ 14 अक्टूबर 16, जी। तो इसने पकड़ लिया 14 जुलाई 2016। और सर कब लेटली बाई कब तक, मतलब 14 जुलाई तो वो मतलब इनिशियल हो सकता है कि वहां से हाँ टेंडर सबमिशन डेट तक ना। हाँ, ऑब्वियस मतलब टेंडर सबमिशन भाई वो 14 अक्टूबर का तो नहीं दे सकता कि 13 अक्टूबर को दे रहा है तो। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अब वही मेरे मेरे वाले केस में क्या है सर कि हम ऑटो इवैल्यूएशन तो ऑन रखते नहीं है, हाँ 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 तो हमको तो अपने एनआईटी में स्पेसिफाई करना है कि भाई मेरा ये रेंज है हाँ हाँ 90 days prior to tender public opening tender date of publication and your end date of bids, your date of bid submission, मतलब offer last date of submission of offer। तो इसलिए मैं पूछ रहा था, ये तो हमको मैनुअली लिखना पड़ता है अपने एनआईटी में हाँ, क्योंकि देखिए आप इस तरह के केस में क्या कीजिए ना कि चूंकि आपको एक मतलब मैं एक जस्ट एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि आपका चूंकि ऑटो इवैल्यूएशन ऑफ रहता है, तो आप बेटर है कि जैसे जो पोर्टल जो चीज करता है जी सर, जी सर। आप उसका एक प्रोटोटाइप करके रखिए। हाँ, टीपीएस में उससे बना के क्या, रखा था सर उसको। हाँ उससे क्या है ना कि बाद में कल को आपका एक डिफेंस रहेगा कि सर पोर्टल हमारा यही करता है, क्योंकि हमारा ऑटो इवैल्यूएशन का फीचर इसमें नहीं हो सकता, तो मैनुअली वैसे ही इवैल्यूएट कर रहे हैं जैसा पोर्टल करता है। तो वो कोई इशू, क्योंकि देखिए 14 अक्टूबर का मतलब या लास्ट डे का ओपनिंग का तो वैसे भी नहीं दे सकता, क्योंकि जिस दिन वो सीए उस दिन का कैसे सर्टिफाई करेगा। वो तो करेगा तो पहले का ही कर पाएगा। सीए का तो सर पहले कर पाए क्योंकि उसको यूडीआई नंबर भी तो जनरेट करके लगाना है वो नंबर डॉक्यूमेंट। जनरेट करना प्लस आप फ्यूचर की डेट का वर्किंग कैपिटल किसी का कमी नहीं बोल सकते ना। नहीं, कभी नहीं वो कि नहीं भाई सर। कल उससे कितना। सर मानिए उस केस में शॉर्टफॉल अगर जरूरत पड़ गई डॉक्यूमेंट की, तो बाद हाँ के डेट का तो वो शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट आप नहीं ना एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बात की डेट का देखिए डिपेंड करता है कि क्या चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लीजिए आप क्लैरिफिकेशन कोई ऐसा मांग रहे हैं जो ऑलरेडी उस चीज को नहीं चेंज कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि उसने सबमिट किया कि मान हमको ये एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको 14 अक्टूबर 16 तक का वर्किंग कैपिटल चाहिए था। जी। उसने हमको ये दिया कि हम 10 अक्टूबर को हमारा वर्किंग कैपिटल है यहाँ चाहिए कितना, 11 करोड़ चाहिए ना। उसने दे दिया कि 10 अक्टूबर को हमारा 11 करोड़ 3 लाख है। जी सर। तो पहली बात तो अगर सिस्टम ही उसको ओके नहीं करेगा,
और इन केस अगर मान लीजिए आपका ऑटो वैल्यूएशन ऑफ है, उसने दे दिया, तब आपको उससे स्पेसिफिक, क्योंकि जो अपनी एनआईटी कहती है कि जो उसने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है उसी के करस्पॉन्डिंग आप डॉक्यूमेंट ही मांग सकते हैं। बिल्कुल सर जी। अब वो ऐसा नहीं कर सकता कि अब वो बोलेगा अच्छा नहीं हमारा 11 को ये नहीं, हमारा ले आप ले लीजिए 1 तारीख को हमारा ये था, तब आपका एनआईटी का वो वाला क्लॉज वायलेट हो जाएगा कि उसने जो करस्पॉन्डिंग आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दी थी हाँ, उसके अगेंस्ट में उसके उस करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट का प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं उसने है। नहीं दिया है। सर क्योंकि मानिए उसने देखिए क्या होता है ना कि मैं जस्ट, क्योंकि आपका केस थोड़ा अलग है कि ऑटो वैल्यूएशन ऑफ है, उस तरह के केस में कई बार टीसी डिस्क्रिशनरी कॉल भी ले लेती है। अच्छा सर। कई बार वो वैसा भी सोच लेती है कि साहब ठीक है हमारा एनआईटी तो कहती है ना पिछले 90 दिन में किसी भी दिन का होना चाहिए, तो उसने दे तो दिया है, क्या गलत है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के साथ, और क्योंकि ऑनलाइन आपका नहीं है ना इन्फॉर्मेशन उसमें कहीं भी। नहीं ऑनलाइन नहीं है सर, बट उसके ऑफर सबमिट करते समय में हमने एक एक्सेल शीट बना रखा है, एक्सेल नहीं मतलब वो हाँ तब तो आप उस करस्पॉन्डिंग शीट का रेफरेंस देके कर सकते हैं, तब तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो कोई इशू उसने ऑब्जेक्टिव डेटा भरा है उसमें कि मैं इस डेट का सर्टिफिकेट नहीं। डाल हाँ रहा हूँ, इतना अमाउंट है मेरा उस डेट में। हाँ हाँ। और तो आपने फिर उसमें एनआईटी में लिख रखा होगा भाई जो आपका करस्पॉन्डिंग आप इन्फॉर्मेशन दी उसी करस्पॉन्डिंग हम हाँ वो मांगेंगे तो है तब। सर, और हाँ वो लाइन तो लिखा हुआ है कि हाँ ऑल तो डॉक्यूमेंट शुड बी फिर अगेंस्ट कोई द। इशू नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है सर अगर सपोज वर्किंग कैपिटल सर्टिफिकेट में यूडीएन जब सबमिट किया बिडर, यूडीएन हाँ किसी और डॉक्यूमेंट का था, ओके और जब स्क्रूटनी किया गया तो यूडीएन रहता है कि जो वर्किंग कैपिटल सर्टिफिकेट सीए दिया है उसकी वेरिफिकेशन के लिए। हाँ ठीक है अब टीसी के पास ऑप्शन नहीं है उसको वेरीफाई करने के लिए कि जो सीए दिया है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या कंफर्मेटरी लिंक के थ्रू मांग सकते हैं सर यूडीएन के साथ हाँ हाँ सर्टिफिकेट? बिल्कुल 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 मांगना ही है। और सर अगर यूडीएन जनरेशन डेट जो रहेगी वो बिट हाँ सबमिशन एंड डेट के बाद का रहे तो? नहीं बिल्कुल वो बिल्कुल बिल ये सबमिशन बात का है, पर उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो तो वो रख सकता है जो बिट हाँ, सबमिशन की है। इंफॉर्मेशन सब टैली हो रहा है सर, ऑनलाइन जो सब बिडर फिल की है वो सेम है, सर्टिफिकेट में सेम है, यूडीएन में जो पोर्टल में इंफॉर्मेशन है वो भी सेम है, बट जो यूडीएन जनरेशन डेट है वो बिट सबमिशन एंड डेट के बाद का है। हाँ लेकिन उसने जिस बेसिस पे वो ऑटो वैल्यूएशन में क्वालिफाई किया, अगर उसके करस्पॉन्डिंग को क्लैरिफिकेशन दे रहा है तो दैट इज टू बी एक्सेप्टेड। वो एक्सेप्ट करना है। और सर हाँ क्योंकि एक देखिए डाउट। उसका रीजन है ना कि मान लीजिए उसने यूडीआई जनरेट किया, जी उसमें सर। उसने दिया कि अब ये 10 जुलाई को इनका वर्किंग कैपिटल 10 करोड़ है। जी सर। अब अगर वो उस चीज को आपने जब क्लैरिफिकेशन उससे मांगा कि आपने मान लीजिए वहां यूनिट नहीं लिखा, आपने 10 ही लिखा है, करोड़ जी नहीं है, या इस तरह का मान लीजिए कुछ भी एक्स वाई जेड कि आपने क्लियर नहीं लिखा कि वर्किंग कैपिटल है या नहीं है, उसी बिल्डर का है या नहीं, इस तरह से करके कुछ भी जी आपने मान लीजिए इस तरह का क्लैरिफिकेशन मांगा, जी तो अब वो ऑब्वियस सी बात है बैक डेट में तो यूडीआई जनरेट होगा नहीं, जी जी पर वो यूडीआई जो भी जनरेट करेगा उसमें जो उसका इंफॉर्मेशन रहेगी वो वही रहेगी, वो इंफॉर्मेशन नहीं चेंज कर सकता। ठीक। सर अगर मतलब कि वर्किंग कैपिटल सपोज एज ऑन वाला जो डेट है वो होना चाहिए उस पीरियड का। यस वो क्लियर होना, वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो उसमें था, जिस बेसिस पे आपने हाँ मांगा क्लैरिफिकेशन। और सपोज सर्टिफिकेट या यूडीआई सर वो कभी कभी हो। और यूडीएन ड्यूरिंग यूडीएन वेरिफिकेशन अगर मतलब सही यूडीएन दिया हुआ है तो हाँ यूडीएन जब वेरीफाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें का मतलब मिसमैच हो रहा है जो हाँ वर्किंग कैपिटल सर्टिफिकेट में है और ये यूडीएन पोर्टल में, सपोज एज ऑन डेट यूडीएन पोर्टल में नहीं दिया हुआ, हम्म तो हम लोग क्या सीए से कंफर्मेशन ले सकते हैं उसका मिसमैचिंग का? नहीं आई थिंक इट इज बेटर बिडर से ही लीजिए। बिडर सर, बिडर का तो उसमें देखिए ऐसे रोल ही नहीं है देखा जाए तो। यार बिड तो आपको बिडर सबमिट किया है ना, सीए तो bid सबमिट नहीं किया, किया बट है। जो यूडीएन पोर्टल है सर वो तो जैसे सीए जनरेट करता है यूडीएन नंबर। देखिए वो बात आपकी ठीक है, पर जब हम एनआईटी में क्या रखेंगे आपको यूडीआई इनके साथ देना है, उसने जी बिड सबमिट किया, अपनी एनआईटी ये कहती है कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी कोई भी वो है तो आप बिडर को 7 दिन का टाइम देके मांगोगे। हाँ सर, उसमें सर एक और भी चीज जैसे बोलता है इन केस ऑफ एनी सस्पिशन और डेफिशिएंसी आप जो हाँ इशूइंग अथॉरिटी है उनसे क्लेरिफिकेशन लेने का। हाँ वो क्लैरिफिकेशन वाली बात एक अलग हो गई, पर आप उसको शॉर्टफॉल मतलब क्लैरिफिकेशन तो आप ऑब्वियसली ले ही सकते हैं, तो जी वेरिफिकेशन वाला देखिए अभी जो मैंने हम स्लाइड खोल रखी है उसमें वही वाली लाइन है क्लेरिफिकेशन, जो आप कह रहे हैं। एफिशिएंसी तो नहीं है, डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट है एक तरह से। नहीं डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी है ना, जो करस्पॉन्डिंग यूडीआई है उससे वेरीफाई कहाँ हो पा रहा है कि उसका यूडीआई उसी का है कि नहीं। तो तब फिर वो बिडर को देंगे सर, वो नया यूडीएन बना के फिर देगा। हाँ नया यूडीआई पर इंफॉर्मेशन वही रखेगा, उसमें क्या ना आपको कौन सा क्लॉज हेल्प करेगा, अब देखिएगा अपने टेक्निकल इवैल्यूएशन ऑफ बिड में जो इवैल्यूएशन वाले स्टेप्स उसमें एक लाइन होती है कि अगर उसका शॉर्टफॉल देने के बाद भी एलिजिबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं होता है जी सर, जी सर। तो हम उसको एलिजिबल मान लेंगे।
ठीक तो वहां पे आप इस क्लॉज का जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि साहब उसने जब बिड डाला तब भी 10 जुलाई को उसका 10 करोड़ था, यस सर। हमने उससे शॉर्टफॉल में क्लैरिफिकेशन मांगा, उसने उसी सीए का करा के हमको दिया है, क्लैरिफाई क्लियर कट क्लैरिफाई करके दिया कि 10 जुलाई को मेरा 10 ही करोड़ है। ठीक है। तो उसकी एलिजिबिलिटी स्टेटस तो हम नहीं चेंज कर रहे हैं वैल्यूएशन में, तो नहीं वही रह रहा है। नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो उस हिसाब से उसको एवेल्यूएट मान सकते हैं। थैंक यू अब सर। देखिए ये वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स है। देखिए वर्क एक्सपीरियंस और वर्किंग कैपिटल में तो क्या है कि आप इशूइंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, जैसा भी हम लोग बात कर ही रहे थे सीए वाला। मोस्टली तो यूडीआईएन में वेरीफाई हो जाता है वर्किंग कैपिटल, वो क्लियर कट लिख के देते ही हैं कि ये वर्किंग कैपिटल है और इतने वैल्यू है, इस डेट का है। और वर्क एक्सपीरियंस में तो अभी आप जैसे जो प्रोक्योरमेंट की गाइडलाइंस है कि ओनली इन केस ऑफ कंप्लेन रिसीव और सस्पिशन आपको करना है, और वो भी स्पीड पोस्ट या ईमेल से आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और सर एक और थोड़ा क्वेरी हाँ है। बोलिए ना। एक हम लोग ओबी प्रोसेसिंग प्लांट का टेंडर किए थे सर, हाँ वो अवार्ड भी कर दिए। ठीक है। तो लेटर ऑन एक पार्टिसिपेटेड बिडर था, L2 था, उसने केस किया कि जो आपने जो L1 बिडर ने वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट किया है वो ये है, फॉर्जरी है। और जो अपने आपका एम्प्लॉयर जो है उसका, वो भी सेल्फ मेड एम्प्लॉयर है, मतलब एग्जिस्ट नहीं हाँ करता है। ठीक है। तो हमने जब मींस एज पर एनआईटी तो जब इवेल्युएट किए तो उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखा कि जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, और हाँ उसके बाद एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवा लिया। हाँ ठीक है। तो एज पर मतलब हमारा जो कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग तो इतना ही स्कोप है हमारे पास तो करने का कुछ। जी जी। तो उस अकॉर्डिंगली तो कुछ गलत नहीं हुआ ऐसा। हाँ हाँ, नहीं उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है कि देखिए आपने जब उसने आपको टेंडर डाला, उसने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उससे क्या क्या लिए ये प्रूव करने के लिए कि हाँ उसका वो है, वर्क ऑर्डर लिया होगा। जी सर, वर्क ऑर्डर था, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था। और ओबी प्रोसेसिंग वो सैंड वाला है क्या टेंडर? जी सर, जी सर, ओबी टू सेंड जो ओबी टू सैंड आपके सब्सिडरीज हैं? ईसीएल से है सर। ईसीएल से, अच्छा। तो आपका ये उसमें क्या वर्क एक्सपीरियंस में रिक्वायर्ड में वैल्यू था, रिक्वायर्ड की सिर्फ टेक्निकल क्राइटेरिया था? उसमें सर टेक्निकल क्राइटेरिया, उसमें भी ऑटोमेटिक ये इवैल्यूएशन ऑफ किया हुआ था। हाँ वर्किंग क्योंकि उसमें ओबी टू सैंड वाले में वैल्यू वाइज तो लेते नहीं हो, तो टेक्निकल क्राइटेरिया में ही लेते हैं। तो टीडीएस की आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं सर, नहीं सर। हाँ तो ठीक है, आपने देखिए भाई अपने जब तक आप टेंडर इवेलुएट कर रहे थे तब तक तो कोई कंप्लेन आई नहीं। नहीं सर। आपने उससे जो डॉक्यूमेंट मांगा उसने अपना डॉक्यूमेंट दे दिया, जी जी सर। और उसके बाद कंप्लेन आई, उसके बाद आपने वेरीफाई कराया, इशूइंग अथॉरिटी ने वेरीफाई भी कर दिया, यस सर। है ना। और ओबी टू सेंड वाले में तो अपन 2-3 ऑप्शन रखते हैं शायद कि अगर आपको खुद का भी प्लांट ओन आप कर सकते हैं और ये सब। जी सर, वो तो है, हायर और हाँ ये ओन और हायर दोनों ऑप्शन है। देखिए जनरली क्या होता है कि एक हम लोग के केस में भी हुआ था कि एल टू नहीं, जब इवेल्युएशन ही चल रहा था तभी एक बिडर ने दूसरे बिडर की कंप्लेन कर दी कि इसका एक्सपीरियंस जो है गड़बड़ है, इसका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, ये मतलब मिस इंटरप्रेट कर रहा है अपने एक्सपीरियंस को और अपने ही एम्प्लॉयर से इशू करा के दे दे रहा है हमको जी जी। कि वो कंपनी जिसने इशू किया है वो भी यही इसी की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है और इससे अपना सब इशू कर दिया है। तो अब एनआईटी में तो कहीं इस पे रोक नहीं है। नहीं सर। एनआईटी ने तो कहीं नहीं कह रखा कि आप अपनी सिस्टर कंसर्न क्या काम नहीं कर सकते। जी हाँ जी। आप दोनों लोग साथ में बिड नहीं कर सकते, एनआईटी मना करती है। तो जी चूंकि जी। बहुत हाई वैल्यू टेंडर थे करीब 1,500 करोड़ का, तो हम लोगों ने उसमें आईएम से भी ओपिनियन लिया उस केस का, जी उसकी कंपनी को। तो आईएम ने भी कहा भाई एज पर एनआईटी अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम किस बेसिस पे एक्शन लें किसी के खिलाफ, जी जी। क्योंकि किसी के खिलाफ पेनल एक्शन लेने के लिए हमारे पास बहुत सॉलिड वो ग्राउंड होना चाहिए एनआईटी का क्लॉज। यस सर। तो वो नहीं है तो फिर कोई इशू सर नहीं। लीगल स्टेटस के बारे में एक चीज पूछना था सर। हाँ बोलिए ना। सर लीगल स्टेटस जैसे मतलब ये कोर्ट का जो एफिडेविट होता है नोटराइज वही होना चाहिए कि और भी कोई डॉक्यूमेंट जैसे इसमें जैसे जीएसटी भी अपने आप में एक लीगल डॉक्यूमेंट है? नहीं जीएसटी और लीगल डॉक्यूमेंट डिपेंड करता है किस चीज के लिए। जैसे आपके देखिए 4 तरह की लीगल एंटिटीज होती हैं, एक होता है प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और चौथा होता है जॉइंट वेंचर। तो सर अगर लीगल स्टेटस लिंक में उसने जीएसटी डाला है तो वो कंसिडर होगा ना? वो कंसिडर होगा, डिपेंड करता है कि वो क्या है, प्रोप्राइटर है। हाँ जी सर, जैसे प्रोप्राइटर है। हाँ तो प्रोप्राइटर तो जनरली पैन से ही वो हो जाता है कि पैन है तो उसका अपना मतलब उससे आप सर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ले सकते हैं, उसमें पैन नंबर प्लस आता सर है। अभी अभी जैसे जो नया रूल आया है सर उसमें पैन जीएसटी और लीगल स्टेटस में अपन वो नहीं मांग सकते हैं, शॉर्टफॉल नहीं मांग सकते हैं। विद मतलब बिलो 50 लाख की बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। हाँ तो जैसे पैन जीएसटी और लीगल स्टेटस में शॉर्टफॉल नहीं मांग सकते हैं,
और किसी बिडर ने अगर L1 हुआ है और उसने जीएसटी डॉक्यूमेंट की जगह ब्लैंक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, हाँ लेकिन जो बिड सबमिशन कंफर्मेशन अपना डाउनलोड होता है उसमें उसका जीएसटी नंबर दिखता है, डिस्प्ले होता है। उस जीएसटी को अगर अपन ऑनलाइन चेक करते हैं उसका सब कुछ सही है, एक्टिव है जीएसटी, हाँ हाँ लेकिन उसने डॉक्यूमेंट डाला नहीं है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट डाल दिया है गलती से। और इन अच्छा केस ऑफ जीएसटी हम शॉर्टफॉल मांग नहीं सकते हैं, तो उस केस में हाँ क्या करेंगे? ओके, मतलब नॉट टू बी रिसाइकल्ड आपने कर रखा है ऑप्शन सेलेक्ट। और हाँ तो उसमें सर हम लोग मांग सकते नहीं, शॉर्टफॉल मांग नहीं सकते हैं। लेकिन उसको करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट देना है। हेलो, हाँ उसको मैं कह रहा हूँ, उसको करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट तो देखो एज पर एनआईटी उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए अपना। हाँ देना चाहिए सर, लेकिन उसने गलती से उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट डाल दिया है, लेकिन उसका ऑनलाइन ऑनलाइन सब कुछ सही है। तो हम्म नेचुरल जस्टिस तो यही कहता है कि उसको कंसिडर करना चाहिए। नहीं, नेचुरल जस्टिस तो कहता है, पर एनआईटी अगर कहती है कि उसको क्लैरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट में देना मांग है। सकते हैं ना उससे। जैसे मान लीजिए सर, जो टीसी कमिटी है वो इस चीज में अग्री नहीं कर रही है कि उसको हम इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दें, क्योंकि हम्म। L1 को रिजेक्ट करने के लिए कोई सॉलिड ग्राउंड चाहिए। नहीं तो आप जो बिडर सबमिशन कंफर्मेशन वो है, उसमें है उसका क्या बिड बिड सबमिशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट में जीएसटी नंबर है। हाँ जीएसटी नंबर है, उसको ऑनलाइन चेक किया तो सही है। और हाँ ठीक है, बीओपी अगर में भी आपके पास लगता है। अगर आपके पास थ्रू पोर्टल एक आ जा रहा है हाँ जी। और दैट कैन बी वेरीफाइड ऑनलाइन, तो आप उसको देखिए, अब ये कॉल ऑफ द टीसी हो जाता है ये वाली चीजें। हाँ वो इसको टीसी में डेलिब्रेट करके अपन कंसिडर कर हाँ सकते हैं ना सर। हाँ ये हाँ सब्जेक्टिव है, अपने ऊपर है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें होती है ना, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि ये जैसे अभी और उन्होंने जब से जो ये पैन जीएसटी और लीगल शेयर में शॉर्टफॉल नहीं मांग सकते, जब से ये वाला रूल आया ना, तब से हाँ लगभग 50% ऑफ टेंडर्स फंस रहे हैं। हाँ ये हम लोग का भी ये प्रॉब्लम, अभी लकीली हम लोग का तो अभी तक किसी टेंडर में फंसा नहीं, बट क्योंकि टू टाइम बाकी शॉर्टफॉल से सिविल वन में हम टाइम लोग का भी शॉर्टफॉल इशू किया था हो वो रहा तो है। ठीक था। टू हाँ टाइम शॉर्टफॉल से वन टाइम शॉर्टफॉल किया वो ठीक था, लेकिन नो शॉर्टफॉल जो कर दिया है ना, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। इसमें सर मोस्टली टीसी बोल देते हैं कि मांग लेने के लिए कंफर्मेटरी लिंक से, इवन उनको बता दिया जाता है अप्रेज करने के बाद कि नॉट टू बी रिसाइकल्ड में आते हैं, ये फिर भी बोलते हैं कि कोई इशू नहीं है जीएसटी वगैरह के लिए। नहीं फिर तो तो उसमें मैनुअल को अपन फॉलो नहीं, मतलब गलत हो हाँ जाएगा मेन ना वो बात तो तो सर। उसको यही है ना कि मान लीजिए आज आपने 3 बिडर से मार लिया और उसमें चौथे जब ने साफ साफ कंप्लेन लिखा कर दी हुआ है कि एज कि पर एनआईटी नहीं रिसाइकल मांगना नहीं था, क्यों करना है मार तो नहीं लिया। करना है। हाँ ये चीज किया जा सकता है कि उसको पैन जीएसटी डॉक्यूमेंट लिंक में ना मांग के किसी और लिंक के अंदर मांग लिया जाए। ठीक है वो तो ये तो मैं ये कहता ही अपना प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस कि आप एनआईटी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं सब्सिडरी लेवल पे। तो अगर आपके रेगुलर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज को सीआईएल पे हाईलाइट किया जा सकता है। तो नहीं वो इग्नोरेंस है सर, बिडर्स का इग्नोरेंस है ये, और कुछ नहीं है। इग्नोरेंस क्योंकि उन भी लोग है, मान के प्लस क्या चलते है हैं ना कि कि देखिए एक जो कंफर्मेटरी डॉक्यूमेंट्स जो ये ओआईडी वाले रहते हैं, ये ऑलरेडी एक बार सब एक बार डाल के कर देते हैं। वो और लोग अभी मान के तक उन चलते हैं लोगों कि की शॉर्टफॉल आदत तो है कि राइट हो बस जाएगा। लिंक में डॉक्यूमेंट डालने की। जी ओआईडी को वो लोग डिस्टर्ब करते नहीं है। हाँ जी। तो वो चीज ऑब्वियस सी बात है कि ये इशू आ रहा है कि मान लीजिए पैन जीएसटी तो मैक्सिमम लोगों का ठीक ही रहता है, लीगल स्टेटस में कई बार होता है अपडेशन होता नहीं, वो लोग चेंज करते हैं उसको। और मेन जो ये छोटी छोटी चीजें सर, पैन जीएसटी लीगल इस चीज के लिए L1 को रिजेक्ट करने में टीसी बहुत मानती नहीं आसानी से, टीसी दिक्कत ये होती है, फिर कैंसिलेशन के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। नहीं अगर आपके पास ऑनलाइन अगर इंफॉर्मेशन में आ जा रहा है तो चूंकि जी आप ये बिलो 50 लाख में प्रॉब्लम ये कि एल1 हमें पता चल गया। तो वही L1 पता चल जाता है सर। हाँ भाई हम लोग क्या तो क्या है कि ये 2 बिट सिस्टम आदमी कॉल ले लेता है कि स्ट्रिक्टली एज पर एनआईटी जाके हम कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं एल1 है या नहीं। वही L1 डिक्लेयर होने के बाद कैंसिलेशन बहुत बड़ा फिर चीज हो जाता है, तो इसलिए कि उसमें तो कैंसिल देखिए क्यों उसमें किया, मैं L1 सजेस्ट ये आपका करूंगा ये कि में चूंकि है। अगर आपके फ्रिक्वेंटली हो रहा है और आपका तो चूंकि एल1 पता चल जाता है, जी इट इज बेटर कि इसको जो है आप चेंज कर लीजिए। नहीं तो आप इस प्रॉब्लम में क्या ना कि देखिए हम लोग कॉल तो लेते जाते हैं, जी किसी दिन कोई कंप्लेंट कुछ आती है तो फिर रिप्लाई देने में दिक्कत होता है। जी हाँ वही हाँ बात है तो सर। इससे बेटर है कि चूंकि अभी तक हम सही से करके निकल गए, तो आगे के एनआईटीज में आप चाहें तो ये मैनुअल का क्लॉज कोट करते हुए, प्लस आप देखेंगे तो जो ये ओबी रिमूवल और कोल ट्रांसपोर्टेशन की जो ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनुअल है, इसमें ये नॉट टू बी रिसाइकल्ड वाला ऑप्शन नहीं है, इसे वी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। हाँ सर, हम लोग को अलग से सर्कुलेट किया गया है सब्सिडी हाँ ये हेडक्वार्टर सिर्फ की वी जगह। प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस में है नॉट टू बी रिसाइकल्ड, अदरवाइज मैनुअल में कहीं नहीं लिखा ई है नॉट टू बी प्रोक्यूरमेंट ऑफ रिसाइकल्ड। वर्क्स एंड सर्विसेज वाले मैनुअल में आ गया है वो। हाँ बस ई प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस में वो है वर्क्स एंड सर्विसेज के, तो उस बेसिस पे उसका और मॉडिफिकेशन करके। सीएमएम चैप्टर 3 एंड 6 है सर, वो खाली सीएमसी वाले में फॉलो होता है क्या?
हाँ, वो चूंकि स्पेसिफिक वर्क के लिए है ना, ओबी रिमूवल और कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए। अच्छा अच्छा, और गुड्स के लिए भी तो है ना सर, वो चैप्टर गुड्स के 3 लिए या परचेस मैनुअल, अच्छा सॉरी सर, यहाँ राइट है। गुड्स के लिए परचेस मैनुअल और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपका चैप्टर 2 है टर्नकी मैनुअल, ओके। है ना। तो इस तरह के केस में चूंकि आपका L1 वाला इशू आ जाता है, तो आप इस चीज को अपने एनआईटी में चेंज करवा ही लीजिए, नहीं तो आपका हर टेंडर में इशू फंसेगा। और फिर ठीक है सर, हम लोग एक उसको एक मतलब एक लेटर भेज देंगे, और क्या कर सकते हैं। हाँ, सीआईएल को आप लेटर भेज सकते हैं, या फिर अगर आपका भाई बॉसेस अगर कन्विंस हैं तो आप अपना सब्सिडी लेवल पे उसको कर सकते हैं। सब ये इशू आ ठीक रहा है है सर। बार बार और हमारे टेंडर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात ये है माइनर इशू, जी। ऐसा नहीं है कि वो आदमी काम कर रहा है उसका पैन जीएसटी नहीं होगा। नहीं पेन जीएसटी है सर, बस वही वही तो छोटे कि भाई छोटे। इस चीज के लिए किसी को रिजेक्ट कर देना, जाहिर सी बात है कि ये कोई चाहे 50 लाख का टेंडर हो चाहे 5 लाख का टेंडर हो, हाँ किसी L1 को रिजेक्ट कर देना तो ठीक बात नहीं है। तो उसको हाँ आप हाँ कोशिश कीजिए कि फ्यूचर एनआईटीज में कर दें, क्योंकि हम डिस्क्रिशनरी कॉल लेते हैं बट लेना नहीं चाहिए, राइट सर। तो ओके, जस्टिफाई थैंक करना यू बहुत सर। डिफिकल्ट है। मामला फंसता है। देखिए जैसे इस चीज पे आपको पता है कि एक सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव बिड की एक डेफिनेशन हम लोग की मैनुअल्स में दे रखी है कि सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव बिड इज वन व्हिच कंफर्म्स टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस विदाउट मटेरियल डेविएशन और रिजर्वेशन। ये बहुत एक वेग डेफिनेशन है, बट कहीं हद तक जिस तरह का जो हम लोग कॉल लेते हैं ना, जैसे अभी हम लोग ले रहे हैं जीएसटी वाला पैन वाला, तो उस तरह के उसको कभी कभी हमको सब्सटेंशिएट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए काम आती है कि which affects in any substantial way the scope, quality or performance of the work, which limits in any substantial inconsistent with the bidding documents, whose rectification would affect unfairly the competitive position of other bidder presenting substantially responsive bids. तो ये सब चीजें भी हैं इसमें। फिर देखिए टेंडर कमिटी ने जो वैल्यूएशन किया उसमें तो वही करस्पॉन्डिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के तहत डॉक्यूमेंट्स का किया, कंपैरेटिव बनाया, शॉर्टफॉल जो मांगना था 7 दिन का टाइम देके मांगा, और फाइनल। और देखिए अगर आप लोग टीसीआर जो भी लोग ड्राफ्ट करते हो, तो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, टीसीआर को हमेशा जितना हो सके उतना एलॉबरेटिव बनाइए, उसको बहुत कट शॉर्ट मत कीजिए कि ये उस पेज में लगा है, ये उस पेज में लगा है। एटलीस्ट इतना हो कि टीसीआर पढ़ने के बाद मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसी से गैदर हो जाए उस टेंडर के बारे में, मतलब उस बिडिंग के बारे में, बजाय रेफर करने के सब जगह। फिर प्राइस में, हाँ, अब जो रीजनेबिलिटी वाला हम लोग बात कर रहे थे, कोई बीच में पूछे भी थे, देखिए ये हमारा की मैनुअल क्या कहती है, जो भी हम लोग एनआईटी में भी क्लॉज आ गया है कि द टेंडर कमिटी विल रिकमेंड फॉर अवार्ड ऑफ द वर्क टू द सक्सेसफुल बिडर आफ्टर इवैल्यूएटिंग द टेक्निकल एलिजिबिलिटी based on the system generated evaluation sheets followed by evaluation of the scanned documents uploaded by bidder in support of the information furnished by them online and after evaluation of the reasonableness of L1 rates। ये क्लॉज पहले नहीं रहता था। The reasonableness of rates will be evaluated as per the provisions of manual of CIL and other guidelines issued from time to time। तो अगर हम किसी बिडर को अनरीजनेबल रेट के लिए रिजेक्ट करते हैं अपने मैनुअल के हिसाब से, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि साहब आपने कैसे कह दिया अनरीजनेबल। देखिए ये हम लोग का मैनुअल क्या कहता है जो सीएमएम है रीजनेबलनेस के लिए, कि द ओवरऑल अमाउंट फॉर द वर्क एज वेल एज रेट्स फॉर इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ वर्क कोटेड बाय L1 आर जस्टिफाइड एंड आर इन कंफर्मिटी विद द गाइडलाइंस गिवन बिलो। अब इसने और करके 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। एक है कि कंपेयर द रेट्स कोटेड बाय ओवरऑल L1 फॉर ईच आइटम। देखिए ईच आइटम का ये इंपॉर्टेंस तब रहता था जब आइटम रेट टेंडर होता था। अभी क्या हो गया कि हम लोग परसेंटेज रेट टेंडर करते हैं, तो परसेंटेज रेट टेंडर में ईच आइटम का अलग अलग रेट तो होगा नहीं, तो ओवरऑल सब पे यूनिफॉर्म परसेंटेज कम होगा। पहला है एस्टिमेटेड रेट जस्टिफाइड रेट एज एप्लीकेबल ऑफ द वर्क। ओबी रिमूवल और कोल ट्रांसपोर्टेशन में जस्टिफाइड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा अपने सिविल मैनुअल में है कि रीजनेबलनेस के लिए हम लोग जस्टिफाइड प्लस 10% पकड़ते हैं। यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ एस्टिमेटेड रेट से ही कंपैरिजन होता है, जस्टिफाइड रेट करके कुछ नहीं है। फिर एनालिसिस ऑफ रेट्स बेस्ड ऑन प्रेवलेंट मार्केट रेट इंक्लूडिंग दैट ऑफ मटेरियल कंज्यूमेबल इक्विपमेंट एंड लेबर। मान लीजिए कि आपका एक रेट आ रहा है कि आपने टेंडर किया, उसके बाद अब रेट थोड़ा ऊपर आ गया है, तो आपको अगर अवार्ड करना है, रीजनेबलनेस चाहिए, तो आप कर सकते हैं। अब इसमें इतना डीजल लगेगा, आज की डेट में डीजल 100 रुपए दाम पहुंच गया है, कंज्यूमेबल इतने महंगे हो गए लेकिन हैं। इसमें तो हम लोग एस्केलेशन क्लॉज ऑलरेडी दिए रहते हैं, जब वो काम स्टार्ट करेगा उसको तो एक्चुअल पे पेमेंट होगा, तो फिर अभी एस्केलेशन वहां कंसीडर क्यों करेंगे?
नहीं अभी नहीं करे, लेकिन आप एक रीजनेबलनेस को अगर डिफाइन आपको करना है, जैसे मान लीजिए आपने टेंडर एस्टिमेट जब बनाया था, एस्टिमेट बनाया 90 रुपए डीजल पे, ठीक है, और मतलब जनरली ऐसा हर बार नहीं होता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में ही होता है, मैं जस्ट एक उसका एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सेप्शन का ही कि, और आपको बिड टाइम एक्सटेंशन देना पड़ गया, मतलब 20 दिन आपने रखा, 15-20 दिन और दे दिया, करते करते आपका डीजल रेट बढ़ गया, 97-98 रुपए आ गया, और हुआ भी है 1-1.5 महीने में रेट बढ़े भी हैं कभी कभी बीच में तेजी से, तो जब तक उसने बिड किया तो हो सकता है आपके एस्टिमेटेड से 7-8% ऊपर आ गया हो, पर आप अपना जो है लास्ट अवॉर्डेड रेट अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो काफी ऊपर दिख जाएगा आपको। तो इस तरह की चीज को आप एक जस्टिफाई कर सकते हैं उस चीज में कि साहब ये रेट इतना बढ़ गया है, उससे आप अपडेटेड रेट करके। लेकिन हम लोग चूंकि सब एसओआर पे टेंडर करते हैं, तो जो थर्ड ऑप्शन है कंपनीज ओन शेड्यूल ऑफ रेट्स फॉर सच आइटम ऑफ वर्क, तो हम लोग का जो रीजनेबिलिटी का, चूंकि हम लोग एस्टिमेट इसी पे बेस है, सारी चीज इस पे, तो हम लोग इस थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, इसी के हिसाब से अपडेटेड रेट करते हैं, इसी के हिसाब से सब करते हैं। सर तो अगर जैसे डीजल का रेट तो तभी पकड़ते हैं जो लास्ट डेट ऑफ बिडिंग होता है, मतलब लास्ट डे ऑफ बिड सबमिशन जो होता है उसी का डेट को बेस प्राइस पकड़ते होंगे। जी जी हाँ। तो अगर सर वो स्टार्टिंग के जो डीजल के प्राइस थे और जो लास्ट डेट ऑफ बिड सबमिशन के प्राइस थे, दोनों में एक कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं, मतलब वो 1 रुपए या नहीं के बराबर है, और फिर भी हमारा अवार्डेड वैल्यू जो कोटेड वैल्यू है वो 10% हाई है या 9% हाई है, उस केस में क्या करेंगे फिर? देखिए उस केस में फिर आप ये करेंगे कि फिर आप जो ये चौथा ऑप्शन है रीसेंट रेट अवॉर्डेड एंड कंपनी से भी कंपेयर करेंगे, और उसके बाद में आपने देखा कि भाई रिसेंट तो हमारे 1-2% अबव ही गए थे या 2-4% माइनस ही गए थे, देन ऑन दैट केस यू आर वेरी मच फ्री टू कैंसिल द वर्क एंड रीटेंडर। और इस तरह के केस में, लेकिन देखिए अब इसमें एक रिस्क एसोसिएटेड होता है, रिस्क एसोसिएटेड ये है कि आपका काम तो अफेक्ट होगा ही होगा। यस सर। तो अभी जो मैंने शुरुआत में, आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले स्पेशल पर्पस लिमिटेड टेंडर का स्कोप बताया था कि है ना, अगर आपको भाई इस तरह के रेट अगर अनरीजनेबल आता है और आप रीटेंडर करते हैं तो 50 करोड़ तक का फटाफट स्पेशल पर्पस लिमिटेड टेंडर कर लीजिए। अब वो स्पेशल पर्पस लिमिटेड टेंडर आपने किया, पर उसकी कंडीशन है कि अगर आपने रीटेंडर किया तो आप उससे ऊपर का रेट फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 9% पे कैंसिल किया तो अब आपको 9% के नीचे का ही रेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगली बार। एग्जैक्टली यही तो सब्जेक्टिविटी है सर, क्या एक्सेप्ट करे या क्या ना करे। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर हम लोगों ने सीएचपी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 700 करोड़ का टेंडर था, और उससे जस्ट पहले जो एक सीएचपी का किया था डेट वाज 14% बिलो जो अवार्ड हुआ था, और जब ये वाला किया उस टाइम पे रिवर्स ऑप्शन का लास्ट टेंडर था वो हम लोगों का, तो वो 8% अबव आया, उसमें रिवर्स ऑप्शन भी ट्रिगर नहीं हुआ। तो इतना सब डिफरेंस था, लेकिन यही प्रॉब्लम हम लोगों को भी थी कि हमारे पास कैंसिल करने के लिए ग्राउंड नहीं है। हम 8% को आज की डेट पर अनरीजनेबल बोलेंगे और रीटेंडर हुआ और 9% आया, फिर क्या करेंगे? तो हम लोगों ने उसे रिकमेंड किया, पर हमारे बोर्ड ने उसको कैंसिल किया। बोर्ड बोला कि नहीं, ये आपका लास्ट अवॉर्डेड से बहुत ऊपर है, प्लस रिवर्स ऑप्शन नहीं हुआ, आप एक बार रीटेंडर कीजिए। तो देखिए फिर ये कॉल एक फाइनल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को लेना पड़ता है। Yes, sir. In CCL, we see in a turnkey projects, they follow the same civil manual of estimated cost plus 10%. हाँ, ये एससीसीएल में भी ये चीज मैं देखा हूँ, आगे टीसीआर में भी, लेकिन आप फिर दो मैनुअल को मिक्स कर दे रहे हैं। Yes, sir. Same. That's why this question is. हाँ कि भाई इसमें आपका वो नहीं है, क्योंकि आप अपने मन टर्की से में, हम तो क्योंकि देखिए सिविल मैनुअल प्लस 10% इसलिए लेता है क्योंकि सिविल के हमारे सारे मैक्सिमम एस्टिमेट डीएसआर पे बनते हैं, Certified rate भी होते हैं कंसेप्ट, प्लस वो क्लियर कट हमको पता है कि यहाँ इतना ही टन सरिया लगेगा, इतना ही बोरी सीमेंट लगेगा, इतना ही ये लगेगा। वी हैव देयर आर एक्चुअली क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, वी हैव डिफाइंड द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लगेगी हमारी तरफ से, जो डिविएशन है इतना रहेगा। तब पर टर्नकी में तो ऐसा हम लोग करते नहीं है। हम टर्नकी में तो हमने एक आइडिया दे दिया कि इतना इतना ये हमको रिक्वायरमेंट है, और इसलिए अब टर्नकी में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट द अपर लिमिट, यही अपर लिमिट होनी चाहिए। खैर एनीवेज, सिंस वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर अबाउट द टर्नकी, तो ये चीज होता है कि रेट में वो आपके पास ठीक है, जब अपर लिमिट नहीं है तो एक कॉल टीसी को लेना पड़ता है और सेकंड कॉल लेना पड़ता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को। भाई देखिए टीसी ने अगर अनरीजनेबल फाइंड करके रिकमेंड किया तो हो सकता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बोले कि नहीं आप रिव्यू कीजिए,
और टीसी अगर रिकमेंड करता है कि नहीं ये रेट रीजनेबल है, पर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको कैंसिल करने का पूरा वो पावर रखता है, वो कह सकता है कि नहीं ये रेट रीजनेबल नहीं, आप रिटेंडर कीजिए। तो वो एक कॉल है जो कि डीओपी के हिसाब से एक्सेप्टिंग अथॉरिटी और टीसी के ऊपर छोड़ दिया गया है। सर एक क्वेरी है हाँ बोलिए ना। कि सर जब एस्टिमेट की फाइल मूव होती है हाँ तो उसको अप्रूव होने में नियर अबाउट 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है। तो जो उस टाइम पे जब फाइल मूव हुई स्टार्ट हुई तब उसका जो बेसिस रहते हैं मींस एचपीसी डब्ल्यूपीआई और डीजल हाँ रेट ये सब पुराने रहते हैं। सपोज 3 मंथ्स के बाद वो अप्रूवल हुआ टेंडरिंग के लिए और हाँ उस टाइम पे रेट्स वगैरह काफी हाई हो जाते हैं हाँ कंपोनेंट। हाँ। तो उस केस में क्या करेंगे सर? फिर मींस उसी रेट पे तो टेंडर करना ये रहेगा सर कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा। देखिए तो जरूरी नहीं। जनरली क्या होता है कि हम लोग के अभी एक दो केसेस में हुआ है कि देखिए एचपीसी तो 6 महीने तक वैलिड रहता है ना। यस सर, कई मेनली बार, डीजल को लेके ही थोड़ा रहता है। हाँ कई बार क्या होता है कि प्रोसेस में चलते चलते वो नया वाला एचपीसी आ जाता है, यस सर। या डीजल का प्राइस हम देख रहे हैं काफी बढ़ रहा, बहुत वेरिएबल हो रहा है अभी। यस सर। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सब एक बार प्रोसेस फाइनल हो जाए, ये वो यस तो एंड में हम लोग कई बार रिवाइज भी करवाएं एस्टिमेट को। सर। हम लोग मतलब जहाँ भी जिस जिस स्टेज पे फाइल है वहां से बॉस लोग बात करके कि सर इसमें नया वेजेस आ गया है, इसे और अपडेट करना पड़ेगा, इस तरह से करके। क्योंकि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जितना हम क्लोजेस्ट टू द रियल एस्टिमेट रखें, यस सर। उतना बिडर को भी असेस करने में आसानी होगी और हमको रिकमेंड करने में भी आसानी होगी। ठीक। तो अगर आपका मान लीजिए बहुत पुराना हो गया, 3 से 4 महीने पुराना एस्टिमेट डीजल हो गया, और एक तो पहले तो आप अनऑफिशियली अपना डीजल प्राइस करंट देख लीजिए। मान लीजिए वो डीजल प्राइस 85 रुपए पे बना यस सर। और आज की डेट में डीजल प्राइस घूम फिर के वापस 85 से 90 के बीच हो गया, तो ठीक है, आप 2-4 रुपए में आप इतना नहीं तो है। कभी भी वेरिएट कर सकता है। यस सर। और अगर वही 100 रुपए हो गया जिसका इम्पैक्ट 4 से 5% आ रहा है एस्टिमेट में, यस सर। बस आपका वेजेस भी बढ़ गया है, तो वेजेस का 2% वेजेस का ले लीजिए, तो 7-8% अगर चेंज आ रहा है एस्टिमेट में, तो उसको आप, इट इज एडवाइजेबल आप रिवाइज करवा लीजिए भाई। ठीक है, उसमें थोड़ा सा वॉर फ्रंट पे थोड़ा तेजी से काम किया जाए। मीन सर अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से फाइल अप्रूव होके आ जाती है फॉर टेंडरिंग तो अगेन उसको रिवाइज करके फिर थ्रू मींस जो रूट था सेम रूट पे जाएगी फिर अप्रूवल के लिए। देखिए वो तो क्या है कि अब आप उस रूट को कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हाँ, आपको बाकी और कोई चीज चेक नहीं करनी। जी जी सर, सिर्फ एस्टिमेट ही चेंज सिर्फ, हाँ हुआ है। सिर्फ एस्टिमेट का अर्थमेटिक है, तो वो मान लीजिए आपने कंसर्न डिपार्टमेंट से कंसर्न डायरेक्टर के पास भेजा, कंसर्न डायरेक्टर से गया अप्रूविंग अथॉरिटी के पास, अगर वो अप्रूविंग तो वही कर दिए, और नहीं तो कंकरेंस अपना करा के बस उसको कैलकुलेशन ही चेक करना, और तो कुछ चेक करना नहीं है। यस सर। यस तो वो चीज की जा सकती है, बट चूंकि हम लोग टेंडर अगर डील कर रहे हैं तो ये हमारा काम है उनको बताना कि साहब जितना रियलिस्टिक करे उतना बेटर ठीक। है ना। ठीक ठीक। थैंक यू। फिर ये देखिए टेंडर अप्रूविंग अथॉरिटी का जो हम लोग का भी डीओपी है, कि अभी रेवेन्यू के केसेस में तो फुल पावर दे रखा है सीओ एफडीज को, कमिटी ऑफ फंक्शनल डायरेक्टर्स का, और बाकी 15 करोड़ तक का सीएमडी सब्सिडरी को है, 7.5 करोड़ का डायरेक्टर्स को, और 3.75 करोड़ का जनरल मैनेजर्स को है। तो जनरली हम लोग का जो एस्टिमेट है वो फुल पावर वाले कैटेगरी में फॉल करता है, ओबी और कोल का। बहुत कम होता है कि शायद ये कोई दो एस्टिमेट कोल ट्रांसपोर्टेशन का स्पेशली 15 करोड़ से नीचे जाए तो जाए, तो अदरवाइज मैक्सिमम सब हायर कैटेगरी में ही आता है। अब देखिए कॉशंस में क्या है कि ये बिड्स आर रिजेक्टेड ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड। अब देखिए लाइन पढ़ने में तो ठीक लगती है, पर फ्लिम्सी ग्राउंड कौन डिसाइड करेगा, ये भी एक सवाल आता है। और फ्लिम्सी ग्राउंड का एक डेफिनेशन है कि हो सकता है कि भाई हम अपनी तरफ से पूरा इंश्योर हो जाए कि हमने पूरी कोशिश की बिडर एलिजिबल हो जाए, पर वो हमारी एनआईटी को जो है फुलफिल नहीं कर पाया। तो वो एक चीज रहता है कि प्रॉपर, इसलिए जब क्लैरिफिकेशन हम लोग मांगते हैं, हो सकता है आप लोगों ने भी एनकाउंटर किया हो या मैंने कई केसेस देखे कि हम लोग पोर्टल पे बहुत, चूंकि हड़बड़ी रहती है, जल्दी फटाफट टीसीआर बनाते हैं, तो हम तो 4 शब्दों में लिख देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, और उसी चीज को एज इट इज पोर्टल पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जबकि उसमें लिखा है कि आप उसको बताइए आपके क्या कमी है, क्या आपको चाहिए। आई वुड एडवाइस कि जब भी आप किसी से शॉर्टफॉल मांगे, बहुत क्लियर कट उसमें लिखिए कि आपने ये अपलोड किया था, एज पर एनआईटी हमको ये चाहिए था, इसमें ये कमी है, कृपया इसको क्लैरिफाई कीजिए, रिसबमिट कीजिए। इस तरह से प्रॉपर, उससे क्या है ना कि आपको मान लीजिए कल को आपने अगर क्लियरली नहीं लिखा है तो वो आपको इसी बात पे चार्ज करेगा कि साहब आपने तो हमसे ये कहा था, ये हमने कर दिया, या आपने कहाँ लिखा था कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये कमी, क्योंकि आपके एनआईटी में लिखा है कि
the shortcoming should be clearly specified to the bidder. तो वो चीज प्लीज इंश्योर कीजिएगा। बाकी सिमिलर नेचर की डेफिनेशन चूंकि हम लोग के वर्क में बहुत क्लियर है, एक्सक्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, ओवरबर्डन, शेल, मिनरल एटसेट्रा, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, ये वो तो उसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं होता, पर जहां अगर कहीं हम लोग किसी तरह का वर्क स्पेशल डील कर रहे हैं तो उसको क्लियर कर देख लीजिए कि उसमें कहीं ऐसा ना हो कि उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, बिडर के हिसाब से कोई मीनिंग हो, आपके हिसाब से कोई मीनिंग हो, क्योंकि फिर वो पक्का लिटिगेश होगा मैटर। टीसीआर को जितना हो सके उतना डिटेल में डेलिब्रेशन दीजिए। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का जो नया डीओपी आया है सर, एरिया जनरल मैनेजर्स का, हाँ। वर्क्स एंड सर्विसेज के केस में 1 करोड़ जो है वो गुड्स के केस में भी है या सिर्फ ओनली वर्क्स एंड सर्विसेज में? देखिए ये रहा वर्क्स एंड सर्विसेज में 3.75 करोड़ है इनका टेंडर अप्रूविंग अथॉरिटी का। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सर। अच्छा, उसका देखिए मेरे को आइडिया नहीं है बस, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा, ठीक है अप्रूवल है ना। फिर ये क्वेश्चंस वाला तो जो मैं आपको बता दिया, और प्लस इट इज ऑलवेज बेटर कि आप, क्योंकि देखिए अभी फ्रीक्वेंटली कोल इंडिया में बहुत अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर महीने दो, अब तो खैर कम हो गए थोड़े जब से मैनुअल पूरा अपडेट हो गया, नहीं तो लास्ट ईयर से हर महीने में एक या दो अमेंडमेंट आते ही आते थे। यस सर। तो आप लोग हर एक डेट वाइज अमेंडमेंट का एक फोल्डर बना के रख लीजिए अपने पास, क्योंकि अभी जिन लोगों ने रेगुलर टेंडरिंग डील की पिछले 2 साल में जानते होंगे कि हम लोगों ने अगर 8-10 टेंडर किए हैं तो 3-4 टेंडर में कुछ कंडीशन होंगी, 3-4 टेंडर में कुछ कंडीशन होंगी। तो वो चीज बहुत क्लियर कट डिफाइन होनी चाहिए कि लेटेस्ट के हिसाब से ये अपना एनआईटी हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए एक ये पेज है विजिलेंस मैनुअल 2017 का सीवीसी का, उसमें भी जो सब बातें मैंने ऊपर बोली उन्हीं सबको और थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है कि, मतलब मैं एक बार जस्ट पढ़ दे रहा हूँ कि दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, टेंडर इवैल्यूएशन एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ससेप्टेबल टू मैनी अनइंटेंडेड एंड और इंटेंडेड irregularities. Some of the points to ensure tender evaluation in transparent, fair and open manner are as follows. Tender evaluation committee must be duly notified by the competent authority, ensuring that the members of the tender evaluation committee are competent to deal with the subject matter in keeping with the procurement manual. देखिए हम लोग की सबकी मैनुअल में लिखा है कि इतने वैल्यू तक के लिए कौन टेंडर कमिटी मेंबर रहेगा, तो ये इंश्योर कर लेना है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई बिलो डीओपी वाला आदमी हमने टीसी में बैठा रखा है। Evaluation of tender is done strictly as per pre-notified criteria. There is no inordinate delay in processing of tender for award, and preferably the tender is finalized within original bid validity period. 120 days का हमारा bid validity period है, तो हमको इंश्योर कर लेना है कि उसके अंदर अंदर हो जाएगी। Commission's guidelines on negotiation with the bidders are complied with. देखिए कमीशन की जो नेगोशिएशन के लिए गाइडलाइन है वो बहुत क्लियर है कि इट शुड बी डन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, वर्क का नेचर देखते हुए, और वो भी सिर्फ L1 के साथ आप कर सकते हैं। और वर्क के नेचर से मतलब है कि भाई ऐसा कोई काम है कि जैसे मान लीजिए जो कोई सेफ्टी का काम हो गया कि बिल्कुल इससे नहीं तो माइन में एक्सीडेंट हो जाएगा, या वाटर सप्लाई हो गया है कि लाइफ का मतलब जो है डिस्टरबेंस हो जाएगा, तो ये सब नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से जनरली नेगोशिएशन अवॉइड ही किया जाए। विजिलेंस भी यही कहता है कि इट शुड बी अवॉइडेबल, हाउएवर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। L1 इज नॉट इग्नोर्ड ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड। अब देखिए फ्लिम्जी ग्राउंड को स्ट्रेंथन करने के लिए वो जो मैंने आपको एक सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव की जो डेफिनेशन दिखाई थी जो हम लोग की मैनुअल्स में भी है, कभी कभी अगर हमको एक डिस्क्रिशनरी वो लेना पड़ रहा है तो हम उसको कोट करते हुए कह सकते हैं कि साहब इससे कहीं कोई मटेरियल डेविएशन नहीं आ रहा है उसके उसमें बिड में। और बाकी जो कंप्लायंस विद परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी ये सब देख लेना है। ये हम लोग का अवार्ड स्टेज तक हो गया। अब देखिए पोस्ट अवार्ड आज की डेट में मॉनिटरिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना हम लोग का ये टेंडर वाला पार्ट है, क्योंकि देखिए टेंडर पार्ट तो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, आपका पोर्टल पर रहता है, सबको पता है कि हाँ ये है, इसने ये पेपर दिया है, ये आप गलत एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप सही एक्सेप्ट कर रहे हैं। मॉनिटरिंग पार्ट पे आने से क्या है ना, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। जब ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है तो वहां गलती का भी स्कोप बढ़ता है और कंप्लेन का भी स्कोप बढ़ता है। कि आपने मान लीजिए किसी का अगर एक टेंडर की टाइमलाइन है कि आपको 21 दिन के अंदर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है और वो नहीं दे रहा है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मतलब इन केस ऑफ एनी कंप्लेन और एनी काइंड ऑफ वो आपको इट वुड बी डिफिकल्ट टू आंसर द अथॉरिटीज कि आपने क्यों नहीं एक्शन लिया। तो जितने जो टाइमली ऑब्लिगेशन वाले क्लॉजेस हैं मैनुअल के, अपने टर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, हैंडिंग ओवर साइट, कमेंसमेंट ऑफ वर्क, एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, इनको मतलब हम एटलीस्ट बिडर को रिमाइंड कराते रहें और उसका नहीं वो करने पे उसको प्रॉपर ड्यू कोर्स में उसको एक्शन लिया जाए।
नहीं तो ये क्या ना कि होता क्या है कि आप देखेंगे कि प्रैक्टिस बनती चली जाती है, फिर आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगे वो यही कहेगा साहब उसके तो 100 दिन बाद जमा किया था, वो तो 150 दिन बाद जमा किया था। हम लोग में अपने यहाँ पे हम लोगों ने 2016 में किया था एक चीज कि 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने टाइम से नहीं जमा किया था, हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। बहुत दिक्कत, उन्होंने कंप्लेन किया, ये हुआ वो हुआ, सब रिप्लाई दिए, लेकिन उसका एक हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि हर आदमी ने एलओए मिलने के उस टाइम पे 28 दिन की लिमिट रहती थी, 28 दिन के अंदर अंदर बाकी जितने 4-5 साल तक सबने टाइम से पैसा जमा किया। सर हम्म अभी एक रिसेंट सर्कुलर है, सर्कुलर नहीं बोलेंगे, लेटर कम्युनिकेट हुआ सारे एचओडीज ऑफ सब्सिडरीज, जिसमें वो बोला गया है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को अगर 21 डेज में अगर कोई बिडर नहीं जमा कर पाता है तो हाँ 40 डेज का और टाइम देना चाहिए। देना चाहिए ये नहीं लिखा है उसमें, उसमें लिखा है कि केस टू केस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए। हाँ ऑलमोस्ट सर उसमें उसका मीनिंग वही है कि आप ऑलमोस्ट मीनिंग वही है, उसका मीनिंग वही है। वो देखिए वो लेटर क्यों आया था, मैं उसका आपको जेनेसिस बताता हूँ कि अभी जब सेकंड वेव ऑफ कोरोना के टाइम में कई बिडर्स के बैंक अफेक्ट हो गए थे, ये सब हो गया था, तब उस टाइम पे ये अराउंड मई में ये अमेंडमेंट आया था। उस मई टाइम का पे है 30 मई हाँ कि जो 30 मई कोविड का। पीरियड में उनको रिलैक्सेशन दे दिए, फिर उसके बाद फाइनली इन्होंने इसको जून या जुलाई में ये कर दिया कि 14 डेज का। हाँ 14 डेज है ना, तो देखिए अपन को अप्रोच ये रखना है कि हमारे लिए तो 21 दिन है, और आपको बिडर को भी यही डरा के रखना है कि 21 दिन ही है। 14 मतलब सब्जेक्टिव है, हो सकता है कोई ना भी एग्री करे। तब आप जब आप 21 दिन के लिए प्रेशराइज करेंगे तब वो जाके 14वें दिन जमा करेगा यानी। नहीं सर, अगर सपोज ऐसा केस आता है कि 14 हाँ डेज में किसी के अर्जेंसी थी और उसको हम हाँ लोग अलाउ करते हैं, हाँ तो उसका अप्रूवल सीएफडी लिखा हुआ है, फंक्शनल डायरेक्टर्स, कमिटी ऑफ फंक्शनल डायरेक्टर उसको अप्रूव करेगी। यस सर, लिखा हुआ है उसमें। हाँ ठीक है फिर। तो हमारा प्रोसीजर ही इतना लंबा है कि अगर वो एक एरिया से आ रहा है तो एरिया से जीएम, जीएम से एचओडी, उसके बाद डायरेक्टर, फिर सीएमडी, फिर कंपनी सेक्रेटरी, और फिर उसका जिस दिन ईसीएफडी का मीटिंग है उसके हाँ बाद उसका कम्युनिकेशन, ये 14 डेज इसी में चला जाएगा। तो फिर 14 डेज के बाद हम लोग कंसीडर करें या ना करें, अप्रूवल आने के बाद ऑलरेडी 20 दिन पार हो गए। यस आई एग्री। तो देखिए इस तरह के केस में जो टाइम बाउंड केसेस हैं उसमें तो फिर हम इस प्रोसीजर को हमको कम खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे आके अगर 14 दिन बीत गए वो तब भी अगर जमा नहीं किया तब तो यस वैसे सर, ही चार्ज कर सकते हो। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, पता चला कि कम्युनिकेशन आते आते ही 20 दिन हो गए, तब उस केस में एक्सेप्ट करें या ना करें। नहीं तब आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि उसका तो 14 दिन का पीरियड तो वैसे ही चला गया। तो फिर वो बोलेगा कि डिले आपके पार्ट में था क्योंकि आपके अप्रूवल में टाइम लगा, हमारे यहाँ से एंड पे कोई दिक्कत नहीं थी। क्लॉज में ये कहाँ लिखा है कि हम आपको 14 दिन का परमिशन ग्रांट करेंगे तभी आप जमा कीजिएगा। 21 + 14 में आपको करो जमा, लाओ तो सही बना के। बहुत वो मैं आपका प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि वो प्रैक्टिकली वो तो यही बोल देगा कि भाई नहीं, मान लीजिए सर 21 दिन पार हो गया, उसने 23वें दिन जमा किया, 22वें दिन जमा किया, ठीक है सर, जमा कर दिया उसने, हमने अप्रूवल के लिए भेज दिया हेडक्वार्टर, हाँ ठीक है। फिर वहां से रिजेक्ट होके आता है और वो भी 20 दिन बाद आता है, तो 20 दिन तक वो केस पेंडिंग रहेगा, उसका ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ नहीं तो ऑर्डर इशू कर सकता है अगर आपको मान लीजिए एट द एंड ऑफ द डे कंप्लेंट। देखिए 21 दिन के बाद अब आपके हाथ में नहीं है उसको एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना। यस सर। अब अगर उसने 23वें दिन भी जमा किया और आपकी कंप्लेंट अथॉरिटी कहती है नहीं साहब इसको रिजेक्ट करो, तब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। और लीगली और वो आप टेंडर बाउंड कैंसिल हो नहीं है जाएगा। उसको एक्सेप्ट करने के लिए। भाई अगर केस टू केस है तो, लेकिन फिर आपको ये देखना है कि एक्चुअली बीइंग पब्लिक सेक्टर हम लोग पार्शियलिटी ना कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आज हम किसी का बोल दें कि नहीं हम तुम्हारा 23वें दिन नहीं लेंगे और अगले दिन किसी का 28वें दिन केस टू केस हाँ पे वो अभी केस टू केस लिखा वही है, वैसे और वो केस टू केस हमारे लिए सरदर्द ना हो जाए। यस सर। हाँ ये हमको एटलीस्ट देख लेना है। या फिर भाई कोई वैलिड रीजन हो कि लॉकडाउन लग गया हो, या बहुत फेस्टिवल का कई बार फेज ऐसा आता है कि 20 में से 10 दिन बैंक की छुट्टी रहती है, तो नो डाउट कुछ कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन जनरली कोई 14 दिन के लिए टेंडर कैंसिल करने के फेवर में कम ही लोग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, लोग हो भी सकते हैं, डिसीजन दे भी सकते हैं कि नहीं हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बट यह है कि इस तरह के प्रोसीजर में मतलब वो जो अपना बाकी में अप्रोच रहता है कि अपन फाइल भेज के अब उसकी मत्थे वो नहीं होगा, वो अपने को अपनी मत्थे पूरा जब तक एंड तक हो नहीं जाए।
क्योंकि वो अगर नहीं होता है तो जो डीलिंग डिपार्टमेंट होता है परेशानी उसी की होती है हमेशा। एग्जैक्टली यही सर। बिडर को भी वही रिप्लाई दे सारे, और ऊपर भी वही रिप्लाई दे कि क्यों नहीं हुआ, क्या कैसे नहीं हुआ। तो इसलिए इस चीज में बहुत हम लोगों को मतलब एहतियात, मतलब आई वुड सजेस्ट हम लोग करते हैं कि जैसे हमने टेंडर अवार्ड किया, आप एक हफ्ते बाद उसके एक रिमाइंडर लेटर दो कि आपको किस दिन में पैसा जमा करना ही करना है। फिर आप वो 4-5 दिन बाद एक और दो। एटलीस्ट 3-4 लेटर देने से उसका फायदा क्या है ना कि कल को आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना भी पड़ा तो लीगली आपका पोजीशन स्ट्रांग रहेगा। बोलोगे साहब हमने इसे 4-5 बार रिमाइंड कराया, करो नहीं तो एक्शन ले लेंगे, करो नहीं तो एक्शन ले लेंगे। क्योंकि इस तरह के केस में इट इज बेटर कि हम वर्स्ट के सिनेरियो सोच के चलें कि हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा, और उसी हिसाब से अपना पेपर वर्क स्ट्रांग रखें। तो बाद में देखिए एक्सेप्ट अगर किसी ने कर लिया तब तो वेल एंड गुड, तब तो सारी चीज को जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। बट प्रॉब्लम जैसा आपने पेक्यूलियर केस बताया वैसा हो गया तो बहुत दिक्कत होगी। एनीवेज फिर उसके बाद जो साइट रिलेटेड लोग हैं वो लोग भी इंश्योर करें कि भाई टाइम से हैंडओवर कर दें, साइट कमेंसमेंट टाइम से हो जाए। कई बार क्या होता है कि स्पेशली हम लोगों के केस में बिडर कोशिश करता है कि साइट हैंडओवर लेट हो ताकि वो तब तक अपना रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए और टाइम उसे मिल जाए, और उसका कमेंसमेंट लेट शुरू होगा तो उसका मंथली शेड्यूल लेट फाइनल होगा, लेट फाइनल होगा तो पेनल्टी कम कटेगी। तो ये सब चीजें क्या है ना कि बाद में कोई पोस्ट फैक्टो देखता है, पॉइंट आउट करता है सीएजी वगैरह या कोई भी, तो फिर दिक्कत होता है रिप्लाई करने में। और ये मान के चलिए कि मतलब आई डोंट नो आप लोग सब अलग अलग डिसिप्लिन के होंगे, बट हम लोग के स्पेशली ओबी और कोल के केस में ऑडिट जब भी होता है तो ऑलमोस्ट सारी फाइल वो चेक करता है, और स्पेशली 2 तरह की फाइल वो आके हमेशा सबसे पहले मांगता है। सबसे पहले उसका नजर रहती है कितने डिस्प्यूट के केस हैं, आर्बिट्रेशन में कौन सा केस चल रहा है, कोर्ट केस में कौन सा केस चल रहा है, वो सब हमको लिस्ट बना के दे दीजिए, और उन्हीं में से पिक करता है सबसे पहले वो। सेकंड कैटेगरी ऑफ फाइल्स वो लोग पिक करते हैं जिसमें आपका टाइमली काम खत्म नहीं होता है, डिले होता है। तो इसलिए इस तरह की चीजों को हम लोग जितना हो सके अपनी तरफ से एटलीस्ट पेपर वर्क पूरा रखें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, नो डाउट हैंडल करेंगे, डिस्प्यूट भी होगा, डिले भी होगा। भी बहुत मुश्किल होता है कि कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा मिल जाए और काम सब अच्छे से हो जाए। मतलब वो ये अगर हो जाए तो कहना ही क्या, नहीं होता तो मान के चलना है कि नहीं होगा। तो इसलिए अपना पेपर वर्क हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। सर टाइम एक्सटेंशन हम लोग इसमें मतलब ओबी के केस में किस मैनुअल से फॉलो करते इसी हैं? में चैप्टर 6 के चैप्टर 6। अभी इसमें क्या हो गया, अभी ये भी चेंज हो गया। देखिए पहले तक ये था कि प्रोविजनल टाइम एक्सटेंशन अगेंस्ट इंटरेस्ट इंडियन इंचार्ज को पावर था देने का। यस सर, ये अभी सिविल मैनुअल में भी है। हाँ, अभी क्या हुआ है, ओबी के केस में चेंज हो गया है। अब यहाँ हेडक्वार्टर आएगी फाइल। ओके। हाँ, और प्लस पहले ये क्लॉज नहीं था, अब ये क्लॉज हो गया कि अगर हिंड्रेंस भर के अगेंस्ट का जितना एक्सटेंशन देना है दे दीजिए, उसके बाद किसी तरह का कोई एक्सटेंशन नहीं। अगर क्वांटिटी बच रही है आप काम खत्म कीजिए, अब नहीं करानी उससे क्वांटिटी। ओके। तो ये सब अभी मतलब जो भी लोग अभी हैंडल कर रहे हैं, आई वुड एडवाइस कि जो भी एनआईटी अभी आ रही है नहीं है, चाहे एग्जीक्यूशन स्टेज पे या कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में, एक एक क्लॉज कोई भी स्टेप लेने से पहले ये अज्यूम करके नहीं चलना है कि यही चलता था, क्योंकि सब बदल गया है। यस सर, डेली चेंजेस हो। हाँ, छोटे छोटे चेंजेस ही सही पर काफी चेंजेस हुए, और हर एक इनफैक्ट हर एक क्लॉज में चेंज हुआ है। आपके डेविएशन से लेके आपके पेमेंट टर्म से लेके ये एलिजिबिलिटी वाली सब चीज चेंज हुई है। तो इसलिए सब लोग उस चीज को पढ़े। प्लस देखिए ये क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी एकदम से बहुत ही बर्निंग टॉपिक हो गया है। अभी सीआईएल से भी इसका क्या ना रिपोर्ट मांगी जा रही है कि इसको मिनिस्ट्री भी मॉनिटर करेगा कुछ एक सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स को, कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से टाइम से क्लोज नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। ये सब चीजें अब शुरू होंगी इसमें। तो आप लोग अगर कोई टाइम से आपका काम खत्म हो गया है या कुछ है, उसको फटाफट आप लोग क्लोजर, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है, क्लोजर पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसको जल्द से जल्द फाइनल बिल होके क्लियर होके खत्म हो जाए, ताकि काम खत्म हो जाए, है ना। सर टाइम एक्सटेंशन के बारे में इसमें तो अभी एनआईटी में लिखा है कि टाइम एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड बाय द टेंडर अप्रूविंग अथॉरिटी। हाँ, तो अगर सपोज टेंडर सीएफडीज में अप्रूव हुआ है, अवार्ड हुआ है, तो मीन हाँ, टाइम एक्सटेंशन के लिए फिर सीएफडी ही जाएगा। हाँ, अगर उसमें देखिए वो अगर लिखा है कि इन केस इट इज सीएफडी तो सीएमडी तो बात अलग है, और नहीं लिखा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है लिमिटिंग टू सीएमडी वाला इसमें नहीं कहीं दिख रहा है। नहीं है तो फिर वही जाएगा। नहीं क्योंकि अब तो हम लोग का अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं, लास्ट ईयर तो आया ही अमेंडमेंट, तो अब ये तो आएगा 2-3 साल बाद केस।
तो उसमें नहीं है तो फिर नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए डीओपी और ये सब चीजें जो होती हैं वो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता, है तो है, नहीं है तो नहीं है, है ना। तो फिर ये हो गया आपका टाइमली सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें रूल है कि 21 डेज में दे देनी है। ये एक्चुअली मैंने 5 लिखा है, अभी 3 चल रहा है, बट वो 31 के बाद हो सकता है फिर 5 हो जाएगा। 10 दिन बाद एलओए के इशू के अंदर उसे काम शुरू कर देना है या फिर हैंडिंग ओवर साइट से। तो वही है कि फिर लोग इसमें हैंडिंग ओवर साइट को डिले करते हैं, जो कि अगर आपकी साइट क्लियर है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। भाई साइट आपकी क्लियर है तो हैंड ओवर में डिले क्यों हो रहा है। और अगर नहीं वो कमेंस करता, 15 दिन का नोटिस दीजिए और एक्शन लीजिए। मंथली इसमें पहले क्या होता था कि म्यूचुअली एग्रीड क्वांटिटी हर बार हो जाती कि हर महीने आपको इतनी क्वांटिटी करनी है, अगर कॉन्ट्रैक्टर उससे कम अचीव करता था तो उसको पेनल्टी लगती थी। और फिर उसके पास 2 ऑप्शन होते थे उसको रिलीज कराने के। अगर वो फाइनेंशियल ईयर में अपनी पूरी क्वांटिटी मेकअप कर लेता था शॉर्टफॉल, तो उसको रिलीज हो जाता था, नहीं तो काम खत्म होने के बाद एक 6.3 क्लॉज रहता था कि कंपनी में वेव द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट ऑफ द केस इफ द एंटायर क्वांटिटी इज कंप्लीटेड विद इन टाइम, इस तरह से करके। तो अभी वो क्लॉज हट गया मैनुअल से। अभी ये है कि आप मान लीजिए इस मंथ आपने क्वांटिटी की, आपने कुछ कम क्वांटिटी की, तो आपको वो काटेगा नहीं। अगर 70% से ऊपर किया है तो पैसा नहीं काटेगा, नोट कर लेगा। दूसरे मंथ भी वो आपका नहीं काटेगा अगर 70% से ऊपर है तो। पर अगर तीसरे मंथ में आपने नहीं मेकअप किया तो जितना फाइनल जो शॉर्टफॉल आएगा वो उतना शॉर्टफॉल का पैसा कट जाएगा, और अब वो आपको कभी वापस नहीं होगा। अब उसमें रिलीज का कहीं कोई स्कोप नहीं है। तो ये एक चीज अभी अच्छा कर दिया कि अब डिस्क्रिप्शन का इसमें हटा दिया पेनल्टी रिलीज करने का। अभी तक क्या था कि डिस्क्रिशनरी क्लॉज था कि डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट ऑफ द केस, तो वो एक थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता था कि हमको लगता है इस केस में मेरिट, हमको इस पे हम लोग ऑलरेडी 3-4 डिस्प्यूट झेल सर रहे हैं। हाँ सर बोलिए। इसको थोड़ा इलाबोरेट करके समझाइए ना सर, नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा, मतलब किस चीज को, पेनल्टी का कैलकुलेशन को लेके। जी सर। हाँ देखिए पेनल्टी कैलकुलेशन का क्या है ना कि देखिए 2 स्लैब होते हैं कि एक होता है कि अगर आपने 80% से ऊपर किया तो 10% ऑफ द शॉर्टफॉल पे कटता था, और 80% से नीचे रहता था तो 20% ऑफ द शॉर्टफॉल क्वांटिटी पे पेनल्टी कटता था, उतना अमाउंट विदहेल्ड कर लिया जाता था। अभी भी क्या है कि मान लीजिए अपने इस महीने काम किया, हमने हमको 10 लाख करना था, हमने 9 लाख किया, तो 1 लाख का 10% का अमाउंट हम लोग नोट करके रख लें, काटेंगे नहीं उसके बिल से। दूसरे मंथ भी हम 9 लाख किया, फिर यही करेंगे, नोट करके काटेंगे नहीं बिल से। तीसरे मंथ में अगर उसने मेकअप नहीं किया, 2 लाख का टोटल शॉर्टफॉल हो गया, तीसरे मंथ में अगर उसने मेकअप नहीं किया और मान लीजिए उसने मेकअप सिर्फ आधा ही लाख, आधा लाख ये किया वो, तो 1.5 लाख का फिर हम पेनल्टी काट लेंगे। और अब जो वो कटेगा पेनल्टी तीसरे मंथ में जाके 1.5 लाख शॉर्टफॉल का, वो अब उसको कभी रिलीज नहीं होगा, वो अब कट गया, वो दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पेनल्टी एंड दैट कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन पेनलाइज्ड बाय दैट मच अमाउंट। अब इसमें क्या है ना कि उसके पास पेनल्टी रिलीज कराने का या पेनल्टी अपना शॉर्टफॉल मेकअप करने का सिर्फ 3 ही महीने का मौका है। अगर वो इसमें करता है तो ठीक, और नहीं तो उसको पेनल्टी दोबारा नहीं मिलेगा। ये चीज पहले के उससे अलग होगी। पहले उसके पास 2 मौके होते थे, या तो फाइनेंशियल ईयर में मेकअप कर ले या एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में मेकअप कर ले। तो अभी ये एक कंडीशन चीज 3 चेंज महीने के हुआ अंदर करना है। जी, ठीक है सर। है ना। फिर ये रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रेंस, तो ये साइट पे चूंकि मेंटेन होता है इसमें, लेकिन जो भी अगर साइट पे जो लोग मेंटेन कर रहे हैं, साइट वाला काम कर रहे हैं, तो प्लीज इसको श्योर कीजिए कि प्रॉपरली रिकॉर्ड वगैरह बहुत वेल प्लेस हो। क्योंकि कई बार मतलब होगा कि किसी ने एकदम से मांग लिए जाएंगे कि दिखाइए आपका कहाँ है क्या है, तो इसको डे टू डे प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। फिर देखिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में डिविएशन आते हैं तो एक 2-3 तरह का में डिविएशन होता है। एक होता है रीअप्रोप्रिएशन, एक होता है एडिशनल क्वांटिटी, और एक होता है फोरक्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। रीअप्रोप्रिएशन अब तो खैर मैनुअल ने ही अलाउ कर दिया है, बहुत क्लियर कट लिख दिया कि अगर आप माइन में जगह नहीं दे पा रहे हैं तो माइन में दूसरी जगह सिमिलर टेक्निकल पैरामीटर्स लीड लिफ्ट में दे सकते हैं विदाउट एडिशनल बेनिफिट टू द कॉन्ट्रैक्टर करके। और इनफैक्ट अब तो ऐसा प्रोविजन भी आ गया है कि आप दूसरी माइन में भी जाके करा सकते हैं अगर आपको बहुत जरूरत पड़ रही है। तो वो अब जो भी पहले रिप्रोप्रिएशन के लिए बहुत क्लियर कट डिफाइन गाइडलाइन नहीं थी, बस इतना था कि कंपनी थ्रू इट्स इंजन चार्ज कैन ऑर्डर द डेविएशन और सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, इस तरह से अब बहुत क्लियर कर दिया कि आप ये रिप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं वो भी क्लियर है।
एडिशनल क्वांटिटी का तो हमेशा से ही रहता था, अभी भी है, और अब तो डिफाइन कर दिया 30% तक आप एडिशनल क्वांटिटी दे सकते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपका नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं टाइम से फाइनल हो रहा है तो। और फोरक्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन फोरक्लोजर थोड़ी रिस्की चीज होती है। मैंने भी आपको बताया था कि सीजी वाला आता है, 2-3 तरह की फाइल बनता है, उसमें एक फोरक्लोजर का भी कैटेगरी होती है। सबसे पहले पूछता है आपका उसके मतलब रिटर्न में उसके डाटा मांगने कॉलम में होता है कि कितने केसेस फोरक्लोजर के। तो ये सब चीजें फोरक्लोजर में क्या होता है कि हमारे पास बिल्कुल ये होना चाहिए, दो चीज इंश्योर कर लेनी चाहिए कि भाई कोई स्कोप ही नहीं है वो काम कराने का बाकी का, और दूसरी बात हम उस काम को फ्यूचर में भी नहीं कराएंगे। ऐसा सर ना एक हो कि क्वेश्चन है आप एडिशनल क्वांटिटी से। हाँ हाँ सर एडिशनल क्वांटिटी 30% जो अभी आया है वो उसको फिर से वो मतलब एस्टिमेट को अप्रूव कराना पड़ता होगा जैसे नॉर्मल एस्टिमेट अप्रूव कराते हैं? देखिए उसके लिए कहीं कोई वो नहीं है कि मेथोडोलॉजी की ऐसी ही कराना है, क्योंकि नया एस्टिमेट तो है नहीं वो इसी में। नहीं। लेकिन हाँ ये है कि उसके जो 3-4 चीजें हैं, जैसे आपका टेक्निकल पैरामीटर है, लीड लिफ्ट है, ये सब है, तो ये तो आपको कंसर्न टेक्निकल डिपार्टमेंट से कराना ही पड़ेगा। और एडिशनल क्वांटिटी के लिए हमारे पास जो नया डीओपी में क्लॉज है 6.2 आई गेस, हाँ तो उसके हिसाब से 6.2 का है सर। उसमें अगर एडिशनल क्वांटिटी का पावर उनके डीओपी एज पर डीओपी वो 6.2 से कवर हो रहा है, बट एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एनेक्सर 3 से वो कवर नहीं हो रहा, तो फिर नहीं तो इसमें तो क्या ना, जो ये ओबी और कोल में हम लोग का जो 5 में है एडिशनल क्वांटिटी वाला सब्स्टिट्यूशन डिप्रोपोर्शन और ये वाला डेविएशन में, और इसमें तो सीओएफडी को दे रखा है पावर। देखिए इन एनी केस अगर आपका डीओपी से ऊपर जा रहा है तब तो जाहिर सी बात आपको हायर अथॉरिटी के पास भेजना ही पड़ेगा। तो जैसे 6.2 में लिखा है कि हाँ कोई भी वर्क जिसकी क्वांटिटी मोर देन 10% अगर अप्रूव करानी है तो वो हम नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हायर अथॉरिटी की मान लेते हैं डायरेक्टर हो सर, आपके केस में नहीं होगा लेकिन मान लेते हैं डायरेक्टर सर है, और ठीक है। डायरेक्टर सर की डीओपी ही वहां पे 15 करोड़ से कम है 30%, हाँ तो उस केस में फिर वो नेक्स्ट का नेक्स्ट चला जाएगा। नहीं लेकिन एक बात बताओ बॉस कि अगर आपका 30% क्वांटिटी अगर आपकी 15 करोड़ से ऊपर है, जाहिर सी बात है कि आपकी ओरिजिनल अप्रूविंग अथॉरिटी ऑलरेडी बहुत ऊपर होगी। हाँ इसमें तो आपके केस में सर ऐसा है। मैं आपके केस में बता रहा हूँ ना कि मान लीजिए अगर 30% किसी का अगर 15 करोड़ आ रहा है तो ओरिजिनल काम ही 50 करोड़ के ऊपर का होगा फिर। हाँ ठीक है। और ऑटोमेटिकली उसकी टेंडर अप्रूविंग अथॉरिटी या तो ईसीएफडी होगी एम्पावर्ड कमिटी, या फिर हो सकता है ये हाँ 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 सर बिल्कुल। ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा। सर उस केस में एडिशनल क्वांटिटी जो होगा उनसे एक हायर अथॉरिटी कराना होगा। हाँ फिर उनसे हायर अथॉरिटी आपको कराना होगा। देखिए फिर तो बोर्ड के पास तो अल्टीमेट फुल पावर आ ही जाएगा जो हाँ ऊपर तक बिल्कुल सर। है ना। तो और देखिए डीओपी के केस में जब भी कभी भी कंफ्यूजन हो, इट इज ऑलवेज बेटर टू गो टू द हायर अथॉरिटी, क्योंकि इसमें लोअर ऑफ द टू नहीं चलता ना, इसमें तो हायर ऑफ द टू चलेगा। ये डेविएशन का हो गया। फिर पीनल एक्शंस का आपका तो देखिए मंथली डिडक्शन जो पेनल्टी का होता है, अभी एक प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन में एक अच्छा प्रोविजन आ गया है कि आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव कर रही है तो आप उसको फ्यूचर पार्टिसिपेशन के लिए 1 साल के लिए मिनिमम बैन कर सकते हैं, और उसका प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी चलता रहे। मतलब द ओनली पेनल्टी द पीनल एक्शन दैट कॉन्ट्रैक्टर विल रिसीव इज कि वो फ्यूचर बिडिंग नहीं कर पाएगा, बाकी वो अपना जो काम कर रहा है करता रहे, हमारा काम भी इफेक्ट नहीं होगा और उसको पेनल्टी भी लग जाएगी। ये एक स्टेप है जो कोई इसको कई लोग इन्वोक भी कर रहे हैं। प्लस एक पार्ट रिस्क इन कॉस्ट टेंडर करा सकते हैं दूसरे, अगर उसका थोड़ा मान लीजिए उनको 10 मिलियन करना है उतना धीमे कर रहा है तो हम 5 मिलियन उससे लेके किसी और से कराएंगे, पैसा उससे लेंगे उसका। लास्ट हमारा क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का देखिए जो क्लॉज है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड नोटिफाइंग द सेम बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द इंजीनियर इन चार्ज, completion certificate shall be issued by engineer in charge only in the event the work is completed satisfactory in every respect. Payment of final bill shall be made on completion of the contract and refund of security deposit shall however be made as per relevant clause of the contract. तो ये चीज इंश्योर उनको कर लेनी है कि जैसे काम खत्म हो, फाइनल मेजरमेंट हो जाए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करें, उसका फाइनल बिल पे करें, उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी टाइम से लौटा दें और 180 दिन बाद उसका रिटेंशन मनी लौटा दें। तो देखिए ये तो कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजर हो गया, पर कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट्स भी आते हैं। तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के अलग अलग स्टेज है। सबसे पहले उसको इंजीनियर इंचार्ज लेवल पे डिस्प्यूट सेटल करना है, प्रोजेक्ट लेवल पे।
वहां पे नहीं सेटल होता तब एक हेडक्वार्टर पे कमिटी बनेगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद भी नहीं सेटल होता तब वो आर्बिट्रेशन में जाएगा, तब भी अगर हमको दिक्कत है उसको दिक्कत है तो कोर्ट में जाएगा। तो ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट में हमको देख लेना है कि ये पूरा मतलब ये सारे स्टेजेस फॉलो हुए हों तब हम अगले स्टेज पे जाए। कई बार क्या अगर होता है कि हाँ बोलिए। सर अगर कोई बिडर ये जो रूट फॉलो नहीं करता और डायरेक्ट कोर्ट में चला जाता तो कोई एक्शन ले सकती है मैनेजमेंट उसके अगेंस्ट में? नहीं, मैनेजमेंट कोर्ट में जैसे हम लोग के केस में हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्टर ने डायरेक्ट कोर्ट में चला गया था वो, तो हमने कोर्ट में सबमिट किया कि अपने रिप्लाई में कि साहब ये हमारे में तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का ऑलरेडी क्लॉज है। यस सर। और उसको तो फर्स्ट सिस्टम में यहाँ आना चाहिए था, कोर्ट ने उसका रेट पिटीशन खारिज कर दिया। नहीं वो तो सर कर दिया, बट कोई मैनेजमेंट कोई पैनल एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट में? देखिए यार, अब वो जनरली रेट पिटीशन में जाता है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में। यस सर। अगर वो उसको इन्वोक कर रहा है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो, उसको लेटर वेटर दे सकते हो कि वो चीज आपको कोर्ट में सपोर्ट करती है। कि कोर्ट क्या ना सीधे वन साइडेड मतलब एक ही बार में डिसीजन दे देता कि आप जाइए कंपनी लेवल पे पहले सेटल कीजिए, जब वहां नहीं हो आर्बिट्रेशन में नहीं हो तब यहाँ आइए। अभी अभी तो रिसेंट केसेस में कोर्ट केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं टेंडर्स पे, इसीलिए कि डायरेक्ट मींस टेंडर ओपन होने से पहले ही कोर्ट केस हो जा रहा है। अच्छा ओके, तो उस केस में तो देखिए फिर आप उसमें जाइएगा आईएम वाले पे। अगर किसी ने इंडिपेंडेंट असेसमेंट लिखा नहीं तो अगर आपके में आईएम वाला एप्लीकेबल है क्लॉज, वो तो सर बिलो 5 करोड़ एप्लीकेबल नहीं है जैसे। हाँ तो फिर दिक्कत नहीं। तो आईएम वाले में क्या ना ये लिखा हुआ है कि आप कोर्ट में जाने से पहले आईएम के पास जाओगे। यस ये सर। वो साइन करता है इंटीग्रिटी पैक्ट में। हमें इस बात पे भी एक बार एक बिडर को हुआ था कि वो कोर्ट में गया था, तो हमने ये कहा था कि अब उसने आईएम के पास भी गया, पैरेलली कोर्ट में भी चला गया, तो हमने कोर्ट में यही प्ली लिया कि एज पर इसने इंटीग्रिटी पैक्ट सबमिट किया था, उसमें अभी आईएम का रिपोर्ट आया नहीं, उससे पहले कोर्ट में कैसे जा सकता है। तो खैर ये सब चीजें आपको एक बार कोर्ट चला गया तो फिर मैटर क्या है ना, कोर्ट से ही वो होगा। आपको कोर्ट को ही रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा, कोर्ट आपके रिप्लाई के बेसिस पे उसके खिलाफ जो डिसीजन देना देगा अपना कि नहीं आपका यहाँ मैटर यहीं पे, हाँ हम क्वैश करते हैं आपका पिटीशन, आप सीधे जाइए पहले कंपनी लेवल पे बात कीजिए। और ये हम लोग क्या हुआ है 2-3 केसेस में। नहीं अभी सर सैंड ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर्स में पर्टिकुलरली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ये ओबी टू सैंड वाले में सर? ये ओबी टू सैंड प्रोसेसिंग वाले में नहीं सर, सैंड ट्रांसपोर्ट अंडरग्राउंड स्टोइंग के लिए जो रिवर। ओके नहीं तो आपका किस स्टेज पे आ रहा है कि मतलब टेंडर खुलने से पहले कि अवार्ड के बाद? नहीं सर, खुलने से पहले, टेंडर ओपन ही नहीं हुआ, उसी में स्टेटस को मेंटेन का ये आ गया रिट पिटीशन। ओके ओके, तो खैर अब तो थोड़ा स्पेसिफिक केस हो गया, वो तो बिना केस देखे तो कमेंट नहीं कर सकते कि क्या चीज है क्या नहीं है। बट जनरली एट द एग्जीक्यूशन स्टेज पे तो उसको ये पूरे प्रोसीजर फॉलो करना है। यस सर, उसमें तो है ना। तो और कोई किसी का क्वेरी हो तो फिर, वरना हम ये सेशन अभी क्लोज करते हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि रेगुलर तो मैं लेता नहीं। मोहित एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर ये जो पेनाल्टी हम लोग काटते हैं कॉन्ट्रैक्टर का, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो मंथली क्वांटिटी है नहीं कर पाने से, हाँ तो पहले एनुअल था, फिर फाइनेंशियल ईयर पे हुआ, उसके बाद अभी जो आप बोल रहे थे सर क्वार्टरली हो गया है, या इसका कुछ सर्कुलर आया है सर? हाँ ये तो मैनुअल में अमेंडमेंट आ गया है, सर्कुलर नहीं। दिस हैज कम इनटू द मैनुअल, जो हम लोग का ओबी और कोल का जो मैनुअल है उसी में वो चीज आ गया है। सर ये क्वार्टरली भी फाइनेंशियल क्वार्टर कुछ आया था सर, फाइनेंशियल क्वार्टर करके अभी पेनल्टी का क्वार्टर भी अभी फाइनेंशियल क्वार्टर करके कुछ मेंशन कर रहा था। हाँ नहीं वो फाइनेंशियल वर्ड लिख दिया था, फाइनेंशियल क्वार्टर नहीं है, दैट इज रॉन्ग, सॉरी। वो एक्चुअली क्वार्टर ही लिखा है, क्योंकि काम तो शुरू होगा उस पर डिपेंड करेगा ना कि किस क्वार्टर में है ना। वो फाइनेंशियल क्वार्टर नहीं है, आई एम सॉरी, वो क्वार्टर। हाँ नहीं कुछ हमारे भी कॉन्ट्रैक्ट्स में फाइनेंशियल क्वार्टर करके मेंशन कर रहा था। हाँ नहीं वो नहीं है, वो कवर कर, हाँ वो फाइनेंशियल वर्ड उसमें रह गया होगा, वो एक्चुअली ये आपका क्वार्टर में है, मतलब हर थर्ड मंथ पे वो देखेगा ये चीज।
जो है कंपनी हाँ, वही पुराना पाटनगर में। कुछ कुछ अभी रिसेंट वाला में फाइनेंशियल क्वार्टर करके लिख रहा था, मैंने एरिया का कॉन्ट्रैक्ट था, हम लोग डील अच्छा। नहीं कर रहा था सर। नहीं नहीं, तो उसमें एक बार क्रॉस चेक उनको दोबारा से मैनुअल में देख लेना चाहिए कि जो है कि उस क्वार्टर में ही रहे, मतलब क्वार्टर लिया है सर। तो फिर मैं साइन आउट करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन किसी को? सर ये अपना पीपीटी सर मोहित सर को भेज देंगे, हम लोग को भेज देंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल श्योर। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर काइंडली शेयर कीजिए सर। अच्छा, लिख लीजिए 9406 711 511। थैंक यू सर। ओके।